uh, we have some reshuffling, and now we proceed to Ramesh Murlidarji. He is from Australia actually, and he will be briefing about building information model for blastability based on review of intelligent predictions of environment. Some IT arrangements are being made. Sorry for that. And until it goes okay, we go to physical mode and we request RS Rathod sir and Sri PS Rathod sir from FEGMIL to have their views on application of AI and machine learning in the domain of slope stability analysis. Please, Rathod sir. Respected dais and dignitaries present in the hall. Mic nahi. Presentation. My topic is use of AI in determination of stability of slope. From yesterday onwards, we have been discussing about the use of AI in mining different fields. I will be specifically discussing about the use of AI in stability of slopes, mine slopes. Before we discuss what is the importance of slope stability and what are the limitations of traditional methods, emergence of artificial intelligence and benefit, what are the benefits? So, as we know that the slope stability is very important for any mining operation because a single slope failure may result in safety problems. It may reduce the productivity, overall productivity of the mines and environmental sustainability. It's not working. ये वर्क नहीं कर रहा. So these are some of the factors which are dependent for the stability of slope. These are geological factors. Then are the geotechnical factors. Rock strength, shear strength, internal angle of friction. These are the basic things. Before we come to the artificial intelligence, these are other factors which include soil erosion, seismic effect, and the size of equipment in the mining. These are the limitations. What are the limitations of traditional methods? For traditional methods,
in determination of the slope stability are limited equilibrium method, finite element method, and probabilistic analysis. These methods requires intensive field data and often fall short in capturing complex and non-linear relationships. Because when there are complex slope stability issues, these conventional methods may not be able to address it clearly. Now, about emergence of artificial intelligence. What are the benefits? It is fast, adaptive, data-driven alternatives can complement and enhance the traditional models. Means we cannot depend 100% on artificial intelligence because it can never beat the human intelligence. As it was discussed yesterday also, I'll just explain it with a small example. I think most of you have seen the video which is very much viral on the internet. There was a house fully automated and a person, in that video it is shown that the person is very happily, he comes and when he comes and say open the door gets open and he gets inside, and after getting inside, automatically the robot brings the cup of coffee and the TV, the choice of his choice channel gets on automatically, then the geyser gets on. These are all automatic system which is known as IoT. So one day that person gets extraction of his tooth, and once the tooth is extracted, his voice changes. And there was a heavy rain that day. The person comes and say open the door, but since the voice was not recognized by the system, and the door does not get open, and he keeps getting wet in the rain, and after the door was broken and then he gets inside. So the thing what I want to explain is that we cannot 100% depend upon the artificial intelligence. It can complement the conventional systems. The importance of conventional system will continue to prevail. This is the general This is the general process of empirical modeling. Identify the parameters, then generate experimental design, generate response at design points, then build model, then the final model, and if there is some problem, then it again goes to the loop, and finally the model is designed. This is the process of machine learning. How we use artificial intelligence for detection of a problem or to solve a problem. We start with data, and then we split data into trained data and test data. As yesterday we were discussing the initial problem of distinguishing between cat and a dog. So the trained data is, we first feed data what sort of problem we want to solve, and accordingly we train the model according to the data fed. And then we keep some data reserved as test data, and with the test data you test it in the model, and then you find that whether the results are up to the mark or not. And to confirm it, you need to test the data with other source also, other empirical or some other system, so that we confirm that yes, the model is working perfectly. Yesterday, as Mr. Vipul presented, that once you detect, you feed some particular breeds of cats, and then some different kind of, if you put cat of some different kind that it cannot detect, it says it is 80% or 60%. So that's the problem, because it's not like human brain. It works once it is trained, and accordingly on the basis of the training. So what you feed, the results comes according to that. Conventional versus artificial intelligence approaches. Conventional system depends upon geological, hydrological, technical and operational. And what are the advantages of AI? Handles non-linearities, manages
incomplete data. Even if the data is incomplete, it can manage it. Early warning and decision support. It is very helpful in taking the decisions. These are the various techniques of artificial intelligence which can be utilized for slope stability. In the coming slides, I will be discussing one by one all these techniques, and these have been earlier used for detection of the slope stability. First is the artificial neural networks. It is similar like the human brain where neurons work. To predict factor of safety, whether the slope is stable or unstable. In the year 2011, Khandelwal et al., they had done some prediction based on this. And the advantage is the accuracy is very high, but the challenge is that you require very high data sets and risk of overfitting. High data sets is the more data you feed it, the more correct the results are. And secondly, whatever data you feed, it does not fit correct in all situations. Like suppose you make a model for a particular area, or say Rampura Agucha mine, you make a model of slope stability of that mine, and you feed accordingly, you feed the data. That model won't work in, say, Himalayan region. If you go there, the rocks are different, the climatic conditions, the water condition, everything is different. So there the model won't fit correctly. For using the model in that area, again you need to feed more data and train the model according to that situation. And the risk of overfitting. Overfitting is when you feed lot of data, sometimes what happens, the model only depends upon the data and it does not read the trend. And in that situation, if you feed unknown data, then it won't give the correct results. So that is overfitting. This is another method, support vector mechanism. It is used to for binary classification, like if you detect a slope conditions on the basis of this system, then it will say whether it is safe or unsafe. Decision trees and random forest, this is another system. Random forest is nothing but combination of a number of decision trees combined together, and it is known as random forest. Just as number of trees forms a forest. Here also, this technique was used by Zhang et al. In 2020 to assess the slope failure and geological conditions of the area. It is easy to interpret with good accuracy and sensitive to data imbalance. This is another fuzzy logic. This was also once used in 2008. There are a number of research papers on this. But it requires bit expertise in the field. Generic algorithms. This is another method. I have given references of some of the research papers where it was used. Then deep learning applications. Now, it is very important that integration of artificial intelligence technology with the monitoring systems. LiDAR and UAV data for 3D slope geometry. UAVs, unmanned aerial vehicles, which is also known as drones. So with the help of this laser beam, and you can draw the geometry of the entire profile of the area, and you can find nowadays it is being used for even reserve calculation and all, and it is also very useful for detection of slope movement in the real time, and then it gives you the warning.
INSAR, surface displacement monitoring. It is with the help of satellite data, it scans the entire area and then give indications. Sensor networks like piezometer, inclinometer, which feed to the AI system models and then gives the warning. Then GIS platform, spatial integration and visualization. This is another system. So real-time monitoring with AI is sensors, radar, GPS, LiDAR, AIDA, ML layer in slope radar, auto encoders for anomaly detection and improved early warning capabilities. These are the combination of equipments with the artificial intelligence so that it gives you timely warning. IoT and AI integration. Internet of Things. IoT is just meant as Internet of Things. Number of things which are joined with the help of network. It may be different equipments, maybe different objects with given some ID, and they are capable of transmitting signals to the system, and they automatically integrate, and automatically without human intervention they follow system. As I earlier discussed about the automated house, in that house you need not give any direction, automatically it understands that what is your habit like, at what time you take tea, at what time you intend to take bath, because first it is taught and then automatically it responds. Rathod Sahab, you are left with 3 minutes, please. But there are 2-3 slides only. These are the various machine learning models, artificial neural network and support vector mechanism, RVM, ANF, IS and DT, enable and hybrid models, and accuracy depends upon the data and tuning. What are the challenges of adoption of artificial intelligence? Because the first and the most important thing for using of artificial intelligence is the volume of data. Without the data, you can't do anything. It is not like human intelligence that it automatically works, but first you need more the data, more the accuracy of the system. Another challenge is black box models like deep neural networks, etc. What is black box model? The models in which you put input and it gives output, but what is the processing inside, it is not known. Then site-specific biases, integration into operations. Site-specific biases means, say I just want to explain, the artificial intelligence can also be utilized like if there is some marriage party and you are required to assess that the number of guests, expected number of guests, because to book a hotel you need to say that this will be the minimum assured guest, and accordingly you need to make the payments. So when you can utilize artificial intelligence for that also. Once I used it, my son is a data scientist, so he said that yes, 215 guests will be are expected. When he took some inputs from me, and actually the total number of guests was restricted to 218. So I asked him how you could detect. This is data science. So site specific, but it is site specific. Suppose you are making a party in Jodhpur, it depends what are the input data, like climate, the month in which you are planning a party, because particular month, if the rainy season, that the number of guests will be less. So these are the things that AI only depends upon what you put inside. Accordingly, it gives you the results. What are the future prospects? Hybrid physics and AI models, transfer learning for new sites, real-time
as artificial intelligence, industry-wide data sharing. It is also very important because if the data is not shared, and without data you can't do anything in the artificial intelligence, because in every area there are huge chunk of data, but if it is not shared, then you cannot utilize it for the future work. And continuous learning systems. So here I conclude that AI complements the traditional methods. As I said earlier, AI cannot completely replace the traditional systems, because sometimes to check, you need to go with the traditional system to check that whether AI is working properly or not. And enhance prediction and safety, data-driven early warnings enables proactive slope management. Thank you. So, good morning to all. Rathod Sahib, I am having one question. Rathod Sahib, one question. Since maybe 2 decades, we are accustomed with this sensors sensing the slope movement Yes, sir. or strata movement. And by using LIDAR or some other software packages, whatever it may be, now we have to integrate with AI. Yes. Okay. So my question is, for example, a mine lease having 600 hectare, producing 10 million ton finished products, and deploying around 2,000 manpowers, roughly. So how much it will cost for that mine? Area is say 600 hectares. Right, sir. And with your system, have you provided to any industry such type of facility or product, what you are explained now? No, What will be the cost in crores? Sir, definitely by using this system, the cost will be less, but it has not been worked out by me. But it will be definitely less, because to regularly monitor 600 hectare of area with the conventional systems, you need to have lot of infrastructure. But with the use of AI, it will reduce the cost. No, I understand, but my point is how much it will cost. Suppose for 600 hectare area, Yes, I will implement this LIDAR with AI. How much it will cost me? So that I need to work out. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Rathod Sahab. First of all, completing session, your time, very much were in the time. We conclude like that, you use AI as a supplement to conventional method. Definitely, since it is in naive stage, so it cannot replace, but it can supplement or sometime may complement. And your topic was really good, slope stability. And we all know that rock mass is very, very important in assessing the conditions, geomining conditions, and dynamics play a vital role. Hence, a lot of desired from AI. And finally, human brain is continuously evolving while AI follows the human evolutions. So निश्चित रूप से ये AI अभी है, और मैं ऑर्गेनाइजर से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक छोटी सी वर्कशॉप की जावे जिस पे AI के बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो सभी को ध्यान में लाया जावे कि ये ANN क्या है या एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिक AI है क्या और उसको उसका कैसे कैसे रोल है, टर्मिनोलॉजी है, दैट विल हेल्प. थैंक यू. कौन सा सर? Now we proceed to our next topic, and it will be covered by Bhatwadekar sir. He is online mode, and he will be talking to us building information model for blastability based on review of intelligent predictions of environment. Please, Bhatwadekar sir.
Due to some pre-assignment and tickets, Sahu Saab is leaving us to airport for his further destination. We wish all the best for their journey, sir. Thank you. I request Jaiswal sir to present the memento to Sahu sir. Thank you, Sahu Saab. Now we request Sri Rajneesh Purohit sir to kindly share your experience on AI, and you are having your subject bridging the gap between AI and mining operations through AI. Rajneesh Purohit sir, please. Good morning, dear friends. Since yesterday's morning to this morning, you are very much aware of the what is AI, what is ML, and so forth. But as a mining engineer and as a this conference as a mining engineer, how I suppose as a mining engineer, what is AI and what is my mining, I find there is a lot of gap is there. So, before starting, I suppose that I should remind you and I should take you way back in your college days so that whatever mining we have learned, we can rewind it. So my topic, that is why I choose this bridging the gap, AI and mining operation through AI. So what is AI? You have already have some idea about what is mining. You are an expert of that. And why this is through AI? I am comfortable in hybrid language, so I may present in Hindi or English, whatever it may be. If anybody has some confusion, then you can stop me and ask me. So, through AI क्यों? As because कल से लेके आज तक जितने पेपर देखे उसमें 50% पेपर ऐसे थे जिसमें ओरिजिनल चीज़ें हैं, 50% पेपर्स ऐसे हैं जो AI के थ्रू बने हुए हैं। आप लोगों को कितनों को आइडिया है मेरे को नहीं पता, बट आई स्वेयर ये मैंने जो पेपर बनाया है कल यहाँ से जाने के बाद आधा घंटे में बनाया, only 30 minutes, not more than that, 35 minutes. So
थ्रू एआई मीन्स मेरा वो है कि एआई का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। कुछ गैप मेरे को दिखे। सो व्हाट इज माइनिंग इंजीनियरिंग? वे बैक कॉलेज में थे हम लोग को, इट इज साइंस एंड आर्ट्स ऑफ द माइनिंग। लिगेसी टू अभी तक इसकी डेफिनेशन में जो चेंज हुआ। लेकिन एआई क्या बोलता है? एआई कुछ ऐसी चीज बोलता है जो बुकिस है। अभी ऐसी डेफिनेशंस माइनिंग की जो अभी आई नहीं है, वो एआई के पास नहीं है। डेटा लर्निंग, अरे जो डेटा उसको बताया जाएगा, कल एक एग्जांपल से आपको एक कुत्ता बिल्ली का एक डेटा दिया, अगर उसके सामने शेर ले आएंगे यादर, वो कुत्ता बताएगा, वो बिल्ली बताएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस में ऑलरेडी आपके पास इतना डेटा अवेलेबल है कि आप उसको शेर को शेर ही बोलेंगे, और चाहे वो शेर का बच्चा है तभी भी बिल्ली नहीं बोलेंगे। सो व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग की एक सिंपल डेफिनेशन उसने दे दी, और वो फर्स्ट पार्ट में है। बट मेरे अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस में, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस में करंट सिनेरियो में माइनिंग इंजीनियरिंग इज द टर्म एज द टेक्नो लीगल ए मैनेजमेंट ब्रांच एसेंशियली इंक्लूड विथ मिनरल इकोनॉमिक्स। आप एआई क्यों कर रहे हैं? इसमें मिनरल इकोनॉमिक्स एसेंशियली इन्वॉल्व होना चाहिए। वो पार्ट अभी नहीं आया एआई में, किसी भी डेटा में आएगा, सर्टेनली आएगा। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर घर में आपको एक टेलीविज़न है, एसी है, ये सब है। इनिशियली नहीं था, हमारे घर में पंखा भी नहीं था। वाई एनी डिपॉजिट माइन इज यूनिक? बेसिक चीज़ ये है कि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ कि एआई 100% मायने में क्यों लागू नहीं हो सकता। एज बिकॉज एवरी माइन इज और एवरी डिपॉजिट इज ए यूनिक डिपॉजिट, और हर के लिए वो डेटा आपके पास नहीं अवेलेबल है क्योंकि वो यूनिक है। कोई 400 मीटर नीचे है, कोई 500 मीटर नीचे है, कोई सरफेस पे है, किसी की जियोलॉजी अलग है। उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। यूनिक क्यों है? द deposit becomes unique because of geological setting of the ore deposit, or the formation processes, or the source material, or the time and evolution and the local condition and spatial variability, so and so forth। दुनिया भर के, ये सिर्फ आपको जस्ट एक विजुअलाइजेशन देने के लिए कि ये क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। एक ही टॉपिक पे, ये इसी चीज पे हम 2 घंटा भी बात कर सकते हैं। सो डिपॉजिट इज यूनिक। आपको ये मैं एक डेटा आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, जिन जिन की माइन है या जो जिस माइन में गए हैं, उसमें हर माइन का एक अलग डिपॉजिट था, उसका अलग डेटा है, और हर डिपॉजिट के अंदर में हर पोजीशन पे वो डिपॉजिट अपनी कुछ अलग वेरिएबिलिटी देता है। माइन लाइफ प्लानिंग, अब सारे प्रोसेस को जो माइन लाइफ प्लानिंग में इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द लीज एक्विजिशन से, जहां आज इसके आगे एक और प्रोसेस हो गया जहां आप ऑक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं। सो ऑक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस, जीआर वगैरह जो भी है, लीज एक्विजिशन से लेकर के ऑल प्रोजेक्ट क्लोज, ये करीब 12 प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर में लीज एग्जीक्यूशन है, देन एक्सप्लोरेशन फेज है, देन फिजिबिलिटी है, देन कंसेप्शलाइजेशन है, देन ऑपरेशनल है, देन पीक आ जाएगा, उसके बाद पोस्ट क्लोजर आ जाएगा, देन माइन क्लोजर आ जाएगा, देन रिक्लेमेशन, रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर ऑफ द लीज। These are the mining operations। अब इसमें AI कहाँ लगेगा? एक जगह आपको बोल दिया स्लोप स्टेबिलिटी में लगाएंगे, ये माइनिंग नहीं है। स्लोप स्टेबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ द माइनिंग। वो कहाँ आएगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रोसेस साइकिल है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि ये प्रोसेस साइकिल उस लाइफ प्लानिंग में एक्सप्लोरेशन कब होगा, उसका इवोल्यूशन कब होगा माइन का, या मिनरल प्रोसेसिंग रिक्लेमेशन कब होगा। अब जितने डिपॉजिट थे यूनिक, ये मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि एआई और आपकी जो कॉलेज की जो लर्निंग थी, उसमें जब हमको पढ़ाते थे कि कितने तरह के मेथड है, क्या डिपॉजिट्स है, ये सब, तो उसके अंदर में अंडरग्राउंड की अलग है, सरफेस की अलग है, ये उस टाइम की एआई थी। माइनिंग सीक्वेंस में जो अभी मैंने डिस्कस किया, उसमें एक्सप्लोरेशन प्लानिंग या साइट प्रिपरेशन या एक्सप्लोरेशन, इनिशियल एक्सप्लोरेशन, उसको मैं प्राइमरी एक्सप्लोरेशन नाम दिया था, ये सेकेंडरी एक्सप्लोरेशन है। बेसिकली
सरफेस अंडरग्राउंड के अंदर में प्राइमरी एक्सप्लोरेशन में उसको बोलता हूं जब आप G4 लेवल पे या G3 लेवल पे या G2 लेवल पे करते हैं। जियोलॉजिकल टर्म यूएनएफसी में G4, G3, G2, G1, ये आप को आइडिया होगा कि हम किस स्केल पे उसका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। सो G4, G3, G2 ये एक्सप्लोरेशन जो है इसको प्राइमरी एक्सप्लोरेशन नाम दे करके और हम उसको एक्सप्लोरेशन में करते हैं। अब टेक्निकली एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिंग ये G1 पे आकर के अब फर्दर प्लानिंग आप एक्सप्लोरेशन के बाद क्या करेंगे उसको एक्सप्लॉइट करना है, देन उसकी साइट प्रिपरेशन होगी और उसके बाद अगर अंडरग्राउंड का है तो उसकी डेवलपमेंट बनेगी। डेवलपमेंट के बाद में और अगर ओपन कास्ट है तो ओवर बर्डन रिमूवल होगा, और एक्सट्रैक्शन होगा ओवर बर्डन रिमूवल के बाद ओपन कास्ट में। अदरवाइज अंडरग्राउंड से तो स्टॉपिंग मेथड और पता नहीं डीप लेयरिंग और दुनिया भर के जो मेथड्स है वो लगेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद होगा, क्योंकि जब आपने एक जगह से डिसलॉज कर दिया उसकी एक अपनी टेक्निक है। उसके बाद में फर्दर और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करेंगे, अंडरग्राउंड का अंडरग्राउंड में तो नहीं रहे, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्टॉक पाइल में। स्टॉक पाइल मैनेजमेंट में एक AI आप लगाएंगे तो दुनिया भर की जगह में अभी AI लग रहा है। अभी मैंने आपको नहीं बताया कहाँ कहाँ AI लग रहा है, ये जस्ट मैं आपको माइनिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। देन आफ्टर प्रोसेसिंग अगर आपका वेस्ट जनरेशन है तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट होना पड़ेगा, क्योंकि रिक्लेमेशन, रिहेबिलिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू बी कंट्रोल्ड इन द लीज एरिया as well as in around the lease area. Okay, then if it is a underground mine, ventilation and of course safety open cast में भी है, so ventilation and safety is another area which is to be looked after. Then after last page is reclamation and closure. So this is all about the mining processes. अब इस जगह पे ये पता नहीं आपको पीछे आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, ये प्रोसेस है फ्लो प्रोसेस। हर आदमी को माइनिंग का पता है फ्लो प्रोसेस, हर आदमी ने एनालिसिस नहीं किया। ये फ्लो प्रोसेस किस जगह से कहाँ क्या चीज जा रही है और कौन से डेटा किस जगह से कहाँ जा रहा है। आप कंसंट्रेट करें येलो पार्ट पे, खाली एक पार्ट में डिस्कस करूंगा। इसमें येलो पार्ट है इज द जियोलॉजी, ब्लू पार्ट इज द व्हाट इज दैट माइंस प्लानिंग, एंड नेक्स्ट इज ग्रीन इज सर्वे, देन execution part. So I am concentrating on the yellow part. So yellow part means before going for G4, G3, G2 level, you have to plan, as because everything involve cost. So यहाँ planning है, उसके बाद डायमंड ड्रिलिंग या जो भी प्रोसेस है जिससे आप कर रहे हो, उसके बाद कोर लॉगिंग है, उसके बाद एनालिसिस है, उसमें बोरोल डेटाज हैं और ये सब है। आपके ये सब प्रोसेस फ्लो एक अलग जा रहा है। उसके बाद फर्दर कोर लॉगिंग के बाद एनालिसिस है, देन ए डिसीजन बॉक्स इज देयर। सो आप ये मान के चलिए कि AI कहां जा रहा है, जहां डिसीजन बॉक्स है। डेटा एंटर जो है वो मशीन लर्निंग और इनके सबके इंटीग्रेशन से सबके डेटा आपके इसमें इन्वॉल्वमेंट में आएंगे। बट आपका ओरिजिनल AI आपको कहां चाहिए, जहां डिसीजन चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर डिसीजन देखें तो जो जियोलॉजिकल प्लानिंग जब हमने किया उसके बाद जब हमने उसको और डिक्लेयर है, अगर वो और है तो फर्दर प्रोसेस चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। एंड पैरेलल में आप देखेंगे इसके बाद वापस फीडबैक आ रहा है, मीन्स आपके पास एनकरेजिंग रिजल्ट्स है, तो उस एनकरेजिंग रिजल्ट्स के बाद में फर्दर आप जियोलॉजिकल की प्लानिंग करेंगे और उसके जो डेटाज है आपके। तो जहाँ जहाँ मैंने ये ग्रीन एरो डाला है, यहाँ यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है, जहाँ डेटाज अभी हम लेगेसी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सो इस जगह पे कल तंवर साहब ने जो बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया, मैं समझता हूँ आधी जगह पे ये इस तरह के जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये खत्म हो जाएंगे। सो IoT, मशीन लर्निंग, AI ये धीरे धीरे माइनिंग में एंटर कर रहा है, बट अभी तक नहीं कर पाया पूरा, ठीक है। देन इसके पैरेलल में ये अभी तक आपको जस्ट मैंने एक माइनिंग का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया। अब यूनिक डिपॉजिट के पैरेलल में आपको और कंप्लायंस चाहिए, क्योंकि हर जगह आप सोचते हो कि AI हम लगा देंगे, मशीन लर्निंग का लगा देंगे। नहीं भाई, ये हमारे पास में कुछ एक्ट रूल रेगुलेशंस है, फ्रेमवर्क टू बी फॉलोड बाय ए माइन ओनर। एंड एवरी टाइम आप डेटा उसको जब देते हो कि भाई आपको
मंथली रिटर्न देना है, क्वार्टरली रिटर्न देना है, ईयरली रिटर्न देना है, ऑल ऑफ सडन एक नया अमेंडमेंट आ जाएगा, आपको एक रिटर्न और देना है, या फर्दर कुछ एक नया रूल आ जाएगा। तो ये जितने एक्ट रूल रेगुलेशंस है जो माइन ओनर को करने हैं, और जो एआई में अभी जितने हैं, कल एक अमेंडमेंट आ गया तो वो सब डेटा चेंज हो जाएंगे, तो फर्दर एक आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत है। इसी तरह से लेजिस्लेशन जो है अलग अलग फ्रेमवर्क में है, और दूसरे जो भी लॉ हैं उसमें आप इनकम टैक्स, जीएसटी और लेबर लॉ दुनिया भर के आपके हैं, ये सब एक के बाद अमेंडमेंट्स जब आ रहे हैं तो ये सब पैरेलल में आपको वो डेटा लर्निंग में वो डेटाज वापस आपको अमेंड करने पड़ेंगे, उसके लिए फिर आपको Sorry, Professor, you are left with 5 minutes, sir. Sorry, Please. sorry. I will try to conclude. So, why human intelligence is critical? अब इस जगह पे मेरा एक अपना ओपिनियन है कि यूनिक डिपॉजिट है, कंप्लायंसेस चाहिए, और आप अभी डेटा को, इसको एआई को अभी डेटा से लर्निंग करवाएंगे, तब तक आप फर्दर 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, फर्दर फिर एक अमेंडमेंट आएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ टाइम के बाद में हो सकता है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास में आ जाए, आज हम इंसिपेंट एज में, तो इसीलिए फर्दर मेरा अपना एक ओपिनियन है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल फॉर माइनिंग इंडस्ट्री, फॉर दिस सिनेरियो वेयर डिपॉजिट इज यूनिक, regulatory complexity, safety and risk management, adaptability and sustainability. So technique 5W1H I am not going to discuss, but bridging the gap means underground mining operation involve integration advanced data driven technology into the complex high risk environment of subsidence area and sustainability in underground mining by leveraging real time data. So I outlined key areas where AI ML transformation can be done. So कहाँ कर सकते हैं, कुछ एरिया ऐसा है माइनिंग में जहाँ अभी AI लग सकता है, उसके अलावा नहीं लगेगा 100%. So what are those area? This is predictive maintenance. आप अपनी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कर लीजिए, उसकी प्रिडिक्टिव कर लीजिए, उसको IoT से जोड़ लीजिए, एक दूसरे से मशीन अपनी बात कर लेगी, मैं खराब होने वाली हूँ, आप आदमी भेज दीजिए, ये सब कर सकता है, बट अभी भी प्योर नहीं है हम लोग। देन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में कुछ लगा सकते हैं हम, वर्कर सेफ्टी में नेचुरली RFID वगैरह लगा करके कर सकते हैं हम लोग। देन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी अगर है ऑटोमेशन में, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओवर ग्रेड प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कुछ हद तक। देन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, कहाँ यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह से हम इसको पूरे को ट्रेनिंग सपोर्ट वर्कर्स को और इनको सबको दे सकते हैं। और लेकिन AI ML अगर यूज़ करना है तो ये कुछ 4 पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और माइंड इट, जो मैंने इनिशियली बोला था कि ये प्रेजेंटेशन कल रात में जाने के बाद मॉर्निंग में मैं आधा घंटा में बनाया हूँ, एंड दिस इज थ्रू AI ओनली। सो डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड एनवायरमेंट ऑफन हैव लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स। Right now we are having only 2 companies, Hindustan Zinc and Hindustan Copper, in metal, where the underground connectivity is very good. Otherwise it is not. Sorry, sir, we are in the last 1 minute. Sir, so integration with legacy system, skilled workforce. I suppose I have already discussed this. So conclusion, in my opinion, concentrate. In the last line, AI serve as a powerful complement, enhancing efficiency and accuracy, but human intelligence remains indispensable for contextual adaptation, leadership and ethical decision making in India's mining sector in today's area. Today's this one. Thank you. Thank you, sir. Sorry for not throttling you, but the time constraint needs to be maintained, sir. I can understand, and this is your job. Thank you very much. You have done very good job. सर, आपने जो टॉपिक चूज किया गैप ब्रिजिंग, इट मीन्स आपने एक प्रोमिसेस दिखाया और साथ में चैलेंजेस भी दिखाया, जो कि कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो भी है।
जिसमें आपने ये बताया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस भी है, 50% स्ट्रेंथ है, 50% कुछ वीकनेसेस भी है. And since you are in a firm view that human intelligence have a very, very well clarity, but AI still have to be done. Your vision towards mineral economics is highly commendable. You thrust upon the mineral economics पे भी touch नहीं किया गया है. So that is a good topic. और आपने जो चार्ट के जरिए हमें ये बताया कलर कोडिंग से, which are the areas where AI can be applied. So in your view, it currently it is at planning stage or a paper stage where AI can be fully implemented, but as far as on ground application, it needs lot of needs to be done. And most importantly, policy framing is a challenge. So you have opened eyes for us. Thank you, Professor. Now we move to hybrid mode, and Mr. Bhadwadekar sir will be joining us with his topic on role of AI in intelligent prediction of environment after blasting. Please, Bhadwadekar sir, please join us. I request Mahesh Purohit sir to come and join the dais as a co-chair. Sri Mahesh Purohit sir. Can we move to next speaker if we have some error?
Uh, Hello. One important announcement. CD and souvenir in physical mode is ready. All are requested to collect the same. The delegates, particularly, it is meant for delegates, sponsors, co-sponsors, and it can be collected from the registration desk. Please. And invoices of all the sponsors and supporters is ready. They can collect the same from the registration desk from Mr. Tanted. Now, I request Dr. Hitanshu Kaushal and Sri Anupam Patnagar sir to please share your views on application of AI in drones in the mining industry with a case study. Sri Patnagar sir. Hello. Good morning, everyone. Can you please start the presentation? PPT दे रखा हूँ। हितांशु कौशल के नाम पे। वहाँ थी ना पेन ड्राइव में लोड कराया ना? कर दी सर। हाँ। आपको पेन ड्राइव में कराया? हाँ जल्दी। Good morning, everyone, sir. Even though it is, Jaiswal sir had told me to do it faster, so I'll use human intelligence to make it faster. Good morning to everyone. Thank you for Jodhpur, MEI Jodhpur chapter to giving us the opportunity. I, Dr. Hitanshu Kaushal, with my co-author and my mentor, Dr. Anupam Patnagar, sir. So I thanks to every mentors and the senior sitting here to give me an opportunity. So I'll go faster, sir. अभी कल सबने AI पे और काफ़ी बात करी. क्या AI होता है लगभग सब जानते हैं. Everybody is carrying a mobile and everything. So everyone knows that. In my PhD also, sir, I have done the case studies. The implementation of and execution of artificial intelligence in mining industry, what I have done. So this is one of the case study which I have done. This is the comprehensive case study by AI-driven drone survey for dewatering and hydrological assessment in quartz and feldspar mines. So it is a drone was the major copter which I have used as a tool. So it's a dynamically remoted operated navigation system which is drone is known as. So I have done a case study in which we have done, yesterday people told that we can use pre-blasting, post-blasting in the and do the artificial intelligence by doing the blasting studies. So I have done that all by in the mines, in the live mining. This is an hydrological study which I am going to present. This is the drone which we have used for the study. Before drone, sir, I have got my first, as a mining engineer, I got the first DGCA approved drone pilot license from the government of India. This is a mining lease. I just want to share one more technical point in this. So this is the two surface plan
One is prepared from the total station and survey, and this is one of the prepared from the drone survey. So you can see the accuracy which we have obtained by implementation of the drone survey. Now this is the case study which I want to show you, sir. So in the core area, the blue region, you can see this is the mining lease in which we have done a drone survey. The total area of the mining lease was only 5 hectares. But for the hydrogeological mapping, we have done the drone survey of complete 83 hectares covering a 500 meters area. पूरा उस लीज के 500 मीटर के दायरे को कवर किया ड्रोन सर्वे करके ताकि हम लोग उसका हाइड्रोजोलॉजिकल स्टडी कर सके. सर इस माइंस में प्रॉब्लम क्या थी कि रेगुलर वाटर चार्ज हो रहा था सर. द माइनिंग लेसी वाज फेसिंग एन ह्यूज इशू ऑफ वाटर चार्जिंग. डी-वाटरिंग रेगुलरली कर रहे थे बट अगेन इट वाज गेटिंग रिचार्ज्ड. दिस वाज द 3D मॉडल ऑफ द माइनिंग लीज. इन बिटवीन यू कैन सी द पिट. यहां पर साइड में भी माइनिंग लीज चल रही थी. This is the orthomosaic of the area which we have prepared from the drone survey. This contour plan show the slope of the mining lease area. So इसमें आप देख सकते हैं कि slope जो है वो southern part के अंदर है और वो de-watering जो कर रहे थे वो southern part पे कर रहे थे, north east part पे कर रहे थे de-watering, seeing the surface slope. This is the slope map which we have prepared by using drone to understand the slope of the area. This is very important, sir. इन दिस कंटूर सर इसको रिचार्ज को समझने के लिए और डी वाटरिंग को समझने के लिए हम लोगों ने वहां की वेल को स्टडी किया कि ग्राउंड वाटर वेल में पानी का स्टेटस क्या है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेल्स थे, दिस इज द ग्राउंड वाटर एलिवेशन प्रोफाइल एंड दिस इज द सरफेस एलिवेशन प्रोफाइल व्हिच वी हैव. सो वी हैव इंटीग्रेटेड द सरफेस एलिवेशन प्रोफाइल एज वेल एज ग्राउंड वाटर एलिवेशन प्रोफाइल टू अंडरस्टैंड द वाटर रिचार्जिंग. सो यहां पर जो वो नॉर्थ ईस्ट में रिचार्ज कर रहे थे, यू कैन सी इन दिस द राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कॉर्नर में वो पानी भी है जहां पर वो पानी को डी वाटर कर रहे थे. सो वी हैव सजेस्टेड कि आपका जो रिचार्जिंग हो रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है. इवन दो वो आप उसको डी वाटर कर रहे हो बट वो अगेन आपको आपके पिट को रिचार्ज कर रहा है. तो वहीं पर हमने उनको कहा कि आप मोटर्स लगा के इसको साउथ की तरफ आप डी वाटर करना स्टार्ट कीजिए एंड वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल सी इट फॉर नेक्स्ट 10 days कि क्या रहता है. एंड सर इट वॉज प्रोडक्टिव और वाटर रिचार्जिंग इवन दो स्लोप के अगेंस्ट गए बट क्योंकि वहां ग्राउंड वाटर का जो पर्पस था और जो फ्रैक्चर जोन थे जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए तो उससे इट बिकम अ प्रोडक्टिव डी वाटरिंग सिस्टम. So this was the basically which we have suggested. This is an AI generated photograph which we have prepared, and this was the understanding which we have told them to the mining lessee that कि आप इस तरीके से इसको अगर dewater करेंगे तो it will get into the more potential way, and we got succeeded in this. सर ये एक चीज है, this is a normal ग्राउंड वाटर के वाटर को हम लोगों को कैलकुलेट करना था वाटर का वॉल्यूम. नॉर्मली ड्रोन पानी जहां होता है वहां पर वॉल्यूम कैलकुलेशन नहीं कर सकता. सो देयर वाज अ केस स्टडी जिसमें हमारा डायरेक्टर साहब से भी डिस्कशन हुआ था कि वी हैव टेकन अराउंड 28 to 30 पॉइंट्स बाय पुटिंग अ डीजीपीएस ऑन अ स्टिक. नॉर्मल एक डंडे के ऊपर डीजीपीएस रख के और ड्रोन को साथ में फ्लाई किया, एंड यू कैन सी अ स्मॉल बोट कैरिंग अ ड्रोन कैरिंग अ डीजीपीएस रोवर, उसके ऊपर एक रोवर लगा रखा है इस वर्ष. एंड वी फॉर दिस डिजाइन वी गॉट अ पेटेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये एक डिजाइन हम लोगों ने कैलकुलेट किया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रिशिएटेड दिस एंड वी हैव गॉट पेटेंट आल्सो फॉर दिस. सो इन कंक्लूडिंग, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय, सो इट वाज अ ड्रोन है बट साथ में पुरोहित सर ने भी कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट दिस एवरी एक्टिविटीज. सो वी आर डूइंग इट राइट नाउ. ड्रोन के अंदर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं. एज मेरे को पिछले 5 साल से आई एम ओनिंग अ कंपनी विच इज हैविंग अराउंड वी हैव डन अराउंड 1 lakh hectares area of drone survey. Right now we are working with government of India also, with Reliance Industries also for the critical mineral exploration. हम लोग मैपिंग के अलावा कई बड़े सीमेंट प्लांट्स के लिए पूरा सरफेस प्लान, सरफेस जोलॉजिकल प्लान, जोलॉजिकल असेसमेंट भी हम ड्रोन सर्वे मैपिंग से कर पा रहे हैं. दिस इज द पेटेंट विच वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This is some of the awards which we have got for doing our working. Thank you so much. Thank you. Any questions, sir? Any questions from anybody? Thank you. Sir, I just wanted to ask you one question regarding this case study. What you have shown
can be done with conventional system also. So what AI has given you the additional input in this? I could not fetch हाँ, that. सो कन्वेंशनली तो सर वो लोग कर रहे थे, स्लोप के आधार पर वो लोगों ने डी वाटरिंग करना चालू कर दिया, बट एक्चुअली जो डी वाटरिंग जो उनको ड्रोन से हम लोग जो स्लोप मैप डिजाइन कर पा रहे थे, तो स्लोप मैप से हम पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे मैपिंग कर पाए, और ग्राउंड वाटर एलिवेशंस को भी हम लोग इंटीग्रेटिंग ग्राउंड वाटर एलिवेशन विद द कंटूर प्लान हैज मेड दिस सक्सेसफुली सर, जो कि कन्वेंशनली कर सकते हैं, बट इट कुड हैव टेकन अराउंड 15 to 20 days with the cost. We have done in 3 hours sir. Drone as well as sir, basically how drone fly? Drone fly with artificial intelligence. How drone connect data? Through artificial intelligence. So drone is basically AI and machine learning. Drone is a robot which is flying through artificial intelligence. So drone, that is why we said it is AI based drones. Drones cannot fly with. Your mobile is having an artificial intelligence. That is what it is, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Kaushal Saab. Oh. Yes. Sir, your voice, I can't hear you. हितांशु जी, मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे आपने कहा कि अपने को स्लोप मैपिंग करना था ना, कंटूर मैपिंग जो अपन ने किया ड्रोन के हिसाब से, अपन इस चीज़ को सर्फर जो है अपना सॉफ्टवेयर, उसमें आप हायर कंटूर डालो, लोअर कंटूर डालो, है ना, और मुश्किल से डीजीपीएस से 4-5 पॉइंट लेकर मुश्किल से 5 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। तो अपने को इसमें ड्रोन की एफिशिएंसी की कहाँ जरूरत है? सर एक्चुअली क्या था ना कि मतलब ये जो आप कह रहे हो वो तो वो कर रहे थे, हाँ, क्योंकि डीजीपीएस और टोटल स्टेशन तो आज नहीं आया, ड्रोन को आए भी 5-7 साल हो गए, 2012-13 से इंडिया के अंदर ड्रोन यूज होने चालू हो गए थे। हाँ, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो ग्राउंड वाटर एलिवेशंस थे ना सर, वो वहाँ के ग्राउंड वाटर को नहीं समझ पा रहे थे। हम लोगों ने इसके अंदर ड्रोन को यूज करके ग्राउंड वाटर एलिवेशन प्रोफाइल जो मैंने आपको दिखाया उसको इंटीग्रेट किया था कंटूर सरफेस प्लान इंटीग्रेशन के साथ। दैट वाज इंपॉर्टेंट। आवर माइनिंग इंजीनियर्स, हाइड्रोजोलॉजिस्ट, वी ऑल वेर देयर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द ग्राउंड वाटर, क्यों बार बार उसको पानी खाली। आप कह रहे हैं कि वो 5 मिनट में हो जाता है? नहीं मेरी हो बात सकता सुनो, था। बताओ एक चीज, Yes, sir. अगर मेरे को पास ड्रोन नहीं है, सपोज मैं तो Correct. कहता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मैं तो फिर भी काम करूंगा, हाँ। तो उस केस में तो ये है कि अपन ने मतलब डीजीपीएस से आपने जो बताया कि एक नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं, लिसन टू मी, लिसन टू मी, डोंट कम इनटू रश इन अ कंक्लूजन। वी हैव यूज्ड ड्रोन्स, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कैसे लगाए? तो नहीं, डीजीपीएस पॉइंट तो आपने एकदम सही किया। मेरी बात तो हाँ, बताइए। हाउ वी हैव यूज्ड ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स बाय यूजिंग डीजीपीएस। इट वाज अ इंटीग्रेशन ऑफ डीजीपीएस, ड्रोन्स विद जो वहां पर जो वेल्स थे, अबेंडेंड वेल्स थे, रनिंग वेल्स थे, गांव वालों के जो चल रहे थे, उन सब के डेटा को एलोकेट करके उसको इंटीग्रेट किया गया सर। वी हैव यूज्ड एल्गोरिथम टू रन दिस ऑल थिंग्स। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ये आपका प्रोसेस सही है, बट मैं कहूँ अगर ड्रोन नहीं है अपने पास तब भी अपन उस चीज को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं सर। बस एक फर्क रहता है उसके अंदर, फिर जो 1-1 सेंटीमीटर की पॉइंट फाइल्स क्रिएट होती, आई थिंक यू विल एग्री ऑन माय पॉइंट, कि मैं डीजीपीएस से 5 पॉइंट तो उठा लूं, पर उस 5 पॉइंट से मैं कंटूर भी ऑटोकैड से रन कर लूंगा, 3D जो भी आप XYZ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, मैनी सॉफ्टवेयर कमिंग, बट टू गेट एक्स, क्योंकि मेरे को सर ये तो कंक्लूजन आ गया। हम लोग जब हम वहां गए थे तब हमें थोड़ी पता था कि ये सब होगा। सो फॉर दैट वी नीड अ पॉइंट फाइल, हमें तो एक एरिया का हमें थोड़ी पता था कि स्लोप क्या है। It was only after this we have done, we got to know this all things. तो करने के बाद एग्जीक्यूशन पता चला सर। सही कह रहे हो आप। स्लोप का तो जैसे आप जब भी ग्राउंड वाटर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन, तो जैसे हम लोग आप इसमें देखो सर, इसमें ग्राउंड वाटर ओरिजिनल स्लोप से बिल्कुल काउंटर कर रहा है। सही है। That was the important thing to understand. ये आपका एक अच्छा आउटपुट है, ये मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो ये है कि जैसे आपने कहा कि ड्रोन से, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ड्रोन अगर मैं नहीं भी यूज करूंगा ना, तब भी मैं इसका इंटरप्रिटेशन करके उस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो जैसे QGIS है, आप जानते होंगे, या बहुत सारे लैंड यूज है। आई कैन सिट, मैं यहाँ से बैठ के यूएस के किसी भी KML को बना के वहां का स्लोप मैप बना सकता हूँ। एग्री करते हो? करता हूँ। बट एक्चुअली वहां पर जो माइंड से चल रही हैं, उनका एक्चुअल प्रोफाइल निकाल के उसका सेक्शन प्लानिंग करके करने के लिए मैं डीजीपीएस ले जाके भी कर सकता हूँ। बट टू गेट एग्जैक्ट पॉइंट, फिर तो हम डीजीपीएस ही यूज कर लेते हैं ना वॉल्यूम कैलकुलेट करने के। व्हाई टू यूज ड्रोन्स? टू मेक इट मोर
प्रोडक्टिव। अब मैं 83 हेक्टर्स एरिया को आप सोचो, अगर मैं डीजीपी से एक एक का पॉइंट उठाऊं तो कितना टाइम लगता, बट 83-84 हेक्टर एरिया को हमने 2 घंटे के अंदर सर्वे करके मैप करके, बट वी टुक टाइम टू कलेक्ट द डेटा ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, वहां पर हमें टाइम। ठीक, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, वन क्वेश्चन प्लीज। सर, आपने 83 हेक्टर का एरिया सर्वे किया, क्या सर? उसके एडजॉइनिंग एरिया भी सर्वे किया होगा? नहीं, हाँ, मतलब 4 हेक्टर से 4 हेक्टर का माइनिंग लीज था सर। माइनिंग लीज 4 हेक्टर, 500 मीटर का जो एरिया टोटल कवर किया टू अंडरस्टैंड द कोर जोन ऑफ द एरिया। उसके अंदर और भी लीजेस आई होंगी? हाँ, लीज आई ना सर। तो क्या आपने उनकी परमिशन ली थी क्या? सर, वी हैव टेकन द कंसर्न फ्रॉम द नियर बाय लेसीज। यस यस। एंड मैं एक और चीज बता दूं, एज दिस एरिया फॉल्स द ग्रीन जोन, देयर आर 3 टाइप ऑफ जोन्स रहते हैं। तो ग्रीन जोन में था, तो हमको कोई परमिशन एज सच लेने की जरूरत, वी हैव टू इंटीमेट द पुलिस डिपार्टमेंट, बट फॉर द कट्स वी हैव टेकन द परमिशन फॉर द कट्स। दैट्स ट्रू। लीगली आपको परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन क्या किसी घर के ऊपर बिना उसकी परमिशन के ड्रोन उड़ा दोगे? 100% उड़ा सकते हैं सर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां की ज्योग्राफी और वहां की वो समझ गया मैं तो लीगल आस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप मेरे घर के ऊपर ड्रोन की फोटोग्राफी करके ले जा सकते हो क्या? करके ले जा सकता हूँ सर। हैं? ले जा सकता हूँ सर। सर, आई डोंट थिंक सो। विदाउट परमिशन कैसे लोगे सर? इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, फोटो खींच के ले जा रहे हो आप मेरी बिना परमिशन। सर मुझे एक बात बताओ, एक बात वो नहीं सुनना, नहीं सर। सर, हमारे जो माइनिंग के ड्रोन्स है, मैं आपको बताता हूं, आई विल कम ऑन द ड्रोन रूल्स 2021 आल्सो। हम कोई 15 मीटर पे ड्रोन फ्लाई नहीं करते। जो पिक्चर जो ये कैमरे में जो शादियों में घूमता है, सुनना सर, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो 500 ग्राम का ड्रोन होता है जो 15 मीटर से ऊपर फ्लाई नहीं करता। सब आपकी बात है, हमारे ड्रोन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैमरे की रिजोल्यूशन की है। यस, है ना? मैं उस पे भी आ रहा हूँ। 20 मेगापिक्सल का है, 40 मेगापिक्सल का, रिजोल्यूशन से फर्क पड़ता है आप कितनी ऊंचाई पर उड़ाओ। अब जैसे आप समझ रहे हैं? आपका घर, क्या आपके पास परमिशन होगी क्या प्राइवेट? मेरी बात सुनो ना सर, आपका घर माइनिंग, तो गवर्नमेंट के कहने पे किया क्या आपने ये? हाँ 100% सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। यस यस, तो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आप ड्रोन सर्वे करेंगे तो सर्वेइंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमारे लीजें तो स्टेट टाइम की दी हुई है, 40 साल 50 साल पुरानी दी हुई है। आप करेंगे तो आपके पास बेस लाइन डेटा कौन सा है? अब मैं बताता हूँ सर, हम लोग तो ड्रोन जो होता है वो तो आज का जो बेस डेटा है, हाँ एग्जैक्टली। हमें पुराना मतलब आप पुराना वॉल्यूमेट्रिक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। अगर नीचे पानी भरा हुआ हो तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। ठीक है, वो मैंने आपको सर, अगर आपको पता तो एक केस स्टडी हमने बताई थी, जिसके अंदर अभी मैंने ये, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, वी हैव कवर्ड। हाँ, नहीं कर सकते सर। यस, थैंक यू सो मच। Thank you, Kausal Saab. Thank you to all learned audience for a very good brainstorming session. और जो टॉपिक कौशल साहब ने सेलेक्ट किया वो रियली कुछ हटके था, और इसमें इन्होंने जो ग्राउंड वाटर का लेवल की मॉनिटरिंग करी, और जो चार्जिंग और रिचार्जिंग बार बार हो रही थी, उससे डी वाटरिंग का खर्चा बढ़ रहा था, तो उन्होंने कम समय में एक एक्यूरेटली काम किया। तो रियली ये कमेंडेबल जॉब है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग पेटेंट्स, एंड वी होप you will do many more things in the future. Thank you, sir. Now we call upon our next speaker. Bhatwadekar Saab is online now. After a rigorous efforts from our team, now we have been able to connect Bhatwadekar sir. Please join, sir. Sir, are we audible, sir? No, you are very feebly audible. Yes, you are audible, please. Okay, so shall I start?
excited that all the mining engineers are together with AI. हम भी कम नहीं. I am thankful to Professor Sushil Bhandari for inviting me, Mr. Jaiswal and Jodhpur chapter and MBM University to participate in this conference. Next. So my topic is building information model for blastability of intelligent predictions of environment issues in blasting. So these are the various topics. First one, content, various topics, because building information model, it takes time. Just like yesterday, one of the doctor was asking me, he had developed a diabetes AI based model. So then I asked him that whether, because patients will fear that what type of diet has to be taken. So Google is already having image based basis where you can calculate how much calories are there, what is the content, like that. So always information model has to be on larger database. So this is an attempt to show that how particular only one blast operation, how the model can be developed in larger database over a period of time. It is not possible that in 1 year or just for research paper it is possible to do. These are the various steps I have given. Next one. So blasting, you are aware that it is very important for hard rock excavation in mining as well as civil engineering projects, and it is important because downstream operations are also dependent on the this blasting. Next one. So these blasting key operations are important in blasting in hard excavations are efficiency in excavation, cost effectiveness, precision control, then other access to resources. So various aspects are important based on blasting. Similarly, blast design and regulation compliance for each country are important, and with the training the expertise can be increased. Now let us see prediction of rock. Next one, prediction of rock fragmentation, on which it depends. So blast design, you are aware, which are input parameter, rock mass properties, which are UCS, or which is strength property, which are UCS, in situ block size, elasticity modulator, and blastability index. In this in situ blast size is important in various rock mass of like limestone or any other thing, because that will depend what is the block size in situ. Based on that, final fragmentation size will depend. Explosive also nowadays and is mainly used, but type and VOD, based on that the final fragmentation will depend. Then suitable group of mines in the same organization. So one other aspect what I have considered is hydraulic rock breaker also can, which is a negative aspect of the blasting. Why do you require hydraulic rock breaker? Because of that, when a group of mines are there, you are able to segregate how many per lakh ton working hours are required. Based on that, you can segregate, classify the mines in different set, and based on that, you are able to decide. Similarly, with the GPS, you can find out in a particular blast where the hydraulic rock breaker is working. Based on that, you can backward estimate where more fragmentation has occurred, and then based on that, you can redesign the blasting. So these are the different, this is the negative aspect, but that also can be used for improving the primary blasting. So with the hydraulic rock breaker, the cost is so that can also reduce with the environment of the fly rock input parameters. So this is a hole diameter, means blast design parameters which are controllable. Then rock mass properties which are less controllable. Others are which are normally considered also for fly rock is blastability index or weathering index, and geological structures also play important role, because of which fly rock may occur long distance. So out of this, rock mass properties may vary for mine to mine, but
next one. This is about ground vibration. Various parameters are given, which is blast design, rock property. So in this, one thing is important for ground vibration. Important is distance from blast to the where the instrument seismograph is located. So and plus maximum charge per delay. This is must. Otherwise, even though you use AI, you cannot predict that. So these are the important things to be considered for preparing databases. Next one. So this is a drill to mill optimization. For each operation, you can find out what are the input parameters and based from drilling, blasting, loading and hauling, crushing and milling. So next slide. So there I have considered for each for the rate of prediction of drilling, what are the important parameters, rock property, drilling parameters, environmental factors, and related to that input parameters which can be used for developing the your model for particular area or particular mine or group of mines. So next one. This is about the prediction of loading equipment. This is the excavator specification, mainly bucket capacity or engine power, material properties, what is the density, fragment size and moisture content, operational factor, what is the skill of the operator, cycle time, whether it is 90 degrees or 120 degrees, site conditions, loaded method and production goals, the target production rate and scheduling and planning. Here quality may be one of the important parameters. For dump truck, ton kilometer per hour is a good KPI for measurement of output, because just tons per hour is not adequate. For that reason, truck specification, what is the hauling capacity, then haul distance, cycle time, operational factors, material properties and production goals. These are the input parameters I am not discussing because you are well versed about these various input parameters. Similarly, in limestone mines which are attached to cement plant, raw mill is a major thing. So even in blasting, if you do finer fragmentation, it is going to affect the performance of the raw mill. So you should drill to mill as a cooperation with plant and mines, so which will help to reduce the energy consumption. It will give better productivity of the mill also, and then various process controls are available for the raw mill. With that you can monitor. Next one. Slide please. So important consideration are data preparation, because the challenge is how you data. Okay, no problem. So finally, what I want to say that different databases are required. For next slide, you can go next slide. These are the application of AI models. So you know already various models are discussed. Let's next one. Next slide. These are various and building information model. So these are the steps which can be taken. Now coming back to open generating AI, if you are having different databases that can be asked, and you will be able to answer the question. Sir, sir, you are left with 5 minutes, sir. Please keep pace. Okay. I want to say this presentation also I did using ChatGPT or using the chatbot. Within a couple of hours, I developed 5,000 hours, but I use voice command to type it. And this paper was prepared of 5,000 words in less than 4-5 hours. This is just I applied. I thought that which is useful. And then these are the ways where the mining engineers can prosper. And this is a book I published on AI issues. There is a conference coming. These are the various 4-5 conferences online I conducted. So I request you, everybody, every author to participate in conference. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you very much. Sir,
आपने जिस तरीके से ये टॉपिक चूज किया प्योरली माइनिंग पे था, और सभी के लिए आपका ये बताना रहा कि कैसे ऑल ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जाए और कैसे उसमें फाइनर पॉइंट्स को ऐड करके और बेटर प्रोडक्टिविटी स्किलनेस को इम्प्रूव किए जाए, मशीन सिलेक्शन, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, सब के अंदर में एआई का एक सब्सटेंशियल रोल है जो किया जा सकता है. एंड यस, इन स्टेप्स एआई इज हेल्पिंग. वी विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Now, can I call upon Ms. Nivedita Prajapati? She is from Ultratech. Yeah, and she will be having his experience of AI in limestone exploration. She will be headed also by Ajit Oswal sir. If both of you are here. Ajit sir is not there, sir. He is not there? No. Okay. Now you please proceed. A very good morning to all of you. Being a geologist, I will be focusing on the practical application of AI in mineral exploration. So to start. This one, but it's on my presentation. Next slide, please. Yes, the flow of the presentation will be like, we'll start with the traditional method of exploration, limestone, challenges that we face in limestone exploration, then AI and ML application in mining industry. We'll learn the global practices in mining industry. Then we'll go to specifically AI tools for limestone deposit, and we'll learn the constraint, the limitations, and we'll conclude the session. This is a typical flow chart which I think already Rajni sir has explained, the traditional method of exploration, which typically starts with historical data compilation, following with preparation of sections and plans to prepare for borehole planning. And after we plan the boreholes, we start drilling. After the completion of drilling, we get the core boxes, and we do core photography followed with core logging, sampling, which mainly includes sample marking, sample preparation, and then sample dispatch to the laboratory, and we get the analysis. After we receive the analysis, we get the QAQC done to validate the data, which is one of the important thing in applications of AI. That is validated data. And then we go for 3D modeling, and finally we get the resource and reserve numbers. The challenges that we face in traditional exploration are mainly human error. Different geologists log the same litho units differently. So there is no consistency in logging. Second is typographical error, which compromises the data accuracy. Logging is a time-taking process, so sometimes it delays the timeline of the projects. And lack of infrastructure like core shade, that affects efficient logging and also core storage. Accessibility of drill core. Sometimes geologists need to validate the data, so he goes back to the drill cores, and that requires rehandling of the core boxes, which increases the risk of misplacement and damage to the core.
To overcome these challenges and to reduce the human interference, we have explored the areas where globally AI and ML being applied in the mining industry. And the areas are mineral prospecting, remote sensing, core logging and data analysis, geophysical data interpretation, and geological modeling. As limestone is a sedimentary deposit and it is continuous, so it doesn't mostly rely on the indirect methods like geophysical data. So we mostly focus on direct drilling. So we focused into core logging. So I'll be sharing the use of one of software which is developed by Australian government for automated core logging. This is called Core Profiler, which is a software-based core logging tool, and it is developed by the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization of Australia. What it does, it takes, you can see the image in the left-hand side. It takes the core photograph as an input, and in output you can get a scaled image where you can measure the depths. So it has three different scales. I mean, you can zoom it and zoom out. This software helps in capturing the geological and geotechnical readings from this scaled image, and it also gives the deep direction and RQD and other readings. In this image, it has automatically detected the fracture zone, which is highlighted in red. Along with depth, it gives the details. It has another advantage that that we have been talking since yesterday. It takes an reference image and it logs the entire core, entire length of the core. For example, in this image, it has logged that entire core, and once we accept the interpretation of the software, it automatically fills the field which geology takes care of, which geologists field it manually. So it saves time. This is another example where the software is, we can measure that deep amount with few clicks, and bottom it is calculating the RQD automatically. Limitations of AI in limestone exploration, as everyone is saying, the data quality and availability. And as geology is a changing and a dynamic, and every deposit has a unique characteristics, geological characteristics, it needs ground validation. And AI tools being very costly, they need high initial investment cost. And unlike metal, which are mainly dependent on indirect methods of exploration, limestone is mainly focused into drilling. That constrains the scope of use of AI and ML in limestone exploration. So conclusion is data is a success, is the key to success of any exploration project. And validated data, as we have been learning since yesterday, is the essence of AI, any AI application. And application of core profiler software increases the accuracy and efficiency of geotechnical and geological logging. And in this way, AI and ML contributes to sustainable resource management and strategic decision. Thank you. Thank you, Nivedita. Koi questions? Yes, please. Mike. Sir, it matches because I have shown. You are talking only about the limestone type of deposit? No,
All deposits, sir. Yes, sir. Because the variability in other deposits will be much wider, which require a particular interpretation of a experienced geologist. Correct. While a bedded or a sedimentary deposit, it has a little less variance, so it is easier to go through the core logging through AI system. This is what is my feeling. Because like the metal deposits, which are more complex, and there is plenty of variability, and a little variation in the grade can ultimately affect the economics of the mine. Sir, there is an image which I have shown. You have to take a reference image. So that reference image, for example, I am taking of metal ore. I have to describe what are the characteristics in general in the deposit. So it feels that geological logging field. If you agree, that is fine, but geology varies. So there is an option to edit that field also. Like if I'm saying it is fine grain, but I can see it is coarse grain, that's why I focus that it needs ground validation. So that field is editable, you can go and change. Thank you, sir. Sir, it is available in India. It is marketed by Data Mine, so it costs around 5 to 6 lakhs. So you can, we have just got the trial version, so it is free. You have to reach out to Data Mine and get the trial version. Then after that you can purchase. या एक माइक ऑडियंस में रहे ठीक रहेगा. Sir, Mike. मैम मेरे को ये जानकारी चाहिए था, जैसे कोर प्रोफाइलर है ना, लाइमस्टोन में अपन काम करते हैं, बहुत कम इसके अंदर वेरिएशन रहता है, जबकि आप अगर किसी बेस मेटल पे अपन काम करते हैं ना. मैंने बेस मेटल पे भी काम किया, आयरन ओर पे भी काम किया है. तो उसके अंदर क्या है कि अपने को कई सारे लीनिएशन, कई सारे फोलिएशन प्लेन है. जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो जनरली पर्टिकुलरली एक सिंगल फोलिएशन प्लेन को हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जो है फॉलो करता है ना. और जब हम उसको कोर ड्रिलिंग करते हैं तो उसका जो एक्यूरेसी है, उसका जो एंगल्स है जो हमें मेजर करना पड़ता है, क्या कोर प्रोफाइलर वो सारा कर पाता है? हाँ, आपके पास जनरली हम क्या करते हैं, डीप एंगल जो होता है प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं. अगर ये ओरिएंटेड कोर नहीं है, अगर ओरिएंटेड कोर है तो एक गोनियोमीटर और कैनोमीटर से हम लोग यूज़ करते हैं. सो वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली हो जाती है. अच्छा, वो जो अपन फिजिकली करते हैं वो इसमें हो जाएगा. वो अब जस्ट आप क्लिक करेंगे फोलिएशन के अलॉन्ग, आपको दिखेगा इमेज में, देन वो ऑटोमेटिकली डिप दे देगा. मैं आपको दिखाती हूँ. और मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसमें कि अपने को जैसे कोर प्रोफाइलर के अंदर क्या क्या ओर है ये भी पता लग जाता है क्या? और जैसे हाँ, ये इमेज टाइप ऑफ ओर पता लग जाएगा? मैं आपको बताती हूँ. ये जो इमेजेस है ना, हाँ, ये हाँ, एग्जांपल है. आपको इस डिपॉजिट में 6 टाइप का बेसिक लिथोलॉजी है फॉर एग्जांपल. तो मैंने उसका जो टिपिकल होता है, मतलब जो मुझे मोस्टली मिलता है, उस इमेज को मैंने उसके लाइब्रेरी में सेव किया. एंड उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है पहले कि ये फाइन ग्रेन होता है, इस कलर का होता है, एंड टेक्सचर उसमें ये मिलता है. तो जब ये इमेज इंपोर्ट हो जाता है, इसे मैं क्लिक करती हूँ, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि आपका वो लिथोलॉजी कहाँ पे है. बेस्ड ऑन जैसे हमारा फेस को हमारे गैलरी में मिल जाता है फोटो, तो अगर हम फेस को ले लेते हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है. और उसके बाद अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन, वो यहाँ पे सारे जियोलॉजिकल फील्ड फिल कर देता है ऑटोमेटिकली. पर अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे कोर्स ग्रेन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ग्रेन साइज में जाइए, ये ड्रॉप डाउन मेनू होता है, आप उसको चेंज कर दीजिए फाइन ग्रेन टू कोर्स ग्रेन. सो ये ऑप्शन है, बट पहले आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि उस फोटो वो अगर क्लिक करता है उसके अगेंस्ट में आपको ये डिस्क्रिप्शन. मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब ये कोर अपने को दिख रहा है सपोज है ना, हाँ. और इसमें पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलरली प्लेन को फॉलो करते हुए हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आया हुआ है और उसने मिनरल डिपॉजिट किया हुआ है ना मैम. हाँ. और उसमें वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमेटेलिक डिपॉजिट्स है ना, तो क्या ये कोर प्रोफाइलर उसको आइडेंटिफाई कर पाता है? इसको आपको एक हाइड्रोथर्मल स्कैनिंग सिस्टम आती है, कोर स्कैन.
एपी रॉक का, उसके साथ इंटीग्रेट ये हो जाता है। और या फिर मैम, वो आपको जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जो आप बात कर रहे हो वो अलग है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के साथ जो पॉलीमेटालिक डिपॉजिट्स बनते हैं उसका अलग है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊँ आपको, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक किताब है, एक पॉल रॉमधौर की किताब है, और वो इतने प्रिसाइज साइंटिस्ट हुआ करते थे पॉल रॉमधौर, कि सिर्फ और माइक्रोस्कोपी के अंदर देख के वो इवन ग्रेड तक फाइनलाइज करते थे कि इस ग्रेड का अपने को ये और मिल सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब अब आज हम बेस मेटल में काम करें तो हम चलो कोर ओरिएंटेशन से काफ़ी चीज़ें पता लगें, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, बट मेरा सिर्फ ये क्वेरी है कि क्या हम पॉलीमेटेलिक अगर डिपॉजिट्स हैं, जैसे आज हमारे पास हैंड XRF है तो वो हमको एलिमेंटल वैल्यू बता देता है ना, बट अगर कोई हमें जैसे कि फ्लूइड इंक्लूजन्स है जिससे हम ये पता लगा, जैसे भूखिया गोल्ड डिपॉजिट है, वहाँ पे कब हमें पता लगा कि गोल्ड है, जब हमने उसको देखा कि एपी थर्मल सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है और पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर के ऊपर एक मिनरल फॉर्म हो रहा है, उस मिनरल की वजह से हमने कहा कि हम यहाँ पे गोल्ड हो सकता है ना। तो मैं वो बस वही जानना चाह रहा हूँ, क्या वो इतना एक्यूरेसी है? नहीं है, मोस्टली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपका लॉगिंग प्रोसेस है ना, जो हम लोग विजुअली देखते हैं उसको डिजिटलाइज किया गया। और मिनरल के लिए आपको कोर स्कैन का जो आता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी, उससे आपको पता लगता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। निवेदिता, यस सर, जिस तरह से अपन इसमें फेसिस वेरिएंट, जैसे अपन डिफरेंट ग्रेड लेवल्स या डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स जो आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज करते हैं, एवरी डिपॉजिट इज हैविंग सर्टेन वेराइटीज है ना, तो उस तरह का जब आप डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाई करके उसको इमेजिंग या जो भी कर लेते हो उसको डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाई, सो इज दैट कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू न्यूअर बोरहोल्स और न्यूअर एरियाज ऑल्सो इन एडजॉइनिंग एरिया, लेटरल और डेप्थवर्ड, मोस्टली लेटरल? सर बेसिकली क्या है इसमें, आपको पहले आपका जो भी डिपॉजिट है उसका एवरेज, जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि रामपुरा अगुचा, वहाँ पे डिपॉजिट मोस्टली क्या है आपका मतलब मासिव है, सो मैं बट स्टिल ओवर टाइम में वेरिएशन होता है, ग्राफाइट रिच भी आता है जहाँ पे फॉल्ट होता है, तो मुझे वो वेरिएशंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली फिर वो उस इमेज के बेसिस पे लेगा, बट स्टिल देयर विल बी वेरिएशन, वो हमें कैन वी एक्स्ट्रापोलेट लेटरली और डेप्थवर्ड, मोस्टली लेटरल for our futuristic exploration? Sir, it is a geological data collection software. नहीं, just उसको इस तरह से यूज भी, alternate uses extrapolatable है वो? Extrapolate we can do because this is AI based. We can do, sir. I have not explored that because this is trial version. That could be a game changer. Yes, yes, sir. And yes, नहीं, वो तो it's a tool, not a final result. It's a tool, yes. But tool itself is of tremendous use. Yes, thank you. Thank you, sir. Because she has worked with us in Vedanta also. So, thank you, sir. थैंक यू निवेदिता, आपने डेफिनेटली एक जो आपने बताया कन्वेंशनल जो एक्सप्लोरेशन होता था और उसमें ह्यूमन एरर इन्वॉल्वमेंट था और जियोलॉजी और कोर लॉगिंग बहुत ही कम्बरसम है, बोरिंग होता है, आदमी गलतियां करते हैं, और एंड इट इज़ ए बेसिक कोर ऑफ द बिजनेस है. इफ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली देन कैन यू लीड टू you lead to wrong or false resource estimations as far as quality and quantity is concerned. So we are highly obliged that you have awakened us with this game changer core profiler, which can lead to better core logging, better resource estimation. Hope all of us have learned from this and will use in their time. Thank you. Now I request Sri Maniramji to present his topic in a limited time that is assigned to you is just 5 minutes. गुड मॉर्निंग बॉस, आप प्रवचन देने वाले को इवन आई ट्राई, कल से एआई की बात हो रही है और हम
आपको बीच बीच में इनडायरेक्टली एसएन का हिंट दिया जा रहा है, बट एसएन के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। एसएन मतलब इंटेलिजेंस में बी आर्टिफिशियल, बट स्टुपिडिटी इज नेचुरल। ये स्क्रीन मैं आपसे जल्दबाजी में एक टॉपिक पे बात करूंगा। मेरा इन्वेंशन है, रेदर इसमें 2 इन्वेंशन इन्वॉल्व है, और बिल्कुल सुपर स्टुपिडिटी से कल पीयूष बॉस ने शुरुआत की थी। एक चीज़ वो कहना भूल गए, वो महाभारत वहाँ तक हमको लेके गए थे, तो हमारे यहाँ बोलते हैं भगवान गेला गुंगा ने मिले, घना होशियार ने को मिले नहीं, घनी घंटी बजाई फायदो नहीं है। So I was a poor mining engineering student. Still, I developed this thing. This is ice stem blasting and with ice stem plug that resolve most of the problems of blasting. In the picture, you see the plug getting ready to be used in the blasting. So what we will talk, then हम लोग कौन हैं, क्या करते हैं, और कन्वेंशनल ब्लास्टिंग क्या है वो आप देखते हैं, उसको क्या बेसिक्स फंडामेंटल है। 1628 में पहली बार इंजीनियरिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन चालू हुए हंगरी की एक माइन से। उसके बाद में 1800 के आसपास में इंटेंस रिसर्च हुआ। 1849 में सर जॉन बर्गोइन ने एक डिटेल्ड बुक लिखा, ट्रीटाइज ऑफ ब्लास्टिंग। तो वहाँ से लेके आज तक वो स्टुपिडिटी बोलो, कुछ भी बोलो, इंटेलिजेंस बोलो, वो कंटिन्यूसली जारी है, और जो प्रॉब्लम है वो जारी है। वो क्या है वो बात करेंगे, और ये आइस स्टेम ब्लास्टिंग से आपको क्या फ़ायदे हैं वो आपको आंखों से दिखाएंगे। वो आइस स्टेम प्लग अंगद की पाँव की तरह वहीं रहता है जहाँ इसको रखा गया है। ये ब्लास्टिंग के बाद का इमेज है। हम लोग क्या हैं, आपके चारों तरफ पोस्टमार्टम एनालिसिस टेक्नोलॉजीज प्रिवेल करती हैं, जो खूब सारा डाटा जनरेट करेंगी, खूब सारा एनालिसिस करेंगी, वेट करेंगी, फैटेलिटी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और लास्ट में फिर बताएं कि ओहो आपने मीठा ज़्यादा खाया था इसलिए दांत खराब हो गए आपके। ओके, और ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप पर्टिकुलरली माइनिंग में आपका जो लेबर काम कर रहा है, आपका जो वर्कफोर्स काम कर रहा है, उसको ऑथराइज कीजिए सेफ्टी डिसीजन लेने के लिए। आपकी टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए कि वो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ करे और वो सेफ्टी डिसीजन खुद ले। तो हमने VRS मैंने लिया सिम्फर से, और ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम उन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो प्रेडिक्टिव सेफ्टी इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। हम लोग ओरिजिनल टेक्नोलॉजी डेवलपर हैं, इंडस्ट्री एकेडमी का सपोर्ट करते हैं, आपका सेफ्टी ऑडिट करते हैं, सो ऑन। हमारे बारे में जैसे मैंने बोला 2017 में अगस्त में ही हमने काम स्टार्ट किया। 31 मार्च 2017 को 20 साल 6 महीने सिम्फर की नौकरी करने के बाद VRS लेके, और इस 8 साल के पीरियड में बहुत सारे आई वाले प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट पे हम यहाँ बात करेंगे। मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, वो बोलते हैं आई छोटा होना चाहिए, तो हमारे सारी वाली आई छोटी है, बड़ी नहीं है। और इन 8 सालों में कुछ मतलब नौकरी के 20 सालों में तो बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजिंग काम किए थे। डिफेंस के लिए भी काम किया, कोयल के लिए भी काम किया, अंडरग्राउंड ऑयल स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम किया। बट यहाँ 2-3 टेक्नोलॉजी अच्छी इन 8 सालों में भी की। अभी 2-3 साल पहले ही हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट 17 मीटर की कोल सीम डबल लिफ्ट का डेवलपमेंट था, उसको परमिशन दिलाया, कोल सारा लगभग निकल गया है, एंड दैट्स द ओनली प्लेस वेयर फायर इंसिडेंस नहीं हुआ, फैटेलिटी नहीं हुआ, कोई सब्सिडेंस नहीं हुआ। ऐसे ही ये एक फ़ोटो देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो बम्पिंग का इश्यू है ओपन कास्ट माइन में, कोटा में, रामगंज मंडी में,
उसको भी रिजॉल्व किया, जबकि वहाँ पे NIRM जैसे CMRA जैसे इंस्टीट्यूट काम कर चुके और कोई सॉल्यूशन नहीं था। कन्वेंशनल ब्लास्टिंग में क्या फंडामेंटल्स हैं? आपको आज तक ब्लास्टिंग जो है इंजीनियरिंग में सबसे कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल मीन है आपको और प्राप्ति के लिए। और सर हर इंजीनियरिंग ब्लास्ट, सर पॉसिटिव ऑफ टाइम सर, ओके, आई एम रनिंग फास्ट। तो हर ब्लास्ट आपका कंट्रोल ब्लास्ट होता है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट है सेफ्टी जो DGMS के लिए है, दूसरा एस्पेक्ट है आपके मालिक के लिए। इन दोनों का जब तक शादी नहीं होगा आपका ब्लास्ट और आपके ऑपरेशन गड़बड़ है। तो ब्लास्ट कैसा होना चाहिए ये वीडियो भंडारी साहब ने दिया है। AI का A यहाँ से शुरू होता है, A मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ये आप ब्लास्ट देखिए, ब्लास्ट का बेसिक पर्पज़ ये है फ्रैक्चर करो, फ्रेगमेंट करो और एक मगपाइल क्रिएट करो जो वहीं पे इजीली आप कर सको। लगभग 30 मीटर का बेंच होगा, बहुत टाइट स्पेस में ब्लास्ट हुआ है, हो गया। आपको ब्लास्ट डिजाइन करने के लिए MCPD कॉन्सेप्ट है, STM कॉन्सेप्ट है, सॉरी SHM कॉन्सेप्ट है, और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया I-STEM ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनकी बेसिस पे आप या तो क्रेटर ब्लास्ट डिजाइन करो या फ्लेक्सिबल बेंच डिसाइड करो। और ये कोटपुतली में एक ब्लास्ट लिया था जहां नॉर्मली 12 मीटर की बेंच पे 110 kg एक्सप्लोजिव यूज होता था। ये ब्लास्ट आप देख रहे हो, इसमें मात्र 65 kg एक्सप्लोजिव हमने यूज किया है। और अभी A देखा था, अब I देखो। जैसे मोदी जी ने बताया था B² + C² 2BC, हालांकि वो BC के मतलब यहाँ अलग हो जाता है डबल BC का, बट AI का ये A और ये I आप देखिए तो I-STEM ब्लास्टिंग का ये चीज़ है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में ये लाइमस्टोन, अल्ट्राटेक, कोटपुतली, और हर माइन में होता है, हर माइन में होता है विदिन 20 मिलीसेकेंड। क्योंकि हम लोग स्टार्स को बहुत लाइक करते हैं, तो स्टार शूटिंग 20 मिलीसेकेंड में। ये शासन कोल का बहुत दुनिया का मतलब हिंदुस्तान का बड़ा दिमाग लगा, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर लगे, लेकिन 19 मिलीसेकेंड 20 मिलीसेकेंड से ज़्यादा एक्सप्लोजिव एनर्जी को होल में रोक नहीं पाए। देख रहे हैं ये, मैं फास्ट जाते हुए, ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपको HEMM का, ड्रिलिंग का, एक्सप्लोजिव एनर्जी यूटिलाइजेशन का। और माइनिंग इंजीनियर ये और मशीनरी ये सोचती है हमारे तो बाठा ही लिखोड़ा है और बोल्डर वाला बाठा डील करना लिखोड़ा है, और उसमें ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये I-STEM प्लग का ज़िंदगी का पहला ब्लास्ट है। खुद के मेरे पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई थी, हमने कुछ चेंज नहीं किया, कोई एक्सप्लोजिव चेंज नहीं है, कोई बर्डन चेंज नहीं है, कोई स्पेसिंग चेंज नहीं है, कोई डिले चेंज नहीं है। आधे फेस में नॉर्मल कन्वेंशनल है, आधे में सिर्फ स्टेमिंग प्लग हमने अपना डाला है, आधा मीटर का एयर डेकिंग गैप रख के। ये फ्रेगमेंटेशन डिफरेंस है। डोंगरी बुजुर्ग माइन, मोइल, ओ सॉरी। अब तक हम इन माइंस में काम कर चुके हैं। 2009-10 में जर्नी चालू हुई थी। राम को 14 साल का वनवास मिला था। मैंने 17 साल का गैप के बाद 2022 के आसपास में महाकाली माइंस WCL के एक अंडरग्राउंड माइन में इसका वापस से ट्रायल किया। वहाँ एक्चुअल में कोल बम्पिंग का इश्यू था, बट बाई प्रोडक्ट ये था जहाँ कोल के एक फेज से 11 टन का प्रोडक्शन निकलता है 12 होल के ब्लास्टिंग से, वहाँ पे हमने 17 टन 19 टन रेगुलर एक महीने तक निकाला। फिर मेरे को ख्याल आया बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको वापस वनवास के बाद जिंदा किया जाए। बहुत सारी माइंस में लगभग 50,000 होल में हम ट्रायल ले चुके हैं। और भंडारी साहब एक चीज़ पढ़ाते थे सर, अभी 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको।
कि ब्लास्टिंग होती है तो वेव्स जनरेट होती है, ये सब होता है। ये फेस आयरन और माइन भीलवाड़ा में आप ब्लास्टिंग वेव्स फेस पे टकराते हुए देखेंगे। फेस आधा में 65 kg चार्ज डाला हुआ है जो सामने निकल रहा है, वेव्स टकरा रही हैं और वहाँ बड़े बोल्डर्स मूव करते हुए दिखेंगे। अब इसके पीछे वाले साइड से जहाँ 40 kg एक्सप्लोजिव डाला हुआ है आई स्टेम प्लग के साथ में, वो उभर के सामने आ रहा है और बहुत उसके फ्रेगमेंट साइज का डिफरेंस आप देख लीजिए। कम एक्सप्लोजिव एनर्जी में भी वो सारी वेव्स टकराते हुए और आई का ब्लास्ट है। ये अभी रिसेंट हमने दीपका में लिया था, 25% एक्सप्लोजिव कम में हर बार हमेशा यही परफॉर्मेंस रहता है। SCCL दीप का ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ GP3 का। वहाँ पे उनका एवरेज लोडिंग 65 kg एक्सप्लोजिव 68 kg एक्सप्लोजिव के साथ में 55 to 60 टीपर पर शिफ्ट का था और हम 45 kg में 115 से 120 टीपर उठवा रहे थे। दैट वाज द थिंग। ये सीज्मोग्राफ रीडिंग अगेन GP3 का आप इधर लेफ्ट में देखेंगे, अगर मैं जूम कर पाऊँ तो इसको लगभग 180 मीटर पे आपका 3.081 ppv है और फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 11.25 है और उधर राइट में देखेंगे 8.3 सिमिलर डिस्टेंस पे और डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आपकी है 8.75। मतलब ये आपकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाता है जिससे आपका ब्लास्टिंग ज़्यादा सेफर होता है। आप राइट में रिग्रेशन एनालिसिस देखोगे, उस रिग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से 200 मीटर की डिस्टेंस पे कन्वेंशनल ब्लास्टिंग 8 ppv जनरेट करेगा और वहीं पे 2.65 की ppv जनरेट होगी आई स्टेम ब्लास्टिंग से। ये मारवाड़ मुंडवा जिसके अंदर आप पीछे देखेंगे एक कुछ होल का डिले गड़बड़ हो गया, एक होल का, तो ब्लास्ट तो जहाँ से फेलियर हो गया वहीं से आगे मूव करेगा, बट चूंकि वो मूवमेंट पीछे से चालू हुआ है, एक तो आप इस साइड में किनारे पे बोल्डर्स जनरेशन देख रहे हैं क्योंकि एनर्जी पीछे से लीक हो गई है, लेकिन जो फ्लाई है अभी भी 10 मीटर फेस से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाएगी। ये भट्टाडी कोलरी का एक क्लासिक है। एक ही मिनट में इसमें पूरा फेस क्रेटर ब्लास्टिंग के साथ ही डिजाइन था। आप देखेंगे पूरे होल क्रेटर पूरा उठता है, 2 मीटर का, 2.5 मीटर का, 6-7 मीटर तक का क्रेटर पूरा मटेरियल ऊपर आता है और वो विदिन 10 मीटर की लिमिट में सारा मटेरियल वहीं बैठ जाएगा, फ्लाई रोक नहीं होगा, ये हम इंश्योर करते हैं। लास्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, ये मैं वीडियो कर देता हूँ स्किप। तो हमारा हमने जो अचीव किया है, कैसा भी हो, आप जो जितना एक्सप्लोजिव एनर्जी यूज़ कर रहे हो, बहुत नॉर्मल ब्लास्टिंग एक अच्छा ब्लास्ट होता है, उसमें 7 से लेके 14% एक्सप्लोजिव एनर्जी आपके काम की होती है, बाकी आप वेस्ट करते हो। उसमें भी हम 25% कम बारूद में 50% आपकी HEMM की एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, 75% आपके वाइब्रेशन कम करेंगे, 100% फ्लाई रॉक और बैक ब्रेक को एलिमिनेट कर देंगे। बाकी मेरे को ब्लास्टिंग आता नहीं है और ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड और मेड इन इंडिया है। मैंने कहा था ए से चालू करूँगा, आई से बंद करूँगा। तो ये ए से ऑस्ट्रेलिया से चालू किया, ये कोटा में झालावाड़ में ब्लास्टिंग का है, वो 72 kg यूज़ करते थे 50 kg में। अभी जुलाई में शुरुआत में 4 जुलाई को ब्लास्ट हुआ है।
हम किसी से कम नहीं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Any questions? आई एम हमारे पूर्वज बंदर थे, हम भी बंदर हैं और लालची तो है ही हैं। हाँ, दीपका में और उसके बगल की 3 माइन में प्लस जोइला एरिया में प्रपोजल फ्लोट कर दिए गए हैं, इम्प्रूव करेंगे उनको। और WCL की 2 माइंस में, मोइल में 1 में। CMD NMDC ने भी मेरे को लास्ट टाइम बोला था, बट मैंने कहा अभी टाइम है, गरीब आदमी उतनी दूर नहीं आ सकता, बट अब उनको भी अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा भी है सरपंच साहब। आपने बताया कि रामगंज मंडी में आपने कोटा स्टोन में बम्प्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो बम्प्स था क्या और कैसे सॉल्व हुआ सर? हाँ जी, वो क्या है कि जब उनकी जितनी मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ 18 से 22 मीटर का वो है 70 मीटर की डेप्थ पे, और उसके ऊपर ओबी है। पहले ओबी तो ब्लास्टिंग से हटाते हैं, वो फिर कट करके हटाते हैं। तो उनका जब लास्ट का 6 मीटर रहता है तब उनके अचानक से बम्प आता है और वो फ्लोर कट जाता है, मटेरियल ख़राब हो जाता है। और उन्होंने CMRI की सेवा भी ली थी, NIRM की भी सेवा ली थी, बट वो उनको मतलब वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट वाले थे, तो उनको नहीं समझ में आया कि स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है। बेसिक फंडामेंटल है, नेचर से आप लड़ नहीं सकते, नेचर के अलाइन हो जाओ, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस है आप उसको पहचान करो और उसी को ब्रेक करो। तो वो उसके 90 डिग्री कर रहे थे, मैंने वहाँ पे आपके प्री कंडीशन होल कटवा दिए और वो अब नहीं होता, वो लास्ट का 6 मीटर आराम से ले लेते। थैंक यू सर। तो मतलब प्रेस आपने प्री स्प्लिटिंग से स्ट्रेस रिलीज करवाया था इन द सेम डायरेक्शन, डाइवर्ट करवा दिया, रिलीज नहीं करवा सकते, डाइवर्ट हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनीराम जी, एक मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो टेक्नोलॉजी बताई या जो आपने अपना जो ये किया है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना बेनिफिट कर रहे हैं जो लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें? वो मैंने बताया, आपका सीधा बिल एक्सप्लोजिव का 25% कम हो जाता है, मिनिमम हम हाँ नहीं वो वही बता रहा हूँ। तो हाँ, तो अब मैं फिगर बता रहा हूँ उसके, आपने पूछ लिया मेरे से। तो अडानी में हमारी बात हुई, तो मेरे प्लग का जो कॉस्ट है, मेरा एक बेसिक फंडामेंटल रहता है, जितनी मेरी इसकी कॉस्ट है उससे डबल से ज़्यादा एटलीस्ट मैं एक्सप्लोजिव कॉस्ट सेव करूँ, ठीक है। तो वो उतना सेव हो रहा था और डीजल की कॉस्ट लगभग उतनी ही सेव हो रही है, ठीक है। और मैं ये बात कर रहा हूँ ओबी ब्लास्टिंग का। अगर आप लाइमस्टोन में जाएंगे या मिनरल में जाएंगे तो वहाँ आपकी सेविंग, जो मैंने 2010 में PhD करवाई थी, तो एक होल पे उनको 45 से 50 हज़ार रुपये का फायदा था। सिर्फ 750 रुपये प्लग के उस समय मैंने सोच रखे थे किसी कारण से, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। बट अब ये अडानी के केस में क्या हुआ, ये बताया तो बोले नहीं जी महंगा है। तो मैंने कहा ठीक है महंगा है, तो अपन एक काम करते हैं, हमारा आदमी साइड पे खड़ा रहेगा, आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, जितना प्रॉफिट होगा हम डॉक्यूमेंट करेंगे। नहीं, वो अडानी में नहीं चलता है। मैं सारा अडानी कमाएगा देश में, हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। तो वो वाली बात है। एक होल पे मतलब मैं ये ओबी की बात बता दिया आपको, जितना प्लग का कॉस्ट है उससे ज़्यादा ये होगा। सेफ्टी अनपैरेलल आपको मिलती है। अभी आपने देखा है, आनंद भी इन्वॉल्व था उसके अंदर, गुड़गांव में, नोएडा में ट्विन टावर गिरा रहे 8 मीटर दूर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वी कैन टेक सर्विसेज ऑफ मणिराम जी सर इफ एंड व्हेन नीडेड। वी वंस अगेन थैंक यू मणिराम जी फॉर योर। फिर बाद में नीचे बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I request all the dignitaries to collect their memento from the stage. I request Nivedita ma'am, Dr. Hitanshu Kausal sir, Manidhari sir, R.S. Rathod sir, Rajneesh Purohit sir to take their memento from the stage.
And when I चेयर से रिक्वेस्ट है कि डिग्निटीज को जो स्पीकर्स थे उनको ऑनर करें. yeah, you can share. Hello. थैंक यू पुरोहित साहब. राठौड़ साहब. Hello. Yeah. तरुण साहब बैठे. Hello, sir. Yes. अरे उनको मैसेज. हितांशु कौशल जी. अल्ट्राटेक से निवेदिता. शी इज हियर. डॉक्टर मनीराम जी. अभी बताता हूँ. बस हो गया. आप थैंक यू वेरी मच सर. मैं कछावा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सेशन चेयर और को चेयर को मोमेंटो देके. शी इज नॉट हियर. राजेंद्र राठौड़ साहब उनको. बोड़ा जी. बोड़ा साहब. थैंक यू वेरी मच सर. बोड़ा साहब, देवड़ा साहब, महेश पुरोहित जी. Looking to the short of time, we are continuing the session. We are skipping the tea break. Those who are interested to take the tea, they can share it just outside the hall. We'll be commencing with the fourth technical session now. I invite the esteemed chairperson, J.C. Jawar sir, and Asif Ansari sir, ME DMG, along with Ghanshyam sir, to be our co-chair for the session. Kindly grace the stage with your presence, sir. Vijay Shankar sir, kindly co-chair the session. Vijay Shankar sir. I would now request all the speakers for this session kindly be ready, starting with Kaan Singh Chaudhary sir. Sir will be delivering the keynote on digital twin in mine shaft sinking and shaft production operations. Good morning to all. Excuse me, just 1 minute, sir. Just one interruption. I would like to request each of the esteemed authors to please restrict your presentation within 12 minutes
Okay. so that we can have at least 2 minutes for discussions. Right. So please adhere to the timeline. Thank you, Sure, sir. sure. Hello, can I have mic? Thank you. Yeah, I'm presenting the paper on digital twin in basically shaft operation. If it is a new shaft in the sinking operation, and if it is a production shaft, then integrate it into a production activity of the shaft. This is only a small element of the total mine chain. So this can be further extended to the mine production area, beneficiation plant, power system. All these elements can also be covered through the digital twins. Basically, digital twin is a process of in the real-time operation of the shaft system through creation of digital twins or replica. Basically, whatever is the shaft operation physically installed system, an exact replica of the system is created through the software, where the data is actually generated through the sensors, cameras, videos, and instrumentation, so that all these data are carried to a control room where the digital twins is monitored by a professional, experienced person, and the software actually integrate all the elements and interconnected to all smaller elements, so that if there is any deviation, then the concern or the issues are brought out, and there has to be a corrective action by the controlling person. So these are all I have already explained. These are actually the digital twins are being developed by some expert software developing, basically which are for the mining application. Some of these companies are like Siemens, DRA for the shaft operation, Vale, South African also for that type of, and there are so many other actually companies which can develop this kind of digital tools. Now, this is a sinking process of the shaft, where you can see actually, like say, on the right side, there is a drill jumbo. It's a 8 boom or 6 boom jumbo. Then there is a shaft sinking stage which travels as you go deeper and deeper for the process of sinking. Down below, you can see how a big station is created and the muck, blasted muck is removed through a bucket or cable, and then this is how the bottom drilling is carried out. Now on my left side, this is a conceptual shaft sinking or the shaft process, which is basically, I will explain through the other. So now in the sinking process, this system can be used for shaft planning and designing, real-time monitoring and control of the operation of the shaft, which actually provide opportunity for improvement of the safety and risk management. For the mining activity, shaft sinking is the most difficult and highly risky operation. So this has to be performed by a highly skilled, experienced company or a team, so that they can achieve zero-based accident or execute the total shaft process of sinking, installation, commissioning, and later on putting it to the operation activity. Now this is a typical sinking system. On the left side there is 2 winders and then the surface
the headgear, and then the bottom there is a sinking stage, which is basically moving up and down, and the loading cable or the bucket passes through this stage, so that as the depth increases, the stage is lowered, and from the stage also the shaft lining is carried out. This is one way of doing. There are so many other ways of doing the sinking operations. And this is only creating a small initial plug or initial actually collar for the shaft, which ultimately will take the headgear foundation and has to maintain the verticality of the headgear within a tolerance limit. So the total dynamics of the load and the headgear has to be actually protected through the design of the shaft collar. Now this is a typical headgear in operation, and basically there are so many elements which are to be monitored through installing the sensors, cameras, and other instrumentation for the safety of the operation. Like in the headgear, there are sieves for the winders, the ropes, and the safety system for overwind, then the dumping system for the skip. Similarly, for the case side, man material movement also is part of the similar operation. And as it is for the headgear, similar will be below the surface for the shaft system. And this is how actually the monitoring information is actually captured in a control room, which basically is exact replica of the total system, and the system is designed through integrating interrelationship between the small element of the system, and the science actually gives the information if there is any concern which has to be corrected. And this is for basically I have already explained. The basically manual sinking process depend on so much interactions and the concern which is coming to the focus of the supervising manpower. While if you try to create a digital twin, then basically the information come at the earliest point of concern, which ultimately correction leads to the safety of the total system. This improves the efficiency, utilization, and safety of the person, which is the most concern here, and it also avoids unscheduled breakdown or stoppage of the operation. These are the benefit. Digital twin actually optimize the performance, inform the decision-making process through real-time data generation and the concern which comes through that, so that in the minimum time you can correct the system to achieve the efficiency and the productivity. Shaft is basically highly economical operation for a mine. Even a small stoppage of the shaft completely lead to stoppage of the production, and ultimately the mine economics is affected through stoppage. So you have to actually optimize the shaft operation through the current technology using the AI and all sort of these things. These are actually basically the same thing. Now this is a typical shaft which can be at any mine. The orange is a main shaft, which is a production cum service shaft, which for the cage and manpower. And there is a ventilation shaft on the other side. Now shaft will have a different levels like blue color, and then there is a green color which is the line of overflow, and then there is a bin for storage of the shaft. Then there is a crusher, then down below again a crushed ore bin, and below that there is a conveyor,
and from the conveyor it comes to the skip loading pocket, and then the material is hoisted to the surface. Now, as you have seen the headgear, where instrumentation has to be installed on the key elements which can come under some stress or which can actually malfunction and leading to the problem or stoppage of the shaft. Similarly, instrumentation has to be through the sensor or instruments like volumetric measurement. Sir, last 2 minutes, please. Okay, sure. I'm almost end of this. So this total activity has to be actually put with the sensors and wherever instrumentation is required, so that all the information from here, it flows to the control room, and in the control room, one monitored through an experienced person, and even in the digital twin, all the maintenance schedule is also created so that timely action for each activity has to be taken, and the operation has to be optimized through this kind of technology. Now, these are actually some of the strength, opportunity, weakness, and threat. Most of the weakness in the system is that it demands a lot of investment. This is one requirement. It needs a highly experienced professional to manage the system and try to communicate to the right concerned supervising or engineer to basically correct in the least possible time. So that is actually now a big weakness of the system. Rest all these things are okay, technologically driven. So digital twin technology can be used in a, basically this is applicable for highly productive shaft where a lot of investment has been carried out through a highly valuable mineral or metal, and which only can afford this kind of technology because it's a cost. So the cost has to be actually incurred to derive the benefit for a highly productive or operationalized mine. Thank you. Thank you, Chaudhary sir. Thank you very much for an excellent presentation on the implementation of digital twins for shaft sinking operations. Of course, it's a very capital intensive operation, and so certainly how AI is essentially not AI but implementation of advanced digital technologies, be it in any form. So he has efficiently presented how the use of AI or digital technology based systems can help preventing and can help improving the overall productivity and efficiency of shaft sinking and other related operations. So I think it will go a long way in improving the overall success rate of shaft operations and associated activities in the mining operations also. I request the esteemed audience to have any questions from Mr. Chaudhary, please. Any question? Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So next I call upon Dr. I. Satyanarayan, please. Director Mine Safe DGMS Ajmer Region IoT in Mining. I think he is not there. So next I call upon Dr. J.K. Monroth, my esteemed friend, retired Chief Scientist of CSIR Simfer. He will be presenting his paper on suitability of solution mining techniques for an application of artificial intelligence for deep-seated potash deposit in northwestern Rajasthan. Since we are mostly importing potash, though we have enough resources of potash in our very state of Rajasthan. So I think he will be dwelling well on this subject. Dr. Monroth, please. Good afternoon, everybody. The topic of this paper is suitability of solution mining and application of AI for deep-seated potash deposited in Rajasthan. You all aware that Rajasthan is full of mineral. The artificial intelligence is increasing, become
a cornerstone technology across various industries, driving efficiency, optimizing production process, and enhancing decision-making capabilities. The upcoming potash deposits are allocated by e-auctions to HZL and Oil India Limited in Rajasthan. That is a very recent development, and we will see very soon potash mine production in Rajasthan. Potash is an important fertilizer mineral essential for the growth of plant and yield and nutrition values of crops. Other uses in glass, explosive and chemicals. The Indian consumption of potassic fertilizer was 2.53 million ton during 2021 and 22 as per Indian Mineral Yearbook latest of 23. The entire requirement of potash in India is met by import. Since there is no production so far in India, we are importing totally the potash, and that is a fertilizer mineral. GSI has identified the deep-seated vast potash deposit in northwest Rajasthan and have done the exploration during the year 1974 to 82. And they have done about 70 boreholes consisting of total 60 kilometer depth. But they have could not declare the feasibility of the potash in Rajasthan. So, but I have referred a lot of literatures about 25 years before in GSI library at Jaipur, and find out that they have done some mistake in estimating the grade. So I have pointed out since the year 2000 and published 4 or 5 papers and approached to the ministry also that we should again explore this area, which is having a vast reserve in Rajasthan. So that is the idea of that. So this large deposit encourages for the very big investment in Rajasthan. So this is the map of the Rajasthan, which consists of halite deposits from Bikaner to Hanumangarh district, and it is given in this map that is in the northwest Rajasthan. The mineral is called as sylvite KCl, and it is a mix of KCl and sodium. The sodium chloride is known as the halite deposits, and it is deposited in 7 cycles, H1 to H7. The first deposit is called H1, means the lowest, bottommost deposit is H1, and gradually it is coming up to S7 cycle, and all the maximum mineralization was found in S2 halite cycle. Halite means sodium chloride. It is basically found in NaCl deposits mixed with KCl. So I have analyzed this data and worked out that this is the details of the boreholes done by the GSI about 40 years before. So this it is found from the 300 meter to up to 900 meter depth, and it appears that it is a very big depth. But when we compare with the Canadian mines, it is at a shorter depth. In Canada, it is at a depth of more than 1,000 meter. So we are, if we consider this Kalu area, that is only 300 meter, means 1/3 of the Canadian deposit. But still we are not mining, and I have highlighted very much that we should start with the Kalu deposit of Bikaner, but they have given the auctions for Hanumangarh area, which is consisting less percentage of the potash. But let us hope for the best. The potash have some different terminology, potash mining. The element is called K, and it is a potash. What we call it is potash K. And this ore is called sylvite, KCl. And it is a product is also called as KCl, means muriate of potash. And the unit of measurement is K2O, potassium oxide. And we can find out the K2O by multiplying
0.61 into KCl to find out the tonnage of the K2O. So it's a commercial unit of international trade. We purchase in terms of K2 potassium oxide. The Indian potash resources in Rajasthan is 23,000 million ton, out of which are 18,000 million tons are of indicated resources. So it's a very big deposit. So I have suggested that we should go for exploration with gamma ray props because it can determine the grade in situ. The GSI has done the mistake that they have done the coring of the, and its mineral is water soluble. If we do the coring, that we get the very less grade, and they have declared that it is not feasible. So by this gamma ray probe, we can find out the in situ grade. Certainly the in situ grade of soluble minerals shall be the very high. So when we compare the total reserve, means indicated reserve, the world reserve is 3,600 million ton. And when we compare it with the available resources of Rajasthan, that is in Rajasthan only, it's a 20,000 million ton. So it is 5 times more than the total world reserve. Reserve is known as a proven reserve, and the Rajasthan resource is a indicated resource. So we are comparing with the indicated resources with the proven reserve. So we have to work the detailed exploration here. So after detailed exploration, we can compare these figures. But for the approximation, it is still a 5 times of the world reserve, but we are importing 100%. So mostly we are importing from Canada, Belarus, Russia, USA. These are, and the world production is 44 million ton in 2020, and it is around 44 million tons every year. So in compared to the world requirement, the reserve is very high, means for the next 2 centuries, 3 centuries, we can provide the potash from Rajasthan. So these are the figures of the potash production, import of the potash by India. So in latest is 2.56 million ton import, that is costing about 12,000 crores annually, means almost 1,000 crore per month we are importing. So if we can produce in Rajasthan, that means around 1,000 crore we can save foreign exchange. And if we can increase the production, the same amount we can export also. Means our position can be. So internationally, the mining is done in Canada is by potash borer. So these are the continuous miners, potash borer. So after mining with the potash borer, we need to processing it, just like crushing, sizing, and segregation, and different processes, metallurgical process. But if we go by solution mining technique in Rajasthan, so that it consists of only the network of holes, boreholes. So we can inject the brine solution inside, hot brine, and that will dissolve, and we can again pump out and to dry it on the surface ponds. So here it is more advantageous that in Rajasthan, Western Rajasthan, the temperature is very high. So we are not requiring any energy to save it. So it can naturally dry at the surface ponds. Okay. So the advantage of solution mining is the reduced development cost, because it needs only a network of boreholes. The investment costs are very low, as we do not need any mine to go. It's a very neat and clean process. There is no surface disturbance. It's a eco-friendly mining technology, and we can expand the mine as we need or as per the deposits.
So there is no underground working, means it's a totally safe for any workers, and it's a deep and irregular deposit can also be mined wherever we want. So it's only require the network of the boreholes, but we have to find out the deposit pattern. So where AI can help in this. So AI can help in the geological modeling and process technology. So we can develop the machine learning algorithm to analyze the geological data to predict the distribution of the potash deposit. So that will help in us to decide the locations of the boreholes. That is most important in the solution mining. So it can give help in the 3D modeling. The AI again is can help in the mining operations. AI system can process real-time data from sensors installing on the equipments, and with the feedback of the sensor, we can decide the mining operations and to optimize our production process. Similarly, if we are doing with boring machines, then we need ore processing also. Or in case of solution mining, that ore processing is eliminated. So, but we can decide from which borehole we need more production, or which is giving more quality or grade of the potash. That can be decided by the AI technology. Okay, so it is also helpful in the supply chain management. That is most required because it's a global nature of operation that fluctuates as per the international demand and the supply methods. So in the AI is also helpful in R&D product formulation, because we can vary the chemical grade composition as per the requirement of the fertilizer. Means as per the requirement of the different soils, we can tailor the fertilizer grade also. So accordingly, we can find out from the different locations. So it was the efforts of the since last 20 years. We have done a lot of meetings with the ministry and to suggested. We have signed also a MOU with the company, but unfortunately the mine lease was not granted because of some policies, and we have done a lot of meetings with NITI Aayog, and then it is included in the critical mineral list. And now in year 2025, means this month only, the 2 mines are processed. Dr. Monod, please finish. So in view of this, we can go for a potash mining in Rajasthan to enhance the production and to introduce one new mineral in India. So with the added advantage of AI. Thank you. Thank you, Dr. Monod, for an excellent presentation. कैसे जैसा कि Dr. Monod बताया, potash we have extensive reserve potash deposits very well in our home state of Rajasthan, which is more than 5 times the total reserves of US even. Yeah. And we can export potash, not only meeting our own demands, but we can export also in future. And how can roughly 12,000 crores can be saved in the imports and the foreign currency per year. So आपने अच्छे से बताया कि कैसे solution mining use करके हम लोग बिना environment को disturb किए हुए कैसे हम इसको exploit extract कर सकते हैं हम लोग, and how AI can be implemented, introduced in the various stages of during right from exploration to extraction, and without disturbing the environment, and and for improving the efficiency and productivity of overall potash mining operations. So thank you, Dr. Monod. Okay. Any question from the esteemed audience, please? Yeah, sure. Yes, Silvite. Is there any deposit in the world where KCl and NaCl solution mining is operating? I think most of the solution mining are of the sulfate, either calcium sulfate or sodium sulfate. No, with KCl in Saskatchewan, Canada, they have now introduced the solution mining. Earlier they were doing with potash borer. That is the main constraint. I think it would not But we have added advantage that here in Western Rajasthan the temperature is very high, so
not require any additional energy to dry the solution or in the surface ponds. But in Canada, the temperature is low, so they need extra energy to dry the solutions to make the fertilizer. So it's here in Rajasthan, it's naturally economical. Yes. Is it possible that all the halides are soluble in water? Is it possible? Or because in Canada it is mainly sylvite and sylvinite? Yes. We can vary the content of the brine solution. According to the brine solution which we are injecting, we can decide which mineral we need, because each mineral have different solubility. So we can vary the injection temperature, means which solution we are injecting, we can vary the temperature also and its brine content also. So it is not simply we are injecting the water. We are mixing some brine, means we can change the density of the water. Accordingly, the different minerals will be dissolved, and after extraction of that, we can use that cavity formed in underground for storage of crude oil and other chemical waste, storage of the waste of different chemicals which are hazardous for storing on the surface. So this is a second advantage for solution mining. So recently we created in Visakhapatnam oil storage also in underground by creating cavity. But world over, the salt domes are used for oil storage. So in Western Rajasthan, we can also store the crude oil. Yes. No, now there is no shortage of water, and it's no water will be wasted because it's a cyclic process, circulation in the circulation. So it is very near to the canal sites in Suratgarh area. There is already thermal power station is there, so there is no shortage of power and light, water also. Yeah? Full है? सर, Yes. ये जैसे यहाँ पर 550 से 600 मीटर की डेप्थ है और फ्रेजाइल और है, इस तरह की वर्ल्ड में कहीं और सिमिलरली सिचुएटेड और पोजीशन है? All global deposits of potash are similar. That's why I suggested that why we are not doing in Rajasthan. After having such a indicated resources of 20,000 million tons, and requirement is only 40 million tons per year. Globally, deposits of all minerals are same. If you compare copper, gold, almost similar. Limestone. Formation is the same. Age of the deposit is the same globally. सर, इसमें एक मेरा सजेशन है कि पानी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नहर का पानी तो ड्रिंकिंग के लिए भी अब कम पड़ रहा है. No, that will not require. ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. That is a closed cycle process. Means again the water will be dumped, the same brine solution. But main ये तो secondary issue, the main issue है कि how can we extract potash? Yes, that is more important. Without going underground, there is safety. Only water is required. Exploration will require means for deciding the borehole locations, and the depth is decided because we have to go in S2 cycle only. Potash is maximum available in S2 cycle. There is 7 cycles of sylvites. So second most lowest, that is only required. That is known. So again, there are latest equipments are there. So that is not a problem. So nowadays all exploration equipments are available, latest are available. Seismic we can go, electromagnetic can be done. This gamma ray is very convenient. Just borehole it inside. Immediate readings we can get on the screen. Thank you. Thanks a lot. Dr. Mohammed for an excellent presentation, and certainly thank you all the audience, esteemed audience, for making so interactive. Of course, we can discuss more in lunch period also with Dr. Mohammed personally, and of course, it has a promise. It's a promising thing, and I think the government should take proactive steps to implement the, to do something for the extraction of potash from the deposit We of already Rajasthan. started Thank from you. this month. Yeah. ZL and Oil India is Yeah, they have got allocated the leases. deposit, They have but license, how yeah. they proceed, that will future will tell us. So thank you, Dr. Mono. Thank you. Thank you. Thank you Okay. very much. Yeah. Thank you. Let's have a big round of applause for that. So the next paper
is authored by Dr. P.K. Rajmani sir and Mr. Mahim Kachwaha. Dr. P.K. Rajmani was director, ex-senior VP at Hindustan Zinc, current director of Rajmani Mingear Consultants. He will speak on applications of AI in metal mining, the DNA of modern sustainable mining, a critical scroll. Dr. Rajmani is very well known in the Indian mining industry, so I think he doesn't need any introduction further from my end. He's very much senior to me. So it's a double pleasure. Dr. Rajmani, please. Yeah, please. Yes, good morning to everyone. I feel highly privileged to share our experiences of using AI in metal mining. The paper is co-authored by also Mr. Mahim Kachwa, but on his behalf, looking to the limitation of the time, I will be going through. So, just to start, just to have a basic of the mining, because I think that it's a mixture of mining and AI guys. So, accordingly, we have made this presentation. As you know that mining is rough and tough and hazardous profession. And there are some basic elements of mining: drilling, blasting, mucking, and hauling, which is common to every sort of mining, whether open pit or underground, metal, coal, everything. And I want to emphasize on the role of AI, where the AI can be applied. What are the promises? What are the challenges? So, in general, AI can sense the mine environment, because that's quite hazardous to work with, especially those metal mines which are working at depth. Say, if you look at the Vedanta, most of the mines are working at a depth of 800 meters. So, geothermal gradient means the temperature is quite high, around 40, 45, humidity very high, strata condition very poor. So, all sort of challenges working against nature are present over there. And there, what we find that AI is of immense use. So, going quickly through the process of mining, there are certain key drivers in the mining, because directly the AI cannot be implemented in mining. So, we need to actually use the smart machines and then digitalization. So, they are the basics to adopt for AI. And one of the steps in applying AI is the digitalization, which Professor Bhandari sir has been emphasizing for a long time. And I think we are lucky that some mines in India are going for digitalization. Digitalization means simple that most of the rocks operations are computerized, so that we can get the feedback, or we can give the input to the mining. Then, as we learned from the yesterday's session regarding AI, and what, as a mining engineer, have understood the AI. AI is basically supervised learning. As Mr. Kocher was saying yesterday, that we are training a child with that. This is cat, 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 cat. This is dog, 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 dog. And if you show the child something, a cat or similar, then he can predict it is a cat or dog, but not that 80% cat and 20% dog. So AI is always, or AI will have power, but HI means human intelligence will always have the dominance on AI. Now, going to the prime step of mining, that is mine development. It's basically, I am talking about those oases where the
I mean, advanced mine development is going on. Most of the mines are using now jumbos, then automatic explosive charging, then raise boring, all that. So the current status in India is that the drill pattern on the face is being given with the laser. Instead of going to the face and then surveyor putting the hole marking or blaster using his IQ. So laser is used increasingly to give the hole marks. Then boomer machines are programmed to drill at the design drill face, and mechanized explosive charging is going on. That's the current status in most advanced mines in India. But apart from that, there is a scope for AI, which I want to emphasize because I'm a practicing engineer. Yeah, I can understand where there is a potential to use AI, and one of them is rock characterization, because you know rock characterization or quantifying rock is very, very difficult. We can say soft, medium hard, or strong, or like that, RQD so and so. But as of now, I'm also a geotech engineer, so as of now, geotech community can characterize the rock by rock mass rating, which I think most of you must have heard, geology, or RQD or Q, but still, I mean, it is not enough to fully characterize or digitalize the rock. So there is a scope for rock characterization. Then there is also a scope for monitoring the performance of penetration, just to know that, or just to supplement the rock characterization by reading the penetration rate, so that we can make out that rock is hard or fractured or passing through shear zone or fault, like that. And then based on this data, we can design the drill pattern, spacing, burden of the holes, then charging length, all that. But still I have marked there HI. HI means still human intelligence preponderates over AI. Human intelligence has to be used, else we will get the result that 80% cat, 20% dog. I would like to take it through the underground. This is the mechanized drilling machine, what is going on in some of the mines in India. Hole marking is given, then the jumbos are drilling the holes. And you can very well know that the atmosphere is quite hazardous. These hole marks are given with the scanner, laser scanners, and the drilling is going on. Now coming to the next step, that is after drilling, blasting, next step is mine production. And as of now, most of the mucking operation are going manually, but as we know that mucking is carried out in the freshly blasted development heading. So there is obnoxious gases are there. Strata is freshly exposed after blasting, so it's quite, hazardous. And then the rock condition just after the blast, what will happen, difficult to predict. So there is a high scope to use AI, which can sense the mine atmosphere. Then it can understand is the scaling required or not, rock bolting required or not, what should be the spacing. So there the AI is there, of course, and there is a scope to use the teleoperation of the LSDs or the loaders. Of course, AI is the next step, but as of now, the operator can sit in the comfortable area and through the camera or through visually, he can operate the loading equipment, LSD or LPDT. So I think HI and AI can work in combination very nicely to do the mucking in the hazardous ambience. Gases, then freshly exposed roof and all that. So
just going through the remote mucking of a stove. वीडियो ये चलना चाहिए ना साथ में ये so this is a tele-operated LSD or loading machine going into a stove. The operator is sitting at the comfortable distance through the monitor or through visually he can make out where to put the bucket, how much to dig, is there any boulder or is there any rail girder has come, so where to stop, how to come back. So here there is a, this is being at Rampura Gucha, SK mine, so what we are using. Yeah, so next operation is of course the domain of Professor Bhandari, scanning of the drill holes, gyroscope or boreal cameras, marking are they deviated or not, blasting them, and these are the, on the right hand side are the cavity monitoring survey result, means the stove was designed to blast it as per green boundary, but blue is the actual blasted part, so we can make out what is, 2 minutes, sure, okay. So, here, here there is a scope to use the AI. We'll be going quickly. This is mechanized rock bolting and support. These are the use of the AI in the rock mechanics where the loose is falling and all that. And this is the monitoring of microseismic activities going in the mines. And at the end, since we have gone through the so many cultural event and all that, and since you know that we are mining engineer, we don't understand the strength of AI. Same is the case with the AI also. AI also doesn't know the mining. So there is a Hindi song, न नजरों को दिखाई देता, न नजरों से बात होती है, न जुबां को दिखाई देता है. So we will be coming to that stage, and I will be playing this song. भैया वॉल्यूम स्टार्ट करो ना यार. It is for AI by a mining engineer. Mining cannot see AI and AI cannot understand AI. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Rajmani, sir. Thank you, Dr. Rajmani, sir, for an outstanding presentation. Of course, he has worked extensively around metal mining sector, being a Hindustan Zinc Limited. जैसे हम सभी जानते हैं कि underground mining is the need of the hour, especially in coal mining also, because since we're depleting open cast shallow reserves. So ultimately, there is a future is secured for underground mining only, especially for coal mining. Of course, metal mining also, as you can see, we had Rampura Agucha mine, the biggest mine in Asia. Now it is exhausted, and we are going underground in Rampura Agucha itself. SK miners से जैसा आपने बताया कितना अच्छे ढंग से कैसे underground metal mining जो है for lead, zinc and silver, they're implementing the latest technologies. It's not AI. The seminar is all about AI and digital technologies basically. तो इसको AI बोले थोड़ा कृत्रिम इंटेलिजेंस हो गया. ये AI नहीं बोले, मैं तो शुरू से AI समझ में आ रहा है कि AI एक्चुअली क्यों रखा है इसका नाम. मतलब नकली इंटेलिजेंस नहीं, ये derived intelligence, ये DI basically. Derived from the human intelligence. And it can never replace human intelligence. So Bill Gates कुछ दिनों पहले कहा भी था, there are 3 sectors which will require human intelligence for times to come. Healthcare, areas where human expertise is essential. Mining is one of those sectors. And one, education. So हम ये नहीं भूलें कि AI can replace everything. Human intelligence, human से ही intelligence ही बना है basically. So it's always a subset of human intelligence. So it's a derived, I should say it's a derived intelligence. In all aspects of its operations, कैसे this so-called intelligence
developed by human intelligence, has helped underground metal mining to reach newer heights, SK producing great productions, Rampura very huge productions, and we can see a few days before I saw the CMD of Hindustan Copper Limited was talking our video call from the depth of Bananpur copper mines. How it is possible? We can never imagine this thing. Huge trucks are going right on the deep underground mines. It's only possible because of the advancement technology. कैसे नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल है बकाबूचा में, जहाँ बात करते हैं, जहाँ मीटिंग्स होती है, क्रिटिकल डिस्कशंस होते हैं. So all possible because of the open-mindedness toward introduction of latest technologies. So I think the day is not far off when our whole team is sitting on the surface and mine will run by the whole advanced equipment, advanced technologies safely and with very huge height of productivity and safety. So let us dream for those days, and I really appreciate the great work organizers, Bhandari sir, Jaiswal sir, and the whole team for considering such a good topic for this conference. AI prospective challenges. So large, huge road is ahead, sir. So thank you very much, sir. Once again, Dr. Rajmani sir, for an excellent presentation on excellent topic. Thank you very much, sir. And next, I call upon Mr. S.L. Borana and Dr. S.K. Yadav. Is he there? Mr. Borana. Dr. S.L. Borana. He's from DRDO Rajasthan. AI-enabled, you speaking on AI-enabled remote sensing and GIS for sandstone mining, monitoring in Jodhpur. Dr. Borana, please. Yes, sir. Thank you. Hi. First slide. Namaskar, sir. My topic for the presentation is AI-enabled remote sensing and GIS for sandstone mining monitoring in Jodhpur areas. The outline of the presentation is first the introduction of the study area, then the detail about the study area, objectives, data use and methodology, result and discussion, then finally conclusion of the study. In this study, we use remote sensing techniques using Landsat satellite data, GIS tool, and we also use AI and machine learning models to monitor the mining area of the Jodhpur city. In this, we also use the NDVI model and band ratio techniques using image processing. The objective of this study is, first objective is to monitor land use, land cover changes and estimating mining area expansion using remote sensing and image processing. Second, we prepare NDVI maps of the area and find the vegetation health of the mining area nearby locations. We also identify mining dumps, highlight ecological stresses and use GIS tool to evaluate vegetation changes and dump expansion in the study area. We use AI/ML algorithm for supervised classification and chain detection study. This slide shows the study area of the Jodhpur city. We use mining of the Fidusar and nearby area. You can see this is the pointer here. Pointer है क्या? Pointer नहीं है. This is the satellite image, and this is the base map of the study area. We use GIS for vectorization of mining area, water body, road lines, etc. In GIS, we has actually three main features: point, line, and polygon. Point means we specify a location, and we can represent the location name by using
point feature. And linear features such as road network can be represented by line features. And in demarcation of mining area, we use polygon features. In this study, we use various satellite images. We first download the satellite image Landsat data from USGS website and georeference the image and create a true and false color composite of the image. This true and false color composite image will help in interpretation and image classifications. We also use SOI map for preparation of base map and software such as ArcGIS, ENVI, and Google Earth Engine for geospatial analysis. In ArcGIS, we generally use vectorization of a mining area. And it has main three components: ArcMap, ArcCatalog, and ArcToolbox. ArcToolbox has about 1,000 of tools. We can analyze raster and vector image processing, and we can also query analysis using ArcGIS software. In ENVI, we use band ratio combinations. ENVI is also a popular image processing software. And for advanced data, we use Google Earth Engine. It is a Python script-based geospatial software. It is for NDVI, we use Google Earth Engine. This is the complete methodology of our study. First, we identify the mining area using satellite image and field visits. Then we demarcate the mining area using satellite and image processing techniques, for which we use LULC analysis for the 3 years, 2000, 2010, and 2025. NDVI were also generated using temporal data, band ratio combinations, and we also estimate the mining area expansion by pixel changes, by calculation of pixel changes in the image. You can see here, these are the two set of satellite images, Landsat 2000 and 2025. We can see that there is huge changes in the mining area. In 2025, the white shade near the mining area, we can identify or changes easily seen in the satellite image that the mining area has expansion in 2025. This means there are intensity of the mining activity over the time is increases. Then we demarcate the mining area, mining cluster using GIS software. We vectorize all the mining area in GIS software. This will help in our AI model as a training data set. Now come to the training data set using AI machine learning. We have created thousands of images and each image we classify about 4 to 5 classes such as water body, mining area, urban, and vegetation. And we give our AI model to train the image, to train the model. Then we classify the set of satellite images. We can see here the mining area in the 2025 is increases, as you can see, and the accuracy of the classification is 91% approximately. This means our AI model is working very nice, very accurate.
These are the LULC change analysis. This is the change statistics of the 5 classes: mining area, water body, vegetation, build-up, and remaining area we mark as other area. In this graph, you can see that the build-up area is increases about 2.13% in 25 years of span. Mining area approximately 1.11%, that is indicating mining expansion. Water body is very minimal, and vegetation is also very minimum loss. But there is a other area like open land, barren land decreases, because the other area is shifted into the build-up area and mining area. We also use band ratio techniques for enhancement of LULC feature and discriminations. In this we use, there are about 8 bands in Landsat satellite images. We use band ratio. In first image we use blue band by green band. Then we create a image. Similarly, we use green by red, red by NIR. In this way we create a set of band ratio images. It is also used for AI model for training purpose. Then we combine these images. Means first image is as a band, second image is other band, and third image is also other band. Then we combine a multispectral image. You can see here, this is the result of the band ratio combination image. In this, we can clearly mark the mining area, water body, vegetation, and built-up areas. 2 minutes, please. Okay. Please, please. In this topic, we also granted a patent on system and method for mapping and classifying terrains in 2024. Next is the NDVI analysis. It is also a method of image processing in which we can find out the vegetation health of the area. The NDVI is calculated using the band ratio, band 4 minus band 3 upon band 4 plus band 3. Band 4 means NIR band, near IR band, and band 3 is the red band. By using this combination, we can create NDVI image of the satellite data. These are the NDVI value interpretation. You can see here. Less than 0.0 means it indicates water, soil, mining dumps. This is the output images of the NDVI process. You can see here in the graph that mean value of NDVI in 2000 to 2025 is decreasing, blue line. And NDVI value is less than 0.1 coverage the percentage area in pink pink color, and green color is NDVI value is 0.4. We can see here that an increase in low NDVI value means indicate vegetation losses, whereas a decrease in high value area indicating reduced health vegetation of the area. तो टाइम लगेगा सर, नहीं तो फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर वो बोला मतलब इतनी मेहनत की है और 2 मिनट भी नहीं दे रहे हो आप, तो फिर मतलब नहीं है सर. तो फिर कोई नहीं सर. ओके सर, ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छी लूसिडली बताया, एक्सीलेंटली बताया आपने. आपने जो एंड में जो रिजल्ट है वो तो बोलने ही नहीं दिया आपने. हाँ प्लीज प्लीज, अरे नहीं प्लीज प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए. अरे सर मैं पिछले 15 दिन से मेहनत कर रहा हूँ सर इस पर, और आप कह रहे हो 2 मिनट. सर वो ठीक है सर, लेकिन पीछे हम चले गए तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी? वो आपकी बात सही है सर, लेकिन मैंने देखा है कि आप जो सीनियर है या आपके एमआई मेंबर्स है उनको आप ज़्यादा टाइम देते हो. नहीं सर,
है सर ये। सर मुझे कोई इनाम नहीं मिल रहा है यहाँ, मैंने जो काम किया है उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस ये है। हाँ हाँ स्टार्ट करना भाई। एक्चुअली सर ये लैंड यूज लैंड क्लासिफिकेशन का हमने एआई मॉडल बना दिया है ना। और आप क्या है, कोई भी इमेज डालोगे इसमें मॉडल में तो ऑटोमेटिक क्लासीफाई करके वो बता देगा ये माइनिंग एरिया आपका, ये बिल्डअप एरिया है, ये वाटर बॉडी है, वो है सर। और हम फ्यूचर में भी एक तो माइनिंग डंप को कैसे एआई से अपन उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वाटर लॉगिंग, उसको भी कैसे एआई से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसका है सर। ये है सर डंपिंग का है, एआई एनेबल रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फॉर डंप मॉनिटरिंग। इसके लिए हमें क्या है कि सैटेलाइट इमेज, हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा प्रोसेसिंग, इसमें हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज भी काम लेंगे। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज क्या होता है, नंबर ऑफ बैंड्स इसमें 200 से 300 बैंड्स होते हैं। हाँ चेन डिटेक्शन, नहीं मूवमेंट नहीं, मूवमेंट नहीं, जो टाइम पीरियड के हिसाब से जो चेंजेस हो रहा है, जैसे 2000 में कितना था, 2005 में कितना होगा, 2010 में कितना है, तो वो जो इमेज है माइनिंग के आप उसमें डालेंगे मॉडल में तो बता देगा कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कितना कैसे हुआ है, लैंड यूज पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। हाँ एआई इनेबल, यस सर। तो ये मेथोडोलॉजी है, इसके हिसाब से हमने फील्ड सर्वे किया माइनिंग का सर, और जहाँ जहाँ डंप एरिया है उन सबको डिमार्केट किया है ना। ये सारे आपको जो ग्रीन लाइन में दिख रहे हैं, ग्रीन पॉइंट, ये सारे डंपिंग साइट्स है। हमने पर्टिकुलर माइनिंग एरिया में जाके हर एक का जीपीएस वैल्यू ली है, उस जीपीएस वैल्यू को यहाँ मैप के ऊपर ओवरले किया है, और कितना उसका अप्रोक्सीमेट डंप एरिया है वो भी मॉनिटर किया है। ये हमने फील्ड फोटो ली है सर माइनिंग एरिया की, कैसे आपका माइनिंग एरिया इफेक्ट करता है ड्रेनेज पैटर्न पर, और ये इतना बड़ा यूज डंप है, इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं। ये फील्ड फोटोग्राफ है। ये हम फ्यूचर में ये करना चाहते हैं सर कि एआई एमएल से आपका जो माइनिंग के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि वाटर लॉगिंग, जो बरसात आती है उस समय पूरा जो माइनिंग एरिया है वाटर से फिल हो जाता है, इसको कैसे अपन करें। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोजल यहाँ दिखाया आपको कि कैसे इसको अपन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सैटेलाइट इमेज, रेनफॉल रिकॉर्ड और जो लैंड मैप्स है आसपास के एरिया के। फिर अब हम स्मार्ट मैप यूज़ करेंगे। स्मार्ट मैप हेल्प करेगा अपन को कि जो भी हैवी रेनफॉल हो रही है, जोन हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, ड्रेनेज कैसे है वो सबका, उसका डीएम यूज़ करेंगे, डीएम डाटा यूज़ करके उसका ड्रेनेज पैटर्न निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। उसके बाद में वो सब डाटा हम एआई मॉडल को देंगे, और फिर एआई मॉडल ट्रेन होगा। उसके बाद में जो भी एक आपका रिस्क मैप है वो जनरेट होगा, और वो हमें हेल्प करेगा आगे इसको मॉनिटर करने के लिए कि कहाँ से वो वाटर का जो ड्रेनेज है कहाँ से आ रहा है, उसको ब्लॉक कर दें, उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। ये सब है सर। थैंक यू सर। हमने सर करीब लिए सैटेलाइट इमेज, तो उसका कहते हैं ऑगमेंटेशन किया सर। सैटेलाइट इमेज तो हमने करीब ली है 50 के आसपास। फिर हर एक सैटेलाइट के इमेज के अंदर, जैसे आपका बिल्डअप एरिया बहुत बड़ा है, तो हमने क्या किया, इमेज सेगमेंटेशन होता है, इमेज सेगमेंटेशन और इमेज लेबलिंग होती है। शॉर्ट में क्या किया, उसका एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया लेके उसको बोल दिया एक इमेज है, लेबल बोल दिया ये बिल्डअप है, ये बिल्डअप है। और गूगल अर्थ इंजन भी हमने यूज़ किया। गूगल अर्थ इंजन भी आपका बहुत वाइड मतलब रेंज में रिजोल्यूशन का सैटेलाइट इमेज देता है, वहाँ से भी हमने इमेज डाउनलोड करके जेपीजी फॉर्मेट में वो सब हमने अर्बन प्लानिंग के लिए बेसिकली कैसे लैंड यूज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू माइनिंग एक्सटेंट एक्टिविटीज। यस सर। उसमें एआई इनेबल्ड आपने जो है रिमोट सेंसिंग यूज किया है, जीआईएस यूज किया है, बहुत ही यूज हमारे सर सारे डाटा जो आप देख रहे हो ना तो चैट जीपीटी से ना किसी नेट से, हमने सबने डायरेक्ट मतलब सब डायरेक्ट किया सर। मतलब ऐसा नहीं है कि आज रात को बैठा अपन और चैट जीपीटी से पेपर बना दिया, वो नहीं है सर। आप देखो पेपर का मतलब स्टैंडर्ड देखो सर। लाइव कैसे देखो डिस्कशन तो हो रहा है असल में क्या ऐसा देखिए ये कॉन्फ्रेंस है वर्कशॉप में क्या होता है कि ईच स्पीकर इज
fully authorized, fully independent to take 1 hour, 2 hour, whatever it is like, because वो एक workshop हो जाता है, क्योंकि यहाँ number of papers ज़्यादा है, days खाली 2 ही है, so it's a collector responsibility to adhere to the time management so that we can have discussions also. So I request for the future speakers also to be very specific without getting into introduction background. Come please straight to your point, what you want to convey to the audience. So this is how we can save time, sir, because it's also a responsibility. Otherwise क्या होगा, कल हम लोग 2 सेशन पीछे चले गए थे. तो as a chairperson is a responsibility. So please it is not to take otherwise also, because हम जल्दी कर तो हम डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत. And ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है. It impacts everyone. ये जो अभी का नहीं सर, इसमें 4-5 साल लगते हैं सर, ये पूरा एनालिसिस करने में. Absolutely, sir. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपका एकदम. सर, आपका केस बहुत अच्छा है सर, and you have very excellently presented it, and I think it's of mass use also, and it is very much useful in urban planning. सर ये काम आए, माइनिंग जो फर्टिलिटी है उनके मतलब किसी तरह से काम आए. Absolutely, absolutely. नहीं, इसका तो बहुत यूज है सर. Thank you very much, sir. Any question from the audience, please? Thank you very much, sir. So, without wasting any time, I would call upon the next speaker, please, Mr. Gangaram Sawant and Ajit Ostwal. They're from Mine Planning, Ultratech Cement, Senior Manager. He would speak on AI-based resource optimization through dynamic scheduling. Okay. So, Mr. Gangaram will present on behalf of Ajit Ostwal also. Please start. Actually, sir, he's actually engaged in some engagement. Some emergency has come up. So, me and my colleague Nivedita has joined from Ultratech. Thank you very much for the organizing committee and MBM college faculties. And student council for giving me this opportunity to present my paper on AI-based resource allocation through dynamic scheduling. So basic mines digitalization, it's not a destination, but it's a wonderful journey that we have in Ultratech. We have designed our in-house application known as Mine Optima 360, which encompasses the overall cycle that you see onto the screen, including mine planning, drilling and blasting, grade control, equipment maintenance, mining operations, auto allocations, and dynamic allocation. So the center topic of this session will be on auto allocation and dynamic allocation, as we see probable opportunities to develop an AI ML model into this particular trade. So a basic set of hardware integrations that we have done into Mine Optima 360 is we have integrated all our loading and transport equipments. This we have covered for 6 mines of Ultratech so far. And we have IoT gateway devices fitted into our loading and transport equipments with dual SIM card approach. Due to uncertainties of internet connectivities at the site, we may lose data of some cellular network, but then automatically it will be auto switched to some other cellular networks. So basically, then we have M2M communication, the machine-to-machine interfaces, wherein excavator and dumpers that talk to each other. Whenever excavator is in the blind spot, so there is no connectivity. So whenever dumper approaches within 15 meters radius zone of the excavator, it will try to push the information of excavator to the dumper through Wi-Fi. And when dumper hauls onto the haul route and comes into the network zone, it will start pushing its data to the cloud, along with the excavator's data which he collected. Then we have CAN integration into the equipments. We have HMI tablets inside the operator screen, wherein for every trip completion at the crusher, the operators receive an assignment to next trip, which excavator do he need to get to allocated to. Then we have our voice communication systems for between the competent persons and the shift in charges inside the mines. All they communicate through voice communication system. And basic structure, we have a mobile application
wherein we capture all our daily drilling and blasting operations. We do the blast survey and also take out the samples and do for the quality sampling. Through this sampling survey is also conducted through the mobile application. So basic idea is, since we are into cement manufacturing, a quality material, the ROM that we feed to the crusher, the quality need to be more emphasized. And so we have a material inventory in setup in real time. How much material inventory do we have at our mines? How much is high grade, medium grade, low grade material, limestone which is available, at which pit, which bench, and what is the exact location of that blast. So the problem statement here is currently manual processes for planning and generation of ROM blend plans by the shift in charges, and then difficulty in aligning with the targeted quality and quantity requirements of the piles. Inefficient resource deployment, sometimes more dumpers are given to the excavator leading to the queue at the face, or less of dumpers wherein the excavator goes idle. So there is no dynamic allocation which is happening. It's very static. Whatever fleet that we assign to excavator, that goes on happening for the complete shift. So the objective here is to automate the overall process and to meet the crusher feed targets, and it should be dynamic, and which simulates and incorporates the benchline KPIs of HEMM into blend plan logic. Dynamic allocation of mining fleet in real-time operation, and optimizing the fleet movement to enhance the fuel efficiency, productivity, and utilization. Since fuel cost is the major cost of operations, through dynamic allocations, we try to optimize that. So two different approaches for this intelligent solution will be auto allocation system and dynamic allocation system. So auto allocation system basically during the shift start, wherein a blend plan needs to be created, how many equipments to be operated to meet the pile target requirements in a shift, and to those excavators, how many dumpers to be allocated, all suggested by the system automatically sharp at the shift start, which material, which blast ID to be operated by which excavator, and how many dumpers to be allocated to that excavator. What is going to be the overall KPIs, the key performance indicators of all the equipments at the shift start, what is going to be the productivity utilization of the fleet. So a blend plan is generated sharp at shift start, which reduces the planning time required for the shift in charge and the shift technical team, which helps in starting the operations immediately, which helps in accurate blend plan preparation, which will meet our quality requirements. And when any event triggers, for example, the excavator or dumper got breakdown, which equipment to replace it is automatically suggested by the system. There is a quality deviation that the pile requirement was of 95 LSF and we have a standard deviation more than the threshold, then automatically a new blend plan or the replacement of the blast will be suggested by the system. Whenever there is a pile is completed and new pile is linked, a new blend plan will be given by the system automatically within seconds. The key components for data model to design auto allocation is basically we need what is the requirement of the pile for that shift, and how many equipments, excavators and dumpers are okay for operation which are not breakdown. So basis to that, what is the location of every equipment? Excavator, what is the exact location, in which pit, which bench does it lies, which zone it is lying. So basis to the location of excavators, see the overall idea is we need to reduce the marching of the excavators being a crawler mounted machine. So the nearest blast, if it can meet my quality, then that is taken into consideration. 5 different blasts to be operated. System automatically creates a blend plan and tells you which excavator to be allocated to which blast and what is going to be the material which you are going to cap through that blast. Input parameters, we already have in place a detailed material inventory of the material available at different benches. What are the equipment specifications, make, model, capacity of excavators and dumpers?
how much, we already have a database of excavator dumper loading time. How much time does it takes for one capacity of excavator to load this capacity of dumper, so that overall database bridges to the historical data of 1 week duration is in place, wherein it is automatically taken how much time will the excavator of this make model will take to fill this dumper. And the cycle times. Cycle times basically what was the operation or what was the cycle time from a particular bench or a particular zone to that particular crusher. So that is also stored in a database maintaining 7 days previous historical data for blend plan creation. And if we have any other constraints, that can also be fed to the data model. So it is basically this model needs to be trained, and the overall synthesis is that it can be trained into AI and ML, wherein the system will automatically evolve itself, looking into how many changes were made after, by the shift in charges after this plan was given by the system. So if all the targets are met, then it is a success. And if the targets the system cannot meet due to unavailability of that kind of a grade of material, then it is a failure, which is suggested by the system. So the process flow is basically, first we need to get the targets requirements of the pile. The second one is we need to know the location of the fleet equipments. Please conclude, last 2 minutes. Yeah. And we need the material inventory which is in place. What is the loading time matrix of excavator vis-a-vis dumper? What is the cycle time source destination matrix? And finally, we get a blend plan which can be modified by the user. And now it is dynamic allocation. After the blend plan is prepared and the operations are started, then dumper fleets to be dynamically allocated to excavators to reduce the idling of excavators or to reduce the queuing at phase. So whenever any dumper, it enters a crusher geofence location, HMI screen into the equipment of the dumper, operator issues a new assignment that you need to go to this particular excavator, which is lying in this pit and this bench. For every trip, he receives an allocation and he needs to adhere to that. So that is how we reduce the idling of excavator. This is basically the overall synopsis of what do we achieve through auto allocation and dynamic allocations. What can be the operational impacts and strategic initiatives which can be taken through this AI and through auto allocation and dynamic allocations. Thank you. Thank you, Mr. Sawant. Thank you very much for an excellent presentation. मैं ये डायनामिक शेड्यूलिंग बहुत पुरानी चीज़ है ओपनकास्ट माइंड्स में, लेकिन आपने जो AI ड्रिवन AI enabled डायनामिक शेड्यूलिंग किया है, इट इज़ रियली वेरी वंडरफुल. एंड मैं कि अल्ट्राटेक में सभी माइंड्स में ये हो रहा है या यू आर जस्ट स्पीकिंग ऑफ वन ऑफ द few माइंड्स ओनली? It is not, as of now, it is not AI enabled, sir. It is logic oriented. So it has a potential to go into AI ML base, which we are working out upon. Of course. Yeah. AI में लॉजिक ही यूज होगा वैसे. Yes. तो यस पोटेंशियल है. तो मेरे कहने का मतलब ये कि अभी जैसा जो इंटरेस्ट आ रहा है जो जनरेट, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मंडारी सर से और AMA स्पेस फ्रॉम AMA जोधपुर एज ए होल से कि कैन वी नॉट हैव a 2 days workshop, intensive workshop for your topics underground, open cast, then drilling blasting, slope stability, and then for resource allocation, horizon transport, and exploration. 2 days to each of the broad subjects for advancements in these technologies, these sectors basically. So I think each one of these areas deserves an intense dedicated workshop of at least 2 days. That's a good idea, I think, sir. Because क्या हो रहा है कि अभी ये सेमिनार हो गया एक प्रकार से कि सभी को बोलने की इच्छा हो रही है और हमको गिल्ट फीलिंग होता है हम उनको बोलने नहीं दे पा रहे हैं. तो आई थिंक फ्यूचर से क्योंकि सबका बिकॉज दिस द होल सब्जेक्ट इटसेल्फ इज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ अस, माइनिंग फ्रेटर्निटी एज ए होल. सो आई थिंक वी कैन थिंक ऑफ इन फ्यूचर, सर. Okay, I'll when I do. Okay, I will do it. Thank you. Thank you very Mr. much. Savan. Esteemed audience, any question, please, sir? Thank you very much. Thank you, Mr. Savan. Have a big round of applause for him. So next, I call upon Mr. Sanyam Dadich, Amrendra Kumar, and Rajesh Rai
from IIT BHU. Ms. Sanyam Dadish is coming. So Ms. Dadish will be delivering on AI's revolution in India's mining sector, an overview, I think. You will be delivering an overview sort of thing, Yes, isn't it? Title speaks like this only. Yes, sir. So please finish within 10 to 12 minutes. Sure, Then sir. we can discussions. Thank you. Good afternoon, everyone. India's mining sector stands at a critical juncture where global demand for critical elements is increasing. At the same time, environmental concerns are also raising. So there is an opportunity for tremendous growth in AI as well as challenges that we have to curb. So global market for AI in year 2024 stands at 4.1 billion US dollars and a growth of 22.4 CAGR throughout the upcoming decade is predicted. Key technologies include machine learning, big data analytics, autonomous systems, digital twins, Internet of Things, predictive analytics, artificial intelligence. We have talked about it enough. Objective of this review is to examine current implementations, quantifiable benefits, implementation challenges, and future opportunities, particularly in India. To define AI use in mining, AI is employed to reduce human efforts. In context of mining, this encompasses a wide array of capabilities from executing specific tasks and on predefined rules and patterns to collect vast amount of data. Machine learning, particularly in mining, is indispensable for applications such as forecasting equipment wear and tear, optimizing operational parameters, and enhancing predictive maintenance strategies. Internet of Things, again, we will jump into mining only. Internet of Things, IoT, facilitates unprecedented depth of operational insights by collecting data across a broad spectrum of parameters from real-time monitoring and load balance on haul trucks and as well as ambient environmental conditions. Key technologies include computer vision, which can be employed for ore grade assessment, equipment condition monitoring, safety compliance verification, geological mapping. Predictive analytics can be used for equipment failure prediction, maintenance scheduling, production optimization, and resource estimation. Sensor networks again can be employed for real-time monitoring, environmental sensors, vibrational analysis, gas detection systems, as well as we have learned that we can use acoustic sensors also. Autonomous systems can be employed for unmanned vehicles, automated drillings, robotic inspections, self-driving trucks. Big data processing we can employ for pattern recognition, optimization of algorithms, decision-making support. Edge computing, we can employ it for real-time processing, reduced latency, local data analytics, and bandwidth optimization. Current application of AI in Indian market mining context. In mineral exploration, a pilot project in Rajasthan is undergoing in Bhilwara, Bharatpur and Chittorgarh region, where drone technology is employed for magnetometer mapping of 800 to 1000 meter depths, as well as satellite analysis processing geological data for mineral targeting. In operational optimization, there are results of 50% reduction in loading times,
Predictive maintenance has also shown great success of 23 million annual savings. Route optimization, enhanced fuel recovery and efficiency of fuel use. Success story includes Equilibrium Smart Sense, which has been employed by India's many mining conglomerates, which has shown results of 23 million per year. Turbine optimization, 2.8 million US dollars per year. Conveyor productivity, 51,000 US dollars in HESP fire prevention. Safety enhancement and mineral targeting by satellites. Sir, minerals targeting, it is by GIS only, QGIS by satellite imaging. It has been employed in various parts of India, but here we are talking about Rajasthan, but it has been employed in various parts of India. Sir, it is in an initial stage, but we can definitely do that in future. It is possible. Safety enhancement and environmental stewardship. AI-powered safety systems, real-time blasting zone surveillance, 500-meter danger zone monitoring, automated alerts for unauthorized entry by human, animal, and vehicle detection. Environmental applications include waste management, water treatment, particularly in gold mining, emission reduction by autonomous equipments, environmental monitoring for real-time tracking. AI has enabled ESG compliance by maintaining the standards and reducing emissions, providing safety protocols and enhanced community engagement. There are some quantifiable benefits of AI adoption in Indian context. In production or operation phase, 10% increase in load accuracy, 5% increase in operational efficiency, 8% load capacity utilization increase, 12% reduction in fuel consumption, 20% equipment failure decrease. On environmental impact, it has reduced carbon footprint, increased renewable energy, minimized road wear and tear, sustainable resource utilization has been promoted, enhanced ecological protection has been achieved by AI adoption. In economical context, lower operational cost and increased profitability, enhanced corporate reputation and investors attraction due to AI. Long-term financial viability, reduced energy expense and carbon tax liabilities, access to green finance opportunities. In educational context, enhanced work safety through hazard detection, creation of new high-skill jobs, better community relationships. Strategic national impact of AI in India is providing autonomy in raw materials, reducing import dependency and strengthening national resource security beyond purely technical applications. As we have already discussed challenges throughout this conference, in concise we can say there are 4 challenges: technical and data infrastructure hurdles, financial investment and cost implications, regulatory, ethical and social considerations, workforce adaptation and skill gaps. Government initiatives and policy supports. India has organized India AI Hackathon on mineral targeting in 2025, organized by Ministry of Electronics and IT in collaboration with GSI. It focused on critical mine identification, including rare earth elements, nickel, platinum grade elements, copper, advanced mineral prognostication, where predictions are made for future prophecies are made for minerals, geological data analysis, particularly in Karnataka and Andhra Pradesh, AI/ML solution for exploration phases. Strategic objectives include
reducing import dependency, national resource security, economic self-reliance, that is Atmanirbhar Bharat, sustainable mineral exploration. RSMET, Rajasthan State Mineral Exploration Trust, has collaborated with NPEA, notified private exploration agencies for critical mineral tracking by AI-based. Please sum up last 2 minutes. Yes, sir. Future prospects include some, we have discussed basic, but some extraordinary prospects include space mining applications where AI technology has been deployed for terrestrial mining, which will enable future mineral extraction from lunar and asteroid sources. Advanced geological modeling, where identification of concealed and deep-seated minerals deposited using sophisticated prognostic algorithms. Two case studies from India, where equilibrium smart sense implementation. The solutions by equilibrium has been employed in various mining conglomerates, including NDMA. Technologies deployed are IoT-based sensor gateway, AI analytics platform, central historian integration, and cloud-based processing. Vedanta has also employed AI-powered drone systems in Jamkhani coal mines, Odisha. It is for surveillance for blasting zone monitoring. It has impacted that for real-time monitoring of 500-meter danger zones with automated alert systems. A digital framework includes overcoming challenges like information islands, API-driven system and integration, real-time data sharing protocols, and legacy system modernization. Digital twin technology, which has been highlighted by various speakers, which includes virtual mine replicas, predictive problem identification, optimization, opportunity mapping, end-to-end value chain. There is one extraordinary innovation by EY, a Canada-based firm, Digital Mine Solutions, which is providing digital mine solutions to various institutions right now in the country. Yes, sir. The strategic impact of AI in Indian mining context is a fundamental shift from traditional resource extraction to intelligent, sustainable practices. Success requires strategic approaches addressing infrastructure modernization, workforce development, and stakeholder engagement while balancing operational efficiency with social and environmental conditions. I would like to extend gratitude from my co-authors and mentors, Dr. Amrendra Kumar and Professor Rajesh Rai, IIT BHU. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Mr. Dadich. Thank you very much for presenting your overall review. I would suggest you to further, please visit all the major metal mines and major coal mines where later technologies are being implemented, executed. Then you can have a very good review for your further research purposes. You can present the next seminar also that way. Thank you. Thank you. Enhancing stability and productivity in large-scale open-pit limestone mines through optimized multi-phase blast design and geometry. Galata, please. Okay. You start within 10 to 12 minutes. Okay. Tell about your co-authors. Mr. Galata, please hold on. Yes. Good afternoon, respected delegates and the chairs. My name is Galata Warkisa. I'm from ITISM Dhambad. First of all, I appreciate the organizers
for giving this opportunity to present our paper, focusing on the stability and the productivity enhancement in open pit limestone mines. So this is the content of our presentation, starting from the overview and the field investigation, focusing on geometrical and the rock mass characterization, and the laboratory analysis, as well as geometrical modeling, and some numerical modeling activities, and finally, parametric study and conclusions. So as a background, as we know, blasting is very essential for productivity, but the excessive ground vibration generated from blasting affects the integrity of slope stability. So some studies have shown that the blast-induced ground vibration affects the stress distribution and rock slope in open pit mines. And also from the previous studies, the pit slope is affected due to the lasting deformation, especially when the horizontal displacement is greater than the threshold. And at the same time, some regulatory framework, like DGMS, they did not address the ground vibration impacts. That means leaving uncertainty for defining the peak particle velocity. So this research addresses the gap by integrating various parameters, focusing on rock mass characterization, the response of slope geometry, and the dynamic loading. So in this case, we have analyzed the relationship between various parameters, focusing on the factor of safety and also peak particle velocity. Then the research focuses on the mine slope stability using numerical modeling softwares, phase 2 and flag 3D modeling, and finally the parametric study were used for proposing the cost-effective design. So this is the location of study area, which is located in Madhya Pradesh of India, showing that the ground view of active mine benches where field investigation were conducted. So here, geological or lithological configuration, starting from the top material up to the last proposed pit limit. So the top material is soil material, and different bench sections were conducted up to proposed pit limit. Then during field investigations, we characterized the rock mass through both in situ surface mining and also correlate with the lab testing, which directly influences the wave propagation in dynamic loading and also slope responses. So the geometrical parameters influences the stability of the mines, and it is optimized by focusing on the size and capacity of the equipment and also geometrical conditions of the study area. So in the study, we have observed that there are some discontinuities, especially due to the blasts in which the intact state is changed to the blocky mass, and also there are some back break, which is evident of displacing rock masses due to the blasting effects. So during the monitoring of ground vibration, we have used the seismograph to monitor the ground vibration as a PPV, air over pressure, and dominant frequencies in the different directions. So this is the general workflow for stabilization of pit slope under dynamic loading. So as we see from this one, the first step is field investigation, focusing on characterizing the rock map, characterizing the bench geometry, and samples were collected to analyze the geometrical parameters like rock strengths. And finally, parametric study is then focusing on bench blasting effect and the geometrical layouts, and it is correlated with the blast-induced effects that we get from numerical modeling software. So this is the geomechanical analysis result. So the block samples were collected from the mines, and the samples were prepared according to the ISRM standards to ensure the consistency of the geometrical analysis. So these are the summary of geomechanical condition and dynamic properties of rock mass that we obtained from the laboratory, and it is used for input parameters in numerical modeling software. So after getting the results, we have developed the geometrical modeling, focusing on the realistic bench design parameters and the meshing refinement, especially focusing on the study area around the bench blast faces.
So for developing the model, boundary condition and refining the meshes, as well as investigating the blast wave frequency is very important. So accordingly, model discretization were done for both softwares, for the Flax 3D and also Phase 2. And we have used some numerical equations to determine the element length of the frequency. So after that, the blast loading were calculated based on the equivalent uniform load using these equations. And we got around 3,300 megapascal, and the load were applied on the blasting load. And we have also included the damping coefficients, which is very important for controlling the frequency to increase the attenuation of energy based on the rock mass. So after that, after developing the model, we have calculated the factor of safety and the displacement factors based on the numerical modeling. So the numerical modeling were used the site-specific peak particle velocity and also the detonation of pressure, and the safety factors were considered or calculated before and after the blast rounds, and accordingly by using Flax 3D and also Phase 2, we have calculated the factor of safety. So this is the correlation or the variation of the factor of safety under static and dynamic conditions using Phase 2 and the Flax 3D softwares. And we have indicated that the acceptable factor of safety that we obtain, especially during the dynamic conditions, will remain around 1.15. So as we see in Phase 2, the maximum static SRF or shear reduction factor is becoming 1.2, and it is decreased by 7.5% due to the blast vibration applied during the pseudo-static conditions. And at the same time, in Flax 3D, during the dynamic loading, the factor of safety is reduced due to the applied detonation wave pressure. So after that, we have observed, we have selected different points, history points, to see the variation of the velocity magnitude and the responses of the bench. And in this case also, the same procedures are there in shear strain increment. And as the blast progresses, the velocity of the blast wave decreases as the radial distance increases due to the attenuation of particle motion with increasing the distance, and also it is confirmed using the numerical modeling softwares. So parametric study to determine the optimal pit slope profile. So we have considered bench height, variation in bench height, considering other parameter constant. So when we are increasing the bench height from, for example, taking 5 up to 12, the factor of safety under both static and dynamic loading is reduced. And at the same time, when we are increasing the bench face angle from 60 to 90, the shear reduction factor is reduced, and as well as the steeper slopes can amplify the transmission of shock waves in dynamic loading. So the same thing will apply if we get like the bench width and the overall slope angle also. The other is parametric study focusing on some specific blast design parameters. So we found that during the blast round, we found lower factor of powder factor in the weaker rocks, which is risking for the fragmentation and excessive fines. And also charge and the bench stiffness is affecting the powder factor, with resulting in overbreak. And we have also correlated the powder factor with respect to the rock strengths, like tensile strengths and the UCS. So when the UCS and the tensile strengths of the rock is high, we are having high powder factor. The other one is the impact of ground vibration on mine slope stability. So as we know, the ground vibration in open pit is measured in terms of ppv. And in this study, we have considered the square root scaling and the cubic root scaling technique to determine the optimum peak particle velocity for the study area. And here, regression analysis is used to draw the peak particle velocity and the scale distance. And from that one, the equation for PPV is determined. So as we see from the equation, if we are increasing the MCPD, the peak particle velocity is also increasing. And at the same time, while considering the total charge per round,
when the total charge per round is increasing, the peak particle velocity is also increasing. Please conclude, last 2 minutes. Okay. So from this equation and the numerical modeling, we have given the threshold for the steady area for the PPV, which is ranging from 30 to 40 centimeters per second, depending on the strength of the rock material. So the ground vibration levels from the future blasting should remain below this threshold. The other one is the correlation between blast round with respect to peak particle velocity and also the factor of safety. So the high peak particle velocity is corresponding with a lower factor of safety, indicating that the vibration risk is on the pit slopes. And we have mentioned that the minimum factor of safety for the steady area is 1.08 under dynamic conditions. And this is the final proposed geometric profile of the pit design up to the ultimate pit limit. And also for each bench, we have proposed blast design parameters, considering the blast design parameters and the rock parameters also. So finally, as a conclusion, we have understood that both the blast design parameters and the geometrical profiles are very important for the stabilization of the rock material. And also velocity is reducing with increasing the radial distance, which shows the significant attenuation of particle motion over distance. And also we have optimized the blast design. The powder factor remains maximum of 0.5 kg per meter cube, and the PPV of maximum threshold up to 40 centimeters per second, depending on the rock material. And also the factor of safety 1.08 under dynamic loading, which could be acceptable for the steady area. These are the few selected references. So thank you for your attention. If there is any question, you're welcome. Thank you, Mr. Geleta, for a very nice parametric study, studying the impact of dynamic loading on pit slope stability. Yes, sir. I would advise you 2 more things. Is very vitally important. Blasting as a whole is activity which really stresses the pit slopes and eventually destabilizes in one way or the other. Exactly. But I have one suggestion to you, that in your last line you mentioned that factor of safety less than or equal to 1.15 is acceptable. Please correct it, because in Indian mining scenario, the variations are very huge. Our assessment input parameters is so subjective. So it is better to keep it in the band of 1.3 to 1.5, given our assessment of shear strength parameters for pit slopes. Okay. So one is theoretically okay. Slope standing at factor safety 1 is theoretically okay to be stable. But keeping practical sense, it has to be given our subject assessment of input parameters. FOS is relatively kept between 1.3 to 1.5 or general pit slopes. For larger slopes, for static slopes, it could be higher even. Okay. So you can correct your study results accordingly. All right, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I think we have concluded this session, and I once again thank all the esteemed speakers who have adhered to the time limits and allowed us to manage this session as per the time. So we are still, I think we are left with 5 more minutes for discussions of any of the audience. The audience can have any questions to any of the speakers. Feel free, please, and please 5 to 7 minutes time. Otherwise, we go ahead with the official proceedings. I request the speakers to kindly come forward one by one as Mr. Jawar presents them with a token of gratitude and appreciation for their valuable contribution. All the speakers, Khan Singh Chaudhary sir, Dr. J.K. Mohan sir, S.L. Borana sir, Savant sir, Sayyam Dadit sir, Pramod Rajmani sir, Nivedita ma'am, and Mr. Geleta.
Thank you, sir. May I now request Dr. P.C. Purohit, sir, to kindly come forward and felicitate our respected chair and co-chair as the gesture of our heartfelt gratitude and appreciation for their time. सर मैं वहीं आ जाता हूँ अरे सर सर अरे सर सीखे हैं सर आपसे Thank you, everyone. There's an exciting opportunity for MBM students to present a creative application of AI in engineering. Participants will have 15 minutes to showcase their work along with the Q&A session. The first prize winner would get 5,000, the second would get 4,000, and the third prize winner would get 3,000 rupees. इनको बंद करने देना Students who are interested shall contact with Alumni Association. Students, alumni, and professors are warmly invited to extend their support and participate. You all may proceed to lunch, and we'll meet again. My screen is visible and I'm audible. Yes, you are. Hello, good afternoon, everyone. Hope I'm audible. Should I start? Hello. Yes. Lalit Hello, ji, sir. can you hear me? Yes, loud and clear now. Thank you. Nice to see you. Can you recognize me?
अरे सर नहीं नहीं, पूछ लूं भाई, दूर ज्यादा दूर है ना तो शकल नहीं पहचान में आती हो तो। अरे नहीं सर, आपका चेहरा अलग से दिखता है सर, ऐसे बात नहीं है। गुड गुड गुड। थैंक यू थैंक यू। आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ये सुनने के लिए बैठे हम यहाँ। अरे सर मैं सुबह से ही वेट कर रहा हूँ, बट ठीक है, इट हैपन्स। बट टेक्नोलॉजी के साथ में यही दिक्कत है सर, चले जब तक ठीक है। ठीक है, सब आ जाएंगे, करेंगे। लेट मी नो सर व्हेन आई शुड स्टार्ट, और शुड आई स्टार्ट नाउ? नहीं, यू काइंडली वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके सुपर। Lalit, can you present your brief CV so that we can recognize and we will display that who is the speaker of the day? If you have. Surely. And Sure, because sure. another say 4 to 5 minutes we have to wait. So Let me do that. Yeah. Let me do that. Yeah. Thank you. Yeah. Your kind attention, please. We are running short of time, and we will start our conference. All the authors, please assemble in the hall so that we will start with the distribution of their certificates. Hello. Good afternoon, sir. I once again welcome to all. Before we go for the last technical session, it is my proud privilege to hand over the certificate as a token of honor to all the speakers. Those who are present, please come down. I request to Director CMRI Sahab to please come, sir. कान सिंह जी, मिस्टर गंगाराम, JK मनोज साहब, महिम कछावा जी, प्रमोद राजमनी जी, अनुपम भटनागर जी, हितांशु कौशल जी, महिम कछावा जी, अनुपम जी आ जाएं प्लीज। हितांशु कौशल जी,
प्रमोद राजमनी जी, संजीव कुमार पांडे, धनंजय कुमार, सीपी ददीज, भानु भटनागर, अखिलेश टूटेजा जी, अजीत यादव, यस प्लीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जया माहेश्वरी, मितेश उमारिया, प्लीज मितेश, मनीष वर्मा जी, राजेंद्र सिंह राठौड़, हाँ और सॉरी आपका रजनीश का आया था क्या? अरे कोई बात नहीं ना सर, अरे सर आओ आओ, देखना इसमें है क्या, इसमें देखो बताओ, अपना ढूंढो, है ना, एक आप नाम तो बोला, चलो आ जाएगा अभी, है? देखो इसमें नाम है महिम कछावा साहब, रजनीश पुरोहित साहब, रजनीश जी, मनीष जी का हो गया? मिस्टर मारिया, जया माहेश्वरी, प्रोफेसर सुशील भंडारी सर, एसी पुरोहित, अमरचंद, हो गए, शैलेंद्र द्विवेदी, विपुल कोचर सर, संजय पुरोहित, ललित कुमार, 2 मिनट लगेंगे सर, सुधीर भटनागर, नहीं नहीं अब है नहीं सर, सुधीर भटनागर, सुरभि गुप्ता, एसके यादव, सोहनलाल बोराना, प्रोफेसर के आर चौधरी, निवेदिता, ललित मोहन सोनी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओह सर, मनन जैन सर, एक, द यंग स्टूडेंट मनन जैन, co-author of Manish Verma. यस सर, अब इनका ढूंढना भी पड़ेगा ना, आए सर आए प्लीज, कान सिंह जी का दे बेटा उधर,
Thank you very much. Technical session, committee, please go ahead. I request Mahim Kachawa sir to kindly grace the stage as the chair for the session. I also request Narendra Khatik sir and Dheeraj sir to be our co-chair. To begin with the session, we have Lalit Mohan Soni sir, who will be delivering the keynote via hybrid mode. I request Mahesh Mathur sir to be the chair of this session. Mahim Kachawa sir, kindly be present on the stage. Lalit sir, kindly proceed with your session. For sure, hope I'm audible. Lalit, can you present your CV, please? Okay. Jai Singh ji sir. The chair for this session will be Jai Singh ji sir. Hope I'm audible. Can we get started? Hello. Yep. Hello, you may start. You may proceed. Yes, I can. I hope my screen is visible and I'm audible. I'm just confirming. Very much audible. You can start your presentation just now. Okay, sure. Thank you. So again, a very warm welcome after the delighted lunch. I must say that you have enjoyed that, and unfortunately, I missed this time. So myself, Lalit Soni, a mining engineer by profession with over 2 decades of experience
And I specifically, highlighted some of the key certification when we are talking about AI, we are talking about technologies. Though by professional degree or something, we all are either surveyor, mining engineers, geologists, but the need of the hour is we should be also, trying and get our hands dirty in the technologies which is floating on the go. So on that note, I would say that I have also done AI Azure fundamental certification from Microsoft, as well as TOGAS certification for architecting different solutions, and some other IoT professional and all those certification, which is, I think, we are discussing since yesterday and probably today again. Let me quickly jump to my presentation and the theme of today's workshop, or sorry, conference. I once again thank you, MBM Alumni Association, as well as the MEI Jodhpur chapter, for organizing this wonderful seminar. And as I said, unfortunately, I could not able to come in person, but I'm happy to share my insights or a few cents from Mumbai. So I will not take much time, but quickly we are discussing. Hope the entire screen is visible, but I'm just getting some black doors. But anyways, so the thing is, why we are discussing all this stuff in India, and that too in mining industry, because first and foremost we belongs to it. And if we see the global forecasting, mining is not going to be stopped or not going to be, downscale its footprints. The requirement of such nature that it is going to be increased, and it has to be increased. So if we quickly see the total production volume across the globe till 2023, and I got the statistics, it is going to be increased, and Asia as a continent contributes more than 50-60% to the global volume. Specifically for India, because we also belongs to Asian continent, and if you see the different commodities which are being mined, say for example, production volume, if we say from production volume globally, iron ore is the commodity which is being mined, so as the coal. And if we consider both of these commodities, China is leading, of course, in terms of coal production. At the same time, Australia is leading in the case of iron ore production. But if you see just down the line, we are the second largest producer of the coal. At the same time, we are also the fourth largest producer of the iron ore. When I say largest, means in terms of bulk handling, bulk mining. So that signifies the role of India in terms of mining as an industry and supplying the minerals or the required sources of fuel to the India as well as the globe. At the same time, if we see when this decarbonization thing got started, many countries and industries got started taking their commitments and whatnot. But if we see from 2015 to 2023 and where we stand, countries like Japan, Germany, they have significantly reduced their carbon dioxide emissions, specifically in the iron and steel industry. Say, for example, Japan, less than 20% emission than what they were emitting back in 2015. Whereas we are leading the show here. We are emitting more than 50-60% of the emissions what we were emitting at in the year 2015, or say 10 years back. What does that mean? That really means that we really need to think of in addressing these challenges, because it is not only harmful, but also these things comes into picture the various regulatories
and the global economy and the global market. So it's again just a statistics, and we are very much sure that leveraging the latest technologies, latest process optimization, we can we can have significant potential to downscale in these kind of negative impacts. Of course, the mineral demand is not going to be downscale, as I said, and specifically when we are talking about the energy minerals, we are seeking or we are anticipating a growth of multiple folds, like 2x by steps for 2040 or SDS, 4x by SDS 2040. Again, some statistics. So basically, the industry is having a paradox of it is required to produce and to supply the necessary mineral, which is not only required for clean energy, but also the survival of the human being. At the same time, being criticized about the carbon emissions and the environmental issues and any other labor-related issues. So we are living in that paradox. This slide I often use in this curve of digital disruption. This industry is not moving ahead. We are at the bottom most of the curve, whereas the industries which are leveraging, which are utilizing the minerals being produced by this industry, they are very much in advance. We are talking about the digital era. Whenever you talk about digital technology, XYZ thing, mineral is the most essential component of whatever the enhancement we can talk about. But now I think many countries as well as some of the big mining companies, whether outside India or inside India as well, they have started leveraging some of the technologies, but full potential, I would say, yet to be tapped in. We'll skip this one. When we talk about technologies, there are multiples. You can name automation, autonomous, 3D printing, IT/OT, virtual reality, augmented reality, machine learning, drone, XYZ. But it's a very big mesh, and on siloed operations, some or other way, the companies have started leveraging or utilizing these things. But the other thing is, these are not plug and play kind of systems. Each of these technologies require its own, at least basic infrastructure and the supported technologies to be implemented so that we can utilize this one. And it has to be done in a very systematic and strategic way. Otherwise, all the investment which is being made is good for nothing then. Talking about the value chain, there are multiple avenues, opportunities. I think now, by now, many sessions has already happened. Many applications or use cases have been discussed. So I will not take much time on this slide, but there are potential in the entire value chain, right from exploration or the discovery status to the reclamation. There are multiple use cases I personally have worked. I have worked on a very basic use cases like land management. And fortunately, I also got involved in the digital twin kind of project where it reaches to extreme, end of the digital technologies. So I got opportunity to develop the digital twin for some of the processes of mining company. So the thing is, there are multiple use cases nowadays available where the mining companies who has not even started, they can be the fast followers by looking at what their peers are doing. At the same time, the leading companies who are innovating, who are taking a footstep forward, they can also leverage the use cases being developed or designed or implemented at other industries instead of reinventing the wheel. In a nutshell, if we see on a very schematic manner, this is how the entire landscape should look like,
where we are getting the information or the real data from the actual machines or trucks or whatever the tools we are using. And there are certain different layers which transpose, which transmits, and which analyze these kind of the data what is being generated. Data is the most important and most problematic thing in this entire ecosystem. If we are not utilizing or using the right data, and we are analyzing it, consuming it to the various other layers, it is definitely not going to help, but it has its potential to distract and impact on a very large negative manner. However, considering these kind of layers where we are having the enterprise application layer, which is being used for getting the insights and taking decisions based on the information insights we are getting, which is getting generated. Laliji, please, time consideration is there. Come again. Okay, sorry. We'll finish in next 5 minutes then. Let me quickly jump to this performance and the various opportunities lying with us. And this is being captured after some research and getting some insight from the peers. There is significant increment rate of mineral recovery being witnessed, whoever has used these kind of technologies. Accident rates reduced significantly using IoT devices and many other AI devices as well. Equipment downtime, definitely using predictive maintenance, machine learning has been reduced significantly. And nowadays, I think GSI also, I attended some of the sessions, very good use cases are being developed and being utilized in the exploration and drilling tips also. Promises, yes, it promises about the efficiency, about the safety, sustainability, and workforce. But at the same time, having its own challenges, whether initial investment in infrastructure, skill gap, and of course, the ethical concerns. I think I have discussed this earlier also, but I'm also pursuing my research on the same line, and I have some real life, real world data of Indian mining industry. What are the root causes and the cause and effect? Why these technologies are not being that much prominent in Indian mining industry? So we can discuss. Whomsoever is having some interest, call me and we will discuss. Strategy. As I said, a very strategical pathway is required to be implemented, and it is now proven. You cannot just use this on ad hoc basis and start leveraging it. It is not going to help anymore. This slide I just wanted to highlight. If we are talking about technology, AI, so definitely we can be affected, but I see in a different manner. The skill is different, like traditional mechanical roles. However, the skill is just in demand, which is data analytics, remote operational systems engineering, and connected. So it's not a reduction of the resources, but there's a definite change of the skill, which I think generation is very upcoming, really thinking about. If we are the skills required by the or large, I think that's how there's definitely not expectation in force. The human intelligence is definitely required on top of the intelligence. So I take also questions like, considering enhancements and devices from the strong myself here. Thank you very much. Thank you very much for your nice presentation regarding transforming India's mining through technology advancement and using AI. And it was very good for us. Thank you very much. Nice.
guys for the conference. Thank you. Next. For next session, we'll have John sir and Sanjay Rohit sir. John sir will be joining from UK and Sanjay Rohit will be joining from Australia. We'll have a combined session. Hi guys, how's it going? First of all, thank you for allowing us to present. That's really good. And so I wanted to touch on today is the impact of artificial intelligence in the environment sector. And yes, also John Nolan has introduced us to the pilot in London, so that's a good review today. And Sanjay is with me, Sanjay is away. Processes sensitive data, including things like engine metrics, GPS positioning, environmental monitoring, to transform the raw information that was disseminated into actions and actionable analysis. And by leveraging data, systems detect inefficiencies, anticipate failures, and data informed strategies, increasing productivity and safety across those operations. So, creating artificial intelligence is really advantageous as well as the value for running an operation. So, hopefully you can see there's a live map there of a site where we can track in real time what the field is doing, where the is, where it's being and where it's going to take this is very good license to see where everything is at any point in time. Like say
you can then look at automation of production calculations, for example, looking at how much material has been moved on each particular shift on each particular day, what that material was, how many times you moved it, maybe you moved it. So having that information is there to you, and you can then analyze what's actually happening on that site, given specific time periods. Hopefully that looks very familiar to you. Also, by using agile intelligence, you can look at not only what's happening in life, but you can look at what happened yesterday, the day before, the week before, and even months before. And look at things like like a whole cycle for an operation. As you can see there is map, you can see the red line shows what must be moving around during a shift. So you can then identify which is identify other information of the site that allows you to improve the efficiency of the operations for fitness of that site. You can analyze the data and leverage this technology to look at things like your automation. How long is the most efficient ships to move material around the site? How we burn to fuel? How much fuel are we more efficient than we might by utilizing these methodologies to move the material around the site? So looking at if you flashbacks, for example, looking at how the average engineer does meter, looking at the volume of material movement, looking at the total volumes, revenue shift, and how much fuel you took to use. Identify this calculation. You can then use it to increase the fuel efficiency of our operations, which again relates to the CO2 emissions. The less we use, the less CO2 emissions we create, as mentioned earlier. Of course, the less we use, the less expenses. So also within the agile data systems, for safety and use management, so it's created management heat map. You can see which identifies where in this case speeding up, where people are speeding in operation, and traces the patterns of those speed interactions using the right areas here and identify where those interactions are taking place and then mitigate against those. Increase the safety of the operation. By gathering this data to make just using advanced analytics to look at what's happening across the shift, analyze the shift, looking at things like time start of shift to first destination, looking at looking at last destination and all these items and areas analysis by creating tools to time to look at how we increase the efficiency of our operations. So in this instance, we have here 6 scenarios, all looking on the area platform. We can compare and contrast the number of columns or analysis and identify which ones were working effectively, which ones need some more management, shall we say, which ones have room for improvement, and then we benchmark
takes a better performance and uses the information to give instruction cross-pollinate efficiencies there across the other again, CSS across the whole operations, specifications, methodologies, a number of common conventions across those operations, and identify the performance and how they can be improved. All by using this improvement reporting the advanced data analytics that come from AI and machine learning. So talking about AI, we have implemented a platform, a function as AI, which takes these standard language uses basis, and we can use this system in technology or how to program. We can ask a simple questions to the CC. What is this like situation? So that's why so the minutes, so we can use this as analytics and artificial intelligence to natural language questions and operations. And not only we can ask it to visually translate that, but also to interpret the results using artificial intelligence to explain why these situations change and what they are and where we can to improve our operations. Using artificial intelligence has input into your environmental social governance aspects of the environmental impact regulated things like fuel social emissions mentioned yesterday, earlier social responsibility, the systems and the governance excellence by giving comprehensive data supporting the ESG reporting standards as the coming to Israel. Not only is this aligned with the new reporting standards of the IRS 192 that have been introduced that most of you will now be aware of, looking at how these climate-related disclosures can be met, transparent reporting to investments, strategies and management with these climate risks and opportunities. By implementing the capabilities of artificial intelligence, you can use those information to gather and analyze data required to comply with these standards. And showing, as just been mentioned, we really time by looking at who uses this information, familiarize these companies, blending these multinational resources, interests in industrial minerals, and Africa, leading African industrial minerals industry, all using the IoT platform for artificial intelligence to improve operations and logistics across their sites. So, quickly run to this conclusion. Artificial intelligence basically powered by AI is transforming and transforming Windows system. AI leads the shift, enabling users greater efficiencies, better safety, and more sustainable operations. The ESG expectations and global standards are there and can use those artificial intelligence to help them manage those. By integrating ESG metrics and aligning with these frameworks, you can build balances, stakeholder contracts, and balance operational excellence. Sustainable development. So, there you go, guys. Thank you very much. If you do have any questions, I'd be more than happy to speak to you whenever you're ready. So, thank you very much. Thank you, John, for that Sanjay Purohit. Sanjay Purohit, it was a nice presentation. What you also have intelligence in Indian mining processes using AI technology, and it was very wonderful. And thank you so much. Thanks, guys. Have a great rest of your conference. Thank you. Hello. Slowly,
marginal position. Yeah. So, welcome to everyone present here. So, today I will be presenting on how the artificial intelligence can revolutionize the dust management in Indian mining. So, inspired by artistic vision practices in Australia. So, next. So next is about our agenda. So before we dive into the topic, here is a brief outline of what we will cover today. So we will start by understanding that what the AI actually means in the context of mining, moving beyond the soul to its real applications. So next I will explain the major dust-related challenges that the mining industry faces, especially here in India. And then we will explore that how the AI-driven technologies are being used for effective dust management, including the examples from the global leaders. So next, we will look at the real-world data and the results, including the improvement in air quality, health and operational efficiencies. So after that, I will highlight the broader benefits, both environmental and economic, of adopting the AI and dust control. And then finally, we will wrap up with some challenges and recommendations for implementing this in the Indian mining operations, especially in Rajasthan. So next is about So let me your presentation is not good. Yes. You please go your presentation is not. yeah. Full screen presentation. Yes, please. So now I'll explain that dust is not just a byproduct, it's a liability on multiple fronts. So economically, mining contributes significantly to the GDP, but the dust-related regulatory fines and the inefficiencies add the hidden costs. So human health is deeply affected. Prolonged exposure causes the chronic like respiratory diseases like silicosis, anxiety and asthma. So these don't just impact the workers. Nearby villages are also affected too. So operations, about the operations, regulatory solutions like manual water spraying are affected, are reactive and affected and waste. So you can see that the AI is solution model. Like smart air quality sensors and roads detect the dust levels in real time. Next is the data is fed into the AI and artificial intelligence and machine learning platform that predictably dust are built on. And this triggers the automated dust control measures like water spraying trucks, saving the water and acting proactively. So the transformative impact. So what happens next about the transformative impact, like what happens when we switch to AI-powered dust control. So look at the bar graph as in the show from 2019 to 2023. There is a sharp drop in the dust-related respiratory issues over 36%. And this isn't just a medical, it's a measurable proof of AI impact. So environmental impact is 90%, fever environmental pollution, and then water usage is 25% saving in dust separation, water, and then trust with community dashboard locals, access the real-time dust data, building the transparency, and reducing the complaints. So next is about the potential benefits of the AI dust management in India. So first is the health risks. So health risk is very high in traditional mining, but in AI-enabled mining, it's reduced by 30 to 40%. So why it's like in traditional mining, there is no early warning system for fire dust threats. Workers inhale airborne particulates for hours, increasing the risk of diseases like silicosis, asthma, and lung cancer. So, but in AI-enabled with AI,
traditional methods, spray water on a fixed schedule, whether dust is present or not. This leads to overuse, especially critical in water states like Rajasthan, and optimized AI is only spray when and where needed, using the dust prediction models. Like results is 25% water saving along with the effective dust suppression. Next is about the environmental fines. So in traditional mining it is very frequent, but in AI it is rare and controlled. This is because like the traditional mining mines often face the frequent penalties like for exceeding the dust or air quality limits because there is no real-time monitoring and proof of any compliance is there. So, but then AI with AI systems monitor the air 24/7 and maintain automatic records. So this prevents the violation and also provides the evidence that the mine is following the rules. So this results in fewer notices and fewer fines and then fewer shutdowns. Next is about the environmental compliances. So about the in traditional mining it is manual reporting, but in this AI driven it is automated, it is real time. Like traditionally the environmental laws are filed manually, sometimes made inadequate or incomplete. So this shows the outdated system and may raise these legal or regulatory compliances. So in real-time automated like AI-enabled systems automatically generate the compliances. So reports based on the real-time air quality data. So this can be shared with like politicians from both instantly and safe because as it saves the time and improves the trust and helps mines remain audit ready all the time. So next is about the three pillars of success. First is training and education. Second is proactive policy and third is the industries approach. So how we can adapt this so main point is like awareness is there. We need to create awareness for this. So from that I have seen some benefits of AI mining. The next big question is how do we make it happen? So the answer lies in three foundational pillars that will drive the successful implementation of AI powered dust control in India. So first is training and education. So we need to start by building the awareness and the capability. So this means training the mining engineers and field operators on using the AI tools such as the smart sensors and dashboards, including the artificial intelligence and Internet of Things and data analytics and finding education curriculum and offering the certification programs in AI application, environmental compliance. So this will ensure the over workforce and future ready. So next is about the proactive policy support. So government plays a critical role. We need that the policies that incentivize the clean tech adoption, financial support for pilot programs, mandates for real-time dust monitoring in sensitive zones. Like CSR, corporate social responsibility framework is also there to encourage the industries to invest in community monitoring tools. These steps will turn the AI from a possibility into a priority. So third is industry as a torch bearer, leading the mining companies like Hindustan Zinc Limited, NMDC and Coal India must take the lead, like they can launch the pilot projects using the AI tools, share the results and framework with smaller players, and set the benchmarks and best practices. When industry leads by example, others also follow. So this triple prolonged approach will allow us to scale the smart dust management across the country. So adapting the model for India. So first one, let's now look at how we can adapt the Fortescue model to Indian mining industries. So first one is the smart sensors. So install the portable small solar powered air quality sensors across the high dust zones like the haul roads, crushers and screening areas. So this gives the real time data even in remote locations. Next is about the drone with LiDAR, that is the light detection and ranging.
So use the drones equipped with lidar and GPS to scan the mining sites and dust sources from above. So forecast the dust events using the weather and the activity data, like trigger the fog cannons in advance, and most importantly, create the community dashboards Saloni for ji, public please conclude it. and Somebody waiting. accountability. Yes. Next is about the our vision leading the future. So main vision is like our long-term vision should be like digital twins. Uh, Use a mine before it's built for planning and environmental clearance. Like autonomous response is there. So like machines handle the routine dust separation, freeing up the humans for strategic tasks. Next is about a new generation. So Indian mining engineers will be a global experts in AI integrated responsible mining. So with sustainability at the center, Indian can transform into a model for the world, balancing the growth with environmental care. So in conclusion, um, so I will conclude by saying that AI is not a futuristic luxury. It is a present day necessity for mining. So if we align the technology, policy, and people, India can lead the next chapter in responsible resource extraction. So thank you so much for your kind attention. So I would be happy to, if any questions is there, like, Okay, Saloni, Lalit here. yeah. Yes. Yeah, first and foremost, congratulations. Nice presentation. I don't have any questions, but you mentioned in one of your slides that there are some case studies which has been referred in populating those statistics again, the safety reduction or health improvement of 25-30%, whatever be the case. Is it possible for you to share those case studies? Yeah, one. Okay, thank you. Yeah, this one. Thank you, Saloni. No, the next one, please. Yeah. Yes. Yeah, this one. So, You mentioned that the case studies have been utilized to populate these statistics. So if you have that handy with you, maybe now or afterwards, you can just send it if you have that one. like I have taken like it is a general case study, but I have like only the research data. Like I have taken that, so I want that in India also it should adapt. Like we can also adapt like this technology. No, it doesn't matter whether for India or from outside India. If you have that statistics or any reports which confirm these terms, please send it across. Huh? Otherwise, thank you. Thank you very much. Nice presentation. Thank you, Saloni Jagetia ji, for your wonderful and useful presentation regarding use of AI for dust management in Indian mines. Thank you so much. And next is Ajit Singh Yadav, Manager Mining Coal India Limited. Next, I invite Manish Verma and Manan Jain. Manish Verma. Manish Verma. Yes. हाँ आपका आप लोगों का ये दिख रहा है ठीक ठीक है Hello. Good evening, everyone.
मैं मनीष वर्मा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के अंदर माइनिंग इंजीनियर विजिलेंस के जोधपुर में रूप में अभी कार्यरत हूँ। हमारा बेसिक जो वर्क है वो है इलीगल माइनिंग को रोकना और रॉयल्टी इवेजन को एज सून एज पॉसिबल पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई करनी। कोई इंसिडेंस की बात है, पिछले 3-4 महीने से मेरी फिजिकल फिटनेस प्रॉपर नहीं थी, इस कारण से मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा था। तो मेरे को एक मौका मिला कि क्यों नहीं जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है उससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो कोई बात नहीं, चलने दो, आप ही करते रहिए। हेलो। तो उसमें से कुछ जो डिटेल्स हमें मिलते हैं डिपार्टमेंट ने जो अब तक ऑनलाइन सिस्टम को कवर करने के लिए रॉयल्टी विजन के लिए किया है, उसको ही ध्यान में रख करके ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द माइनिंग सेक्टर। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, आप सभी जानते हैं। वी शुड मूव द नेक्स्ट स्लाइड। डिपार्टमेंट ने अब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या क्या इवेजन को रोकने के लिए काम किए हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले काम किया था 2017 में कि कंप्यूटराइज्ड ई रवन्ना एंड ट्रांजिट पास मैंडेटरी कर दिया था। कोई भी मिनरल माइन होगा और माइन से बाहर जाएगा लीज से, उसको ई रवन्ना का मीनिंग समझ रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं, सब शायद सभी जानते हैं रवन्ना का मीनिंग, या ट्रांजिट पास उसके पास होना जरूरी है। वो भी कंप्यूटर से जनरेट हुआ होगा तभी वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। फिर उसको चेक करने के लिए एक ऐप बनाया गया जो कि रियल टाइम में व्हीकल का ई रवन्ना वेरीफाई करता था। उस ऐप में आप गाड़ी का नंबर डाल दें, चलती गाड़ी का सड़क के ऊपर नंबर डाल दें, तो आपको पता लग जाएगा इस गाड़ी के पास रवन्ना है या नहीं। यदि है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, देन यू कैन चेक दैट, उसको रोक सकते हैं। यदि जा रही है गाड़ी, रवन्ना वैलिड है, आपको उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने इसी संदर्भ में सीसीटीवी कैमराज जितने वे ब्रिजेस थे उन पे कंपल्सरीली, जिनको एम्पैनल किया था, लगभग 2500 वे ब्रिज है हमारे जिनको एम्पैनल्ड किया था, तो जो भी माइन से रवन्ना कटता था वो किसी न किसी वे ब्रिज पे उसको जाना है, वहाँ जाकर के उसको अपना वेमेंट करना है, तब उसका कन्फर्मेशन होता कि उसमें इतना एक्चुअल वेट है, और उसकी इमेज कैप्चर होती थी कि ये इसके अंदर कौन सा ट्रक है, क्या नंबर है, इसमें क्या माल भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, वो सारी चीज़ कंपलसरी की थी। इसके बाद में जीपीएस इंटीग्रेशन अभी प्रपोज्ड है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से पाइपलाइन में है। ये डिपार्टमेंट ने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स किए थे रॉयल्टी इवेजन को रोकने के लिए। नेक्स्ट, आज की सिनेरियो में देखें तो लगभग 32,000 ई रवन्ना, बल्कि मोर देन 32,000 ई रवन्ना और ट्रांजिट पास डेली जनरेट होते हैं। रवन्ना क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट। ये रवन्ना है सर, इसके अंदर एक मिनट वो नीचे लो थोड़ा सा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, इसमें ट्रक नंबर लिखा हुआ है कि ये किस ट्रक का बना हुआ है, उसका एक यूनिक नंबर है अल्फा न्यूमरिक। ये नंबर इसी ट्रक को जारी हुआ है और इसी पर्टिकुलर ट्रिप के लिए जारी हुआ है, और जो कि कितने टाइम तक वैलिड है, उस पर्टिकुलर डेट और टाइम तक वैलिड है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस इट इज़ ट्रैवलिंग। जनरेट कब हुआ? 1 जुलाई को से 7:12 शाम के। कन्फर्म हुआ 1 जुलाई को 7:13:46 पे शाम पे, और वो एक्सपायर कब होगा? 3 जुलाई 1:12 पे। 900 किलोमीटर उसको डिस्टेंस जाना है, इसका मतलब उसको लगभग 48 घंटे लगेंगे। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। यदि 48 घंटे से पहले उसको हम चेक करते हैं, इट इज़ ओके। यदि 48 घंटे के बाद भी वो हमें एन रूट मिलता है तो वो इलीगल है, हमारी श्रेणी में है। 48 घंटे में उसको पहुंचना है, वहाँ पे कंपलसरी है। यदि उसका व्हीकल रास्ते में ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो हमारे को डिपार्टमेंट को, उसका माइन ओनर है या ट्रक वाला, हमें ईमेल से सूचित करे कि मेरा ट्रक यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। कहाँ से निकला है, लीज नंबर लिखा है, लीज लोकेशन कहाँ है, मिनरल क्या है, नेट मिनरल वेट क्या है, टेयर वेट क्या है, ड्राइवर की डिटेल सारी इसके अंदर है। कंसाइनी का नाम और एड्रेस हमने इसमें डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक ट्रेड सीक्रेट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है चीज़ें, आप भी चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उसके अंदर एक कॉलम आता है, उसमें आप ट्रक नंबर डालें, एनीबडी कैन डू दैट। उसको डालेंगे तो ये रवाना डिस्प्ले हो जाएगा उसके ऊपर।
एनीबडी कैन चेक दैट, पब्लिक डोमेन में ही ये चीज़। देन रॉयल्टी कलेक्शन है, रॉयल्टी कितनी बनी, डीएमएफटी का क्या अमाउंट है, एनएमईटी क्या है, रॉयल्टी क्या है, मिनरल क्या है, सब इसमें डिटेल्स है। नौ 2 इमेजेस हैं। इन द लेफ्ट साइड जिसको फ्रंट इमेज कहा है, इसके अंदर ट्रक का नंबर दिखता है नीचे, यहाँ थोड़ा ब्लर होगा इसके अंदर, बाकी दिखता है। और राइट साइड की इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि मटेरियल क्या भरा हुआ है इसके अंदर और कितना भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें रवन्ना के अंदर होती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें 2 पॉइंट थे, एक रवन्ना जनरेशन का टाइम था, एक कन्फर्मेशन का टाइम था। हर माइंस पे वे ब्रिज नहीं है, तो मेरी माइन से वे ब्रिज 4 किलोमीटर दूर है सपोज, तो मैंने मेरी माइंस को उससे इंटीग्रेट कर रखा है। मेरी माइंस का जो भी ट्रक भरेगा उस पर्टिकुलर वे ब्रिज पे जाएगा और वहाँ कन्फर्म होगा, वेमेंट वहाँ होगा उसका। तो फर्स्ट इज जनरेशन स्टेज, जो कि माइंस पे जनरेट रवाना हुआ और कन्फर्म हुआ वे ब्रिज के ऊपर। तो वो एक टाइम लैग हो सकता है, कई जगह क्योंकि माइंस पे वे ब्रिज है तो वहीं जनरेट हुआ, वहाँ भी कन्फर्म हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लगभग 2500 वे ब्रिजेज है डिपार्टमेंट के पास जो एम्पेनल्ड है, मोर देन दैट। अब 32,000 ट्रक और 2500 वे ब्रिज को रेगुलरली चेक करना ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। इट्स नॉट सो इजी जॉब, इतना मैन पावर नहीं है हमारे पास में कि हमारा रवाना को चेक कर सके कि वो सही है या नहीं है। मेनली शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, फील्ड स्टाफ बहुत कम है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 फोरमैन होते हैं जो फील्ड स्टाफ के नाम पे हैं, एक व्हीकल होता है, दे कांट चेक ऑल द व्हीकल्स गोइंग थ्रू। अब इस कमी का फ़ायदा उठाते हैं लीज ओनर्स और वे ब्रिज ओनर्स, कोऑर्डिनेट करके किस तरह से इस सिस्टम को दता बताते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, कि इसको बाईपास करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं, ये है। उसके लिए वो मैनिपुलेट करते हैं ई रवन्ना और वे ब्रिज सिस्टम दोनों को मिला करके, खासकर कंफर्म करते टाइम। जनरेटर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें 100 टन लिख दूँ, अप्रोक्सीमेट लिखना है मेरे को उसके अंदर, बट वास्तव में कितना वेट है, 80 है, 110 है, 50 है, वो वे ब्रिज पे कन्फर्म होगा। ओवरलोडिंग से बचने के लिए वो उसको कम वेट पे कंफर्म करते हैं। और इन सब का मैनुअल वेरिफिकेशन हर एक रवन्ना का पॉसिबल नहीं है, 32,000 रवन्ना का, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा ही होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ 32,000 तो कम से कम पर डे होते हैं। नेक्स्ट, अब ये सिंपल ऑपरेशन लिमिटेशंस हैं। क्या 1 व्हीकल एट टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हैं फिजिकली, कहीं पर भी जा रहे हैं तो। अब लीज होल्डर वे ब्रिज ओनर्स के बीच में जो भी कोल्यूजन है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अपने लेवल पे करते हैं। और इस तरह से फेक ई रवन्ना बहुत जनरेट होते हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल माइंस हैं। हमारे यहाँ कई लिमिटेशन है कि मेरे को कंसेंट टू ऑपरेट मिला हुआ 1000 टन का, सपोज एग्जांपल, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, मेरा 1000 टन तो पूरा हो गया, अब मेरे को 500 टन इस साल में और करना, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, नई कंसेंट टू ऑपरेट लाऊंगा या ईसी नहीं लाऊंगा, इट विल टेक टाइम। तो जो माइंस बंद पड़ी हैं उसके रवन्ना को मैं कैसे यूज़ करूँगा। वे ब्रिज पे आने के बाद पता नहीं किस माइन से आया है, उस पर एमएल नंबर लिखा हुआ ना, 1 से आया 2 से आया, उसको क्या पता, उसका मिसयूज करते हैं कि वो आया कहाँ से है। नेक्स्ट, अब ये इरेगुलरिटीज कॉमन है, मल्टीपल ई रवन्नास फ्रॉम 1 स्टेशनरी व्हीकल, एक व्हीकल को खड़ा करके मल्टीपल रवन्ना बना दिए। अनरियलिस्टिक डिस्पैच इंटरवल्स, हर 10 सेकंड में 50 सेकंड में रवन्ना बन रहा है। वे ब्रिज पे कोई व्हीकल चढ़ेगा उतरेगा, उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 मिनट तो लगेंगे, हर 20 सेकंड में रवन्ना बन रहा है उस वे ब्रिज से। वो साफ इंडिकेट करता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अब ड्राइवर नंबर्स, इनकरेक्ट वे ब्रिज यूजेज, 2 टायर नीचे रख करके अंडर वेट कर दिया उसको कंफर्म, तो रॉयल्टी लॉस तो हो ही रहा है। और साथ में कई बार ड्राइवर्स के नंबर है 11111, 22222, जो कि पॉसिबल नहीं है इन जनरल, हो सकता है ऐसे नंबर्स आएँ। अपने यहाँ मोबाइल नंबर 1 2 3 4 सीरीज से इनिशिएट नहीं होते हैं, 5 6 7 से इनिशिएट होते हैं, वो भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सारे डाल रखे हैं, तो पता लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती तो है ही है। वो रिपीटेड टाइम है, जनरेशन ऑफ फेक रवन्नास फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल माइंस। हमारी लिमिटेशन है कि हम एक बार में एक ही व्हीकल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट, अब इसको एआई बेस्ड कैसे मॉनिटर किया सकता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा काम किया है, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, मेरी लिमिटेशंस थी, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, जो मैं कर सका वो मैंने मेरे लिए किया है। अब इसके अंदर एआई से मैंने इमेज को पढ़वाया और उस पैटर्न को पढ़वाया कि वो क्या पैटर्न से कर रहा है वो। उसमें मैंने नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करवाया एआई से, उसने ही पढ़ा। रियल टाइम एनोमली डिटेक्शन भी टाइम कितना है क्या नहीं है, और सीसीटीवी को एआई इंटीग्रेशन से अपन बढ़ा सकते हैं, स्केलेबिलिटी की जा सकती है यदि एआई कैमराज वगैरह अपने पास हो तो। नेक्स्ट, अब कैपेबिलिटीज है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन, एएनपीआर, डिटेक्शन ऑफ रीयूज ऑफ सेम स्टेशनरी व्हीकल्स, ये सारा दिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आपके स्टडी बताऊंगा सर आगे। नेक्स्ट, 4 चेक करता है मेरा प्रोग्राम जो है एआई से।
नंबर प्लेट वेरीफाई करता है कि जो नंबर प्लेट लगी हुई है उसको पढ़ता है, और रवाना में जो नंबर लिखा हुआ ट्रक का वो सेम है या नहीं है। यदि वो नहीं है इसका मतलब सस्पिशियस है वो चीज़। सेकंड करता है व्हीकल मूवमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ई रवानास फ्रॉम द सेम वे ब्रिज। एक ही वे ब्रिज पे दो रवाना कंसेक्यूटिव बन रहे हैं, उसमें व्हीकल अपनी जगह से मूव भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टेशनरी व्हीकल है, आप देखेंगे अभी कि स्टेशनरी व्हीकल है और उसी के रवाना कट रहे हैं। टाइम गैप पढ़ लेता है। और डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड मोबाइल नंबर्स एक लास्ट है, इसको भी मैंने इसके इनकॉर्पोरेट किया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। आधा मिनट का है सर, कुछ नहीं करना सर। एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे ऑटोमेटिक रवाना बनना, एक एक रवाना का नंबर डाल के तो टाइम लगता है मेरे को। अब आप ट्रक की पोजीशन देखें, बाकी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको सर। एक ही ट्रक खड़ा है, इसके डिफरेंट नंबर रवाना बन रहे हैं, ऊपर ट्रक नंबर बदल रहा है सिर्फ। अब ट्रक की पोजीशन 1 इंच भी नहीं हिल रही है अपनी जगह से। ट्रक की पोजीशन 1 इंच भी नहीं हिल रही है अपनी जगह से, और सिर्फ ट्रक नंबर बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, ड्राइवर का नाम पता बदल रहा है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। ये मैंने केस स्टडी की है, पीछे लेना, पीछे लो। 11 रवानास थे, मैंने नंबर यहाँ पे थोड़ा एक्स कर दिए हैं इसके अंदर, जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पब्लिक डोमेन में। ये व्हीकल नंबर आ रहे हैं आपके पास में, अलग अलग नंबर हैं। टाइम जनरेशन का है 4 जुलाई को 5:56, 5:54, 5:53, 5:52 है, ड्राइवर के नाम है। ये मेरा डाटाबेस था। नेक्स्ट, इसमें मैंने एआई से 4 चीज़ पढ़वाई। सबसे पहले नंबर प्लेट रीडिंग बाय एआई। 2 इमेजेस है, दोनों में उसने नंबर प्लेट पढ़ने की कोशिश करी। इमेज 1 में उसको नंबर नहीं दिखा तो उसने लिख दिया अनरीडेबल। इमेज 2 में उसको नंबर दिखा तो उसने नंबर लिख दिया, ये पढ़ा, एआई ने पढ़ा है। और जो रवाना में नंबर लिखा हुआ है वो है RJ19GG047। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेड बाय एआई। एज पर एआई जो इमेज में नंबर प्लेट दिख रही है उसका नंबर है 6587, और जो व्हीकल नंबर जिस पर जो रवाना पे इंडिकेटेड है वो है 0047। इट मीन्स इट इज ए सस्पिशियस व्हीकल। सेकेंड, इसके अंदर इमेज 1 में नंबर दिख रहा है 7787, सेकेंड में इमेज में उसको नंबर नहीं मिला, और इसमें व्हीकल नंबर भी 7787 था। इट मीन्स इट इज नॉर्मल व्हीकल। थर्ड इज अगेन 5787, इमेज का नंबर एक इमेज में 5787 पढ़ने में आया उसको, एक में 6587 पढ़ने में आया उसको, और यहाँ पे अलग अलग था इसलिए सस्पिशियस ले लिया उसने। थर्ड इमेज में 6587, 6487, 6587, 6587 इट वाज नॉर्मल, अगेन 6587, 0047, 7787, 7787, सेकंड 6587। इस तरह से इसने नंबर को चेक कर लिया सब रवाना के अंदर। एज पर एआई इमेज ने क्या पढ़ा और नंबर प्लेट पे क्या दिखा, एक्चुअल में रवाना किस तरह बना हुआ है, तो इसने डिटेक्ट कर दिया कि ये सस्पिशियस है। ये पहला चेक है। सेकंड चेक है इमेज रीडिंग। अब आप यहाँ देखें, इन सब यही रवाना है सारे के सारे, ये सब रवाना एक इमेज में कोई चेंज नहीं, सब सिमिलरिटी है। इट मीन स्टेशनरी व्हीकल था, उसको करा तो सारे सस्पिशियस की श्रेणी में आ रहे हैं। इसने फर्स्ट इसलिए ना कि फर्स्ट से सेकंड कंपेयर कर रहा है, इसलिए फर्स्ट को वो नहीं मानता, फर्स्ट को ओके मान के उसने बाकी को 10 को फेक बताया। नेक्स्ट, थर्ड इज टाइम डिफरेंस चेक। पहला बनाया 78 सेकंड की डिफरेंस है, दूसरा 58 सेकंड की डिफरेंस है, थर्ड 60 सेकंड की डिफरेंस है, तीसरा 108 सेकंड की डिफरेंस है, चौथा 17 से 31 सेकंड के। तो लेस देन 100 सेकंड्स मैंने उसको सस्पिशियस माना है। इसी तरह से फ़ोन नंबर के चेक भी डाले, बट इसमें सबके नंबर और नाम कोई कॉमन नहीं है, चेक सही लगे इसलिए इसने नॉर्मल कर दिया इसको। इसकी एक समरी बनाई मैंने। नेक्स्ट, तो फेल्ड चेक, पहले केस में 3 चेक में 4 में से 3 फेल हुए, इस तरह से सारी समरी है। अब डिसीजन ये लेना है कि इन चेक्स का क्या करना है, हाउ टू टेक एक्शन, वो मैं अभी नहीं ले सकता क्योंकि सिस्टम में हमारे सिस्टम अलाउ नहीं करता, मुझे मैनुअल करना है, वो मैं लूंगा और मैंने लिया इन केसेस के अंदर। आई इशूड नोटिस फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट, अब इसी तरह ये 10 रवाना और लिए, 11 रवाना और है केस 2। अब आप खुद देखेंगे ये 11 रवाना एक साथ जनरेट होंगे, सीक्वेंस में आएंगे ये। आप खुद देखेंगे हर बार ट्रक की पोजीशन, ट्रक चेंज होगा आपके पास में, आपको लगेगा, आप खुद देख के सकते हैं कि यहाँ चेंज हो रहा है ट्रक, इसमें फर्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम का भी गैप है, आगे आ जाएगा, इस पर भी अपन चेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, हटा दे। नेक्स्ट, इस पर भी अपन चारों चेक अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
इसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर AI couldn't read the number plate in both the images, इसलिए उसको सस्पिशियस नहीं कह सकते. इफ इट हैज बीन डिफरेंट, ये अपने को से बताना है AI को कि भी इसको क्या मानना है. तो अनरीडेबल है तो सस्पिशियस मान लो, एक रीडेबल है तो सस्पिशियस मान लो या नहीं मानो. इसके अंदर जहाँ जहाँ पे रीडेबल हैं, इमेज नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 10, इसके अंदर नंबर मिला. जो नंबर इसके अंदर था वही रवाना पे नंबर था, इसलिए सबको इसने नॉर्मल दे दिया है. एंड सिमिलरली फोटो के अंदर हर फोटो वाज डिफरेंट, एवरी फोटो वाज डिफरेंट, तो नॉर्मल चेक इसने ये नेक्स्ट और नॉर्मल. नेक्स्ट टाइम डिफरेंस, इट वाज मोर देन, किसी में 900 सेकंड है, किसी में 800 सेकंड है, किसी में 2000 सेकंड है. इट इज़ अ नॉर्मल फीचर, इतना टाइम लगता है ट्रक आने में. और सिमिलरली फ़ोन नंबर्स वर वैलिड, कहीं पर कोई एम्बिग्विटी नहीं दिखी, तो इसने चारों चेक को इसने नेक्स्ट. यहाँ पे हुआ कोई भी इसने चेक फेल नहीं बताया चारों में से. और नंबर प्लेट नॉट रीडेबल, एक इसने वार्निंग दी है कि मुझे नंबर प्लेट नहीं दिखी है इसके अंदर. अब आप इसको मैनुअल चेक कर लो कि है कि नहीं है, क्योंकि AI को पढ़ने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस चाहिएंगी. अभी डाटा इतना नहीं था मेरे पास कि मैं उसको ट्रेन कर सकता AI को, बट हो सकता है ये. नेक्स्ट, अब ये चीज़ बेसिकली अपने सामने आई है, सभी जो माइनिंग इंजीनियर्स बैठे हैं, कि एक ही गाड़ी खड़ी करके बहुत दिक्कत है. अपने सामने ऐसे केसेस बनते हैं जिनको अपन ना तो रिकवरी निकलवा सकते, बड़ी दिक्कत आती. तो यदि इस सिस्टम को, मेरा ओपिनियन ये है इसके अंदर, कि यदि इस AI को, इस प्रोग्राम को अपने DGMGOMS सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जाए, और जैसे ही सेकंड पहला रवाना बने, उसी वे ब्रिज से दूसरा रवाना कॉन्जिटिव बने, उसमें कोई भी चेक लगे, थर्ड रवाना बने ही नहीं और स्टॉप हो. जैसे अभी भी अपन रोकते हैं कि उसका डीएक्टिवेट कर दिया, वे ब्रिज को डीएक्टिवेट कर दिया, रवाना जनरेशन डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही कर दे, मैनुअल इंटरवेंशन रहे ही नहीं इसके अंदर. बट इट नीड्स रिफाइनिंग, इसमें कोई दो राय नहीं. इट इज बेसिकली इनिशियल स्टेज, बट इट कैन बी डन बाय दिस आल्सो. कल जितने भी पेपर्स प्रेजेंट हुए बहुत हाई क्लास पेपर्स थे, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है. बट इट वॉज माई ओपिनियन कि मेरे पास जो लिमिटेड डाटा था और मैं कर सका, टाइम था, उसके हिसाब से वी कैन इम्प्लीमेंट दिस चेक इन आवर DMGOMS इफेक्टिवली. थैंक यू सर. एनीबडी? सर हेलो, थैंक यू मनीष जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है. मेरी कुछ क्वेरीज. पहले बात तो आपने ये कहा कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, वो मैं सभी सदन को बताना चाहूँगा कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड. एंड आई हैव रेज्ड ए डिमांड ऑफ 20 crores out of 4 odd mining leases of masonry stone in Chamu area of Balaji Minerals. Beside this, 56 crore demand has been raised in Rasamand area, which is altogether different, in which the ravanas are being imposed or entered by the departmental officer's ID. That is a very alarming situation. Secondly, my question is this: who deter you to take action against such irregularities? Why don't you put all the figures and raise the 10 times penalty and recovery cost of the recovery and give the defaulter a notice? There is no direction. You can't do this. So better it is advised to all that all the concerned persons should do this in their jurisdiction and raise the demand, because it is the direct loss to the state exchequer and we should curb it. Thirdly, your point was you have taken the time 50 seconds and 100 seconds, that is optimal, but it should be linked with distance also, because I have seen in Chamu area that within 2 minutes a vehicle is going 40 kilometers away and coming back, and that is again confirmed within 2 minutes. That is a drastic. So you link this timing with the distance where it is delivered. Yes sir. सर आपकी बात सही है बिल्कुल. मेरा टाइम, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल को लिंक नहीं करा है. मैंने एक वे ब्रिज के ऊपर एक ट्रक आया, कंफर्म हुआ, उतरा,
फिर दूसरा आया, कन्फर्म हुआ, उतरा, उसके बीच को पकड़ा है अभी तो। एंड यूज को भी ऐड किया जा सकता है, दैट कैन बी एडेड। सेकेंडली दूसरा आपने कहा पेनल्टी रेज नहीं की, मैं अब तक पिछले 3 महीने में करीबन 16 केसेस में नोटिस दे चुका हूँ। एक केस में पेनल्टी का भी नोटिस दे दिया, सेकंड नोटिस जो होता है अभी डिमांड रेज करके वो दे दिया है, बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। पॉइंट ये है सर, नहीं आप सभी को एक साथ देख सकते हो, आपको लिस्ट है, उसकी पूरी लिस्ट निकाल लो, लिस्ट निकाल के टोटल हुआ उसको मल्टीप्लाई करके और एक फॉर्मेट बना लो, ऑनलाइन आपका नोटिस जनरेट हो सकता है। वही करा है सर मैंने। पॉइंट ये है सर, मेरे पास एक माइंस के 200 रवाना आए थे, मैंने चेक करना था, एक दिन में 200 रवाना निकाले उसने, जो कि फिजिबल लगा नहीं मेरे को। अपन ने एक चेक लगा रहा कि 20 रवाना से ऊपर होते, एक SMS आता है एमई के पास में कि इस माइंस से आज 20 रवाना से ऊपर जनरेट हुए हैं, बट मुझे लगता नहीं कि एमई को इतना टाइम होता है कि वो चेक करे 20 कि क्या करा उसमें, चेक ही नहीं करता वो, उसको टाइम भी नहीं होता सर। जब डायरेक्टर 12,000 रवाना खुद पर्सनली चेक कर सकता है तो 200 रवाना इज नॉट ए हार्डली, मतलब मानता हूं आपकी बात सर, बिग मैटर फॉर ए माइनिंग इंजीनियर आई थिंक। 12,000 रवाना, एक रवाना को अपने पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि अपने पास इमेज का PDF प्रिंट आ जाए, अपने पास सॉफ्टवेयर नहीं, हर एक का रवाना फीड करेगा अपने वेबसाइट पे, देन उसका प्रिंट आउट निकलेगा, फिर वो प्रिंट निकालेगा, देन फिजिकली देखेगा। मैंने अभी इसके लिए प्रोग्राम बनाया कि मैं अपनी डाटा एक्सेल फाइल में लेता हूँ, डालता हूँ और सारे रवाना एक PDF बना के दे देता है और वीडियो रिकॉर्ड कर लो आप, इसको कंटिन्यूस दिखता है, सब मैंने आपको दिखाया। सर वो बात सही है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये इसके अंदर किया जा सकता है, बट जहाँ जहाँ 30,000 रवाना है, मैं तो इस सिस्टम को यदि अपन अपने ऑनलाइन सिस्टम, मेरा ओपिनियन है सर, इट इज़ नॉट, इंटीग्रेट कर दें और यदि एक रवाना के बाद दूसरी गड़बड़ी करते ही वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाए तो तीसरा बनेगा ही नहीं। फ्यूचर का तो अपन ले रहे हैं सर, उसके अंदर तो चेक लगा रहे हैं सर, लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट, जिन्होंने इरेगुलरिटी करके गवर्नमेंट को इवेजन पहुंचाया है, उनको रिकवर करने के लिए अपने पास क्या है, उनको तो अपने को करना पड़ेगा ना। ये तो सर मेरा इसके अंदर है कि पीछे का जो अब जो आगे से हो, एंड वी हैव ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, वो तो कर ही रहे हैं विद फोटोज एंड, मैंने कल इसीलिए पूछा था भाई ये एविडेंस काम में आएंगे कि नहीं, कल को केस होगा तो ये एविडेंस कोर्ट में यूजेबल है। You raise the demand, file the caveat and put this documentary evidence. Sir, no one can win. Sir, thank you sir. Anybody else? Yes. सर इससे माइनिंग डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कैसे लॉस हो रहा है कि अगर एक व्हीकल 200 रवाना निकाल रहा है अगर एक माइन से, तो इसको डिपार्टमेंट को क्या लॉस है? डिपार्टमेंट को तो उसका रेवेन्यू मिल ही रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आप विराज आप अभी माइंस पे ट्रेनिंग ले पूरी प्रॉपर नहीं हुई आपकी। आप मिनरल कहाँ से निकाल सकते हो? जो आपका लीज एरिया है ना, आपका लीज एरिया ML नंबर अपन देते हैं, ML नंबर सो एंड सो, उसका ML नंबर है, इसका मतलब वो मटेरियल वहाँ से निकला है। अब मैंने वहाँ पे ट्रक खड़ा करके 50 रवाना बना दिए, 100 बना दिए, बट एक्चुअल मैंने रॉयल्टी पे कर दी, हो रही डिपार्टमेंट जमा, बट एक्चुअल में वो मटेरियल वहाँ से नहीं निकला, वो मटेरियल कहीं और से निकला था, उसको मैंने इलीगल निकाल के रेगुलराइज करा है। आप समझ गए बात को? तो रॉयल्टी इवेजन तो है ही ना, वो इलीगल का जहाँ से निकाल रहा है, उसका 10 टाइम्स लगता है उसका, अब वो सिंगल टाइम में वो तो छूट रहा है। सर तो अपन उस ट्रक के ऊपर नहीं करके अपन उस माइंस को मेजर करके माइंस के ऊपर, उसके लिए मैं सेकंड पेपर लाया हूँ अभी मनन बताएगा उसके बारे में, उसके लिए भी करेंगे कोशिश। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? सर रिगार्डिंग दिस मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम मिनरल डिस्पैच करते हैं कहीं से माइंस से और इंटरमीडिएट पॉइंट कोई बनाते हैं और फिर 2 स्टेज हो गया उसका, पहले ट्रक से किया फिर बाई रेल किया, तो उसमें हमारा DMG का पहले तो TP जारी करते थे, अभी रिसेंटली क्या प्रोसेस है उसमें? मेसनरी स्टोन और सैंड में तो TP जारी होती है अभी भी सर, मुरुम में भी होती है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल्स जो हैं उनके अंदर अभी TP का प्रोविज़न अपन ने बंद कर दिया है, उनको अभी ई-वे बिल से रेगुलेट कर रहे हैं कि यदि कोई माइन ओनर अपनी माइन से निकाल के स्टॉक पे लाता है, ही हैज पेड दी रॉयल्टी, अब वो वहाँ से उसको ई-वे बिल के थ्रू वो करते हैं, हम ये चेक करते हैं, उसके रास्ते में वो ई-वे बिल दिखाता है, ये प्रोविजन कर रखा है। ई-वे बिल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी रजिस्टर्ड द डंप, और बहुत दोनों जगह एप्लीकेबल है। ई-वे बिल का रवाना भी हो सकता है उसका, ना थोड़ी है उसको, यहाँ से गुजरात माल जा रहा है तो मैं रवाना भी दे रहा हूँ और ई-वे बिल भी दे रहा हूँ। मेरा 100 ट्रक लेके आया और फिर मैंने उसको बाई रैक लोड किया, हाँ, तो उसमें ई-वे बिल कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ई-वे बिल कैसे प्रोड्यूस करें? ई-वे बिल बनाओगे ना, आपने ला करके डंप किया कहीं पे, उसको रीलोड किया तो ई-वे बिल बनाओगे आपको सर। क्वेश्चन सही है बिल्कुल। रॉयल्टी किस पे लगती है? रॉयल्टी डिस्पैच पे लगेगी सर। नहीं, डिस्पैच कहाँ से? रॉयल्टी माइनिंग से, या तो यूज्ड इन माइंस और डिस्पैच इन द माइंस, तो रॉयल्टी तो हमारी वहीं लग गई, उसके बाद आप कहीं इकट्ठा करो और कहीं ले जाओ, उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार होंगे।
नहीं सर, एंड यूजर आप कहाँ भेज रहे हो, ये आपका आउटलुक है। उसमें बीच में इंटरमीडिएट डीएमजी उसका कोई इंटरफेस नहीं हमारा कोई नहीं, वो आप उसमें जीएसटी दो, हमारी रॉयल्टी तो वहाँ मिल गई, हम कहाँ तक उसका पीछा करेंगे। कल तो आप कहते हो कि लाइमस्टोन है, सीमेंट बनी है, सीमेंट का भी हम उसको चेक करेंगे, काउंटर चेक थोड़ी हो सकता है। सर अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तो होगा ना उसका, कंसाइनी तो कंसाइनी वो आपको देखना है ना, कंसाइनी आपको देखना है, और वो ई-वे बिल से जाएगा आपके पास में। अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर वैलिड है। हमारी रॉयल्टी तो या तो आपने माइंस पे यूज किया तो यूज करने के बाद निकलेगा तो उस फिनिश प्रोडक्ट पे लेंगे, और अगर मिनरल निकला तो मिनरल पे लेंगे। थैंक यू सर। हाँ कर रहा हूँ सर, बस कंटिन्यूटी में है सर, उसके बिना मजा नहीं आएगा। स्टार्ट कर सर, एनी क्वेश्चन? सेकंड पेपर से इसी कंटिन्यूटी में ही है, चालू करता हूँ इस ये पेपर। इसमें मेरा एक्सपीरियंस, मतलब छोटा छोटा एक्सपीरियंस है, जो तकलीफें अपने को आती है सब फील्ड में, और काम इन्होंने किया है बच्चों ने साहब। सर इनकी टीम है 4 बच्चों की। इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू डेवलप इट। सर नेक्स्ट पेपर अपना इलीगल माइनिंग पे ही है। इन बच्चों का आइडिया था, मैंने चुराया इनसे। मैंने कहा तुम पब्लिक, तुम्हारा अच्छा आइडिया, तुम वहाँ भी इम्प्लीमेंट, मेरे यहाँ भी इम्प्लीमेंट करो। इट इज थोड़ा सा ये एडवांस स्टेज का है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बाद में ये एक्सप्लेन करेंगे सर। अपने यहाँ इलीगल माइनिंग 2 तरीके से। बिल्कुल सर, इज स्टार्टअप, इनका फर्म का नाम है जीरा वाला, फाउंडर एरोस्पेस, ये फाउंडर हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया, LLP रजिस्टर करा लिए, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। इनके आइडिया से इंप्रेस होकर के मैंने इसको आगे बढ़ाया सर। अपने यहाँ 2 तरह की इलीगल माइनिंग होती है, वन इज ऑथराइज्ड, जहाँ पे लाइसेंस नहीं है, खड्डा खोद रहा है और बेच रहा है, और एक मिसयूज बना। 2 तरह की माइनिंग है। अपन ने रॉयल्टी का तो मैंने बताया। अब अपन जब इलीगल माइनिंग पकड़ने जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले अपनी रेकी होती है, सब गाड़ी में साहब बैठ गए हैं, इस रोड पे मुड़ गए हैं, इस गली में आ रहे हैं, आगे मैसेज होता है, कुछ नहीं मिलता हमको वहाँ पे, या कई बार मिस हैंडलिंग भी होती है। एआई के सिस्टम से सारी चीज मतलब हो जाएगी, फेसलेस वही कंट्रोल होगा। सर, उसमें अपने को गाड़ी के पीछे दौड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने को गाड़ी के पीछे, अपने को क्रिएटिव वर्क करना है, नया मिनरल ढूंढना है। सर वो तो एआई बेस्ड ऑटोमेटिक कैमरा से इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और 4 चेक लगा दिया अपन ने, तो जहाँ भी जाएगा वो गाड़ी के पीछे अपना ऑफिसर नहीं दौड़ेगा। वो बिल्कुल सही, गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ेगा। बट जो अभी फील्ड में इलीगल माइनिंग कहीं हो रही है, अपना कंट्रोल सेंटर बना हुआ सर, अभी रोज SMS आते हैं उसके ऊपर कि इस जगह पे इलीगल माइनिंग हो रही है, अपना टीम भागती है। जैसी ही टीम निकलती है ऑफिस के बाहर, चाय की दुकान पे रेकी वाले बैठे हैं, सबको पता है अपने को कैसी अपनी रेकी होती है। अपन जाते हैं, अपने कुछ नहीं मिलता, यदि मिलता है तो मॉब सामने आ जाती है, दिक्कत। उसके लिए भी अपन सैटेलाइट और ड्रोन बेस और ये जो जियो फेंसिंग वाला काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं। अब जहाँ जाते हैं तो जो भी इलीगल माइनिंग के डैमेजेस हैं, वो एनवायरमेंटल डैमेजेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट का हाथापाई भी कई बार हुई है सर, अपने साथ मारपीट भी हुई है, शीशे फूटे हैं, और वल्नरेबिलिटी तो रहती है सर, रिस्क तो रहती है। आदमी अपन जाते हैं, कार्रवाई करो, फटाफट वहाँ से निकलो, फिर अपन FIR पंचनामा थाने बैठ के बनाएंगे। ये जनरल टेंडेंसी होती है अपनी। इसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में इनका प्रेजेंटेशन है सर। इसका क्या है कि ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशन भी अपन ने तैयार किया हुआ है, जिससे ड्रोन 5 किलोमीटर दूर से अपन उड़ा के उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भेज के, और आसपास के थाने और 3-4 ऑफिसेज होगी, वहाँ अलर्ट मिल जाएगा, और वहाँ अपन सेंसर करके उस जो इलीगल प्रॉन एरियाज हैं उसके अंदर अपना करने का विचार। Yes sir, but it is implemented as a advanced level. So, as Manish Verma sir presented the critical issues clearly, I would like to present the solution. I am Manan Jain, founder of Jirawala Aerospace and third-year student of Artificial Intelligence and Data Science at MBM University. As we have seen, the Mining Vigilance Department is currently facing several issues regarding illegal mining and royalty invasion. I am here to address the solution for that problem. As soon as let me walk through you to solution first, that how it will solve the problem. As soon as the problem is raised, the trigger of quick activation of drone will be deployed, and the drone will deploy from dog station to the exact
unauthorized mine location. It will conduct the aerial surveillance and capture the evidence like count of equipments, count of vehicles that are illegal, or the land excavated from the illegal mining site, expect from the leased mine. The key system capabilities of the drone will be, it will detect the illegal mining site, except the leased mine, and monitor the whole site. The operational benefits will be, it will be 24/7 available, as drone can be deployed easily through SOS signals when the vigilant department uh, receive the alert for the unauthorized mine site. So it can easily deployed. So it collects the evidence with timestamp, and it will transmit it to the data center or the dashboard in real time. The safety enhancement, like there is no confrontation of vigilance department officer to the manpower of illegal miner. And as the Manish sir said, they got the false allegation and manpower of the illegal miner have to face them. Sir, this is the showcase of the how the computer vision algorithms will be implemented through drone. The drone will detect the vehicles and equipment and segregate them on the basis of their type on the mine site. As it is a base model, if it is optimized more efficiently, it will able to detect the number plates also clearly from the aerial view. This is the base model actually, not the advanced model, in which it also detecting and segmentation of the vehicles and equipment. How a drone will detect the illegal mine. As the KML file is fed to the drone system from the data feeder, and drone will detect the KML file, leased mine, that how much the government has leased the mines to the miner. It will detect the 3D contour of the mine and mention the elevations in the contour form, and after that the illegal mine sites as shown in the figure, the square part is the leased mine and the other blue part is covered in the contour is the illegal mine, from where the materials and minerals are excavated. And after that, the 3D thermal elevation of the mine is ready. That the dark blue part is the depth. As the peak increases, it converts to red part. So what will be the expected outcomes? In the immediate result, the officer safety is enhanced, as the vigilant officer as not to confront the manpower or the false allegation. The detection of illegal mines and unauthorized mines are increased and improved. The activities of illegal mining will be decreased. As the drone travels through the aerial ways, and there is no obstacle in the air. So the response time is reduced. And as the evidence, when as Manish sir said, when, at the time of they reach the location,
the evidence got cleared and there is nothing to capture or to collect the evidence. As the response time is less and the drone is traveled to the mine location, illegal mine location, it will immediately capture the site, the equipments, the vehicles, number of vehicles immediately. And as the drone is equipped with a high resolution camera, it's not just flying camera, it's a aerial intelligence like what we can say, digital officer in the sky. These are the immediate results what we will get. And the long-term impact of this solution will be reduce in illegal minings with the time, and better environment protection as the control in environmental damage also increased. The compliance for the mining operators, miners which are doing illegal mining will be increased. Mainly the trust of the public will be increased for the government enforcement. So let me show you the comparison of current reality and what is possible. Like manual enforcement, the officer safety is very risky as they have to travel through the long routes, have to face manpower, and which is really not safe. And in drone system, the drone will travel from dock station to exact location of the unauthorized mining, as there is no confrontation and it's a safe solution. So as we take the aspect of evidence collection, the evidence collection is delayed as the travel time of the vigilance officer is more. As we can imagine that if you are an officer, vigilance officer, and you get a operation for Siroi, that in Siroi there is illegal mining is operating. So you have to go from Jodhpur to Siroi. So this distance is very long to travel. So if the drone is traveling through aerial ways, there is no traffic or no obstacle, so it can reach in mean time. The response is also fast, operational hours are reduced. So the drone system is like instant solution for this illegal mining operations. So in manual enforcement, the manpower is high. That in operation there is one vigilance officer goes, with them there are 3 to 4 foremen, and there are vehicle required to travel from one location to another location. But in drone surveillance, there is no need of vehicles, no need of manual intervention, there is no need of extra manpower. So it needs low manpower. If needed, it only requires a drone pilot, nothing else. As per the regulatories. Legal documentation, it requires in manual enforcement, it requires manpower to visit the unauthorized mining site and collect the data manually. If the evidence got cleared, then they get nothing. But in drone surveillance, as the response time is reduced and the operational hours also reduced, immediately the drone will deploy and visit the site, collect the evidence and send it to the real-time dashboard. So the legal document is also get digital. So how we will implement this concept in the real world? In phase 1, we will deploy it for pilot testing in 3 districts as to test the system's effectiveness and operational procedure. As we get the results and feedback, we will expand it to phase 2, means roll out the system
to the few more districts. In phase 3, we will cover the whole Rajasthan through the aerial monitoring, which will be 24/7, and we will get the feedbacks and result. So we will expand more. Challenges and limitations we are facing right now are the community resistance, hostility from offenders, like if there are manpower of the illegal miner is there on the site, they can easily what we can say like that become an obstacle for the drone. But as we are developing and we are doing our Madan, I R&D. request you to conclude it earliest as Yes, sir. you are Yes, sir. there. It's last slide actually. So as the R&D is continuing, and we will optimize and develop more algorithms for that also. The main is we are getting obstacle as high initial investment as it requires to deploy drones, to create a dog station at the remote areas near mining sites, mining areas, as it will also get the the drone will get maintenance, battery and clouds, trained staffs also to maintain the center, the dog station, we can say. And the main obstacle we are facing is like regulatory, DGCA, as there is no regulation for BVLOS drones. BVLOS means the drone should be in the sight of the remote drone pilot sight of line. So if the drone is getting out of range the line of sight of the pilot, so it should not be able to fly in the government regulations. So for the mining, we can get the special permissions. So this is the limitations and challenges. Thank you. Thank you to the Mr. Sushil Bhandari sir for giving me this great opportunity and great platform to showcase my concept and what we are working on. And special thanks to Mr. Manish Verma sir, who has believed in us to present this solution in this platform. And also a special thank to my team, the Jiravla Aerospace team, for helping me. Mahesh. Hello, my name is Mahesh Vyas. I am third year student of diploma CS and currently pursuing my skills in data analytics and also posted as data analyst at Jiravla Aerospace. Hello everyone, my name is Eman Galot. I am the student of CSEF third year computer science in MBM college. Thank you. Sir, any questions please? I will answer that. Very nice presentation और स्टार्टअप्स और स्टूडेंट चैप्टर के हिसाब से आपने जो बनाया है बहुत ही बेहतरीन बनाया है. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की अभी भी गुंजाइश है, उसको आप और इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो ये और फुल प्रूफ हो जाएगा. इसमें एक तो आपको जो ड्रोन की स्पेसिफिकेशन है वो डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये टू एंड फ्रो कम से कम कितना ड्रोन चल जाएगा. Yes, sir. ये आपने इस पे कुछ एक्सरसाइज की है? हाँ सर, मीन्स अगर मिनिमम मतलब एक बार फ्यूल के बाद में ड्रोन कितना रन कर जाएगा? सर एक 5 kg का ड्रोन आराम से 30 to 35 मिनट फ्लाई कर सकता है. As we can implement in the shifts for the 24/7 solution. वो तो है. दूसरा इसकी हाइट क्या रहेगी, ड्रोन की फ्लाइंग हाइट? सर अब जैसे कि माइन के अगर सर्विलेंस करना होता है तो हम मिनिमम 50 to
60 फीट्स के ऊपर उड़ाते हैं ड्रोन को, तो उससे क्लियर रेजोल्यूशन आता है एंड इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कैमरा रेजोल्यूशन. Yes. तो सर उससे भी वो भी एक फैक्टर है. Here is the catch, because you are not going to check the mines. It is not of legal mines. Yes, sir. And that was you have shown that it is a challenge that the drone may be tempered or damaged. Yes, sir. So your minimum height should be at least 100 meters. So at the bottom, who is doing illegal is unaware that someone is watching overhead. Yes, sir. As the Secondly, your distance should be at least 4 to 5 kilometers away. So the team is also safe, and to and fro distance should be calculated accordingly with number plate and manual face recognition. Who are doing? Exactly, sir. Exactly. And how to calculate the volume, because you will not get the KML file. It is the KML file is of lease document. Yes, sir. Here you have to find area, then volume, and then convert into tonnage. And it should be totally based on cloud computing. Yes, sir. No manual Real interference time, should be sir, on the there. server. So you by adding some features, Yes, it sir. can be more enhanced. It is Sir, my yes, some suggestion, but absolutely your work is unbeatable and marvelous work. Thank you, sir. But there are certain things that have to be taken into account. One thing is your drone can be hacked. So you are working on one side. Yes, sir, The we are persons who are having mines, Yes, sir. what they can do is they can hack, they can jam your drone. Yes, sir, they exactly. can We have fire also the thought drone. of that. And then DGA, CA regulations are also there. So what we should do is, because satellite images are very important. Yes, sir. You see Google Map when we are using, and when we are going to from one place to another place, the Google Map is able to show you that this place is, when we are traveling, that path is highly concentrated. Yes, So sir. many trucks are plowing, your cars are there, so it will show on red line. Yeah. So images can be more useful. You will not require DGCA approval, that cannot be hacked, and that cannot be shot down. So a lot of As things you are have there. mentioned the jammers, So there, sir, namaskar. there is So different that would kinds be of, a better option. So you are using, instead of taking images and then using, Yes, take direct images from satellite and utilize that. So background sir. work that For you are the doing, feed of yes, the, feed that for can the be model, done. we Thank are you so using much. the Very good images work of- you are doing. But as sir, you have mentioned the jammer part, there are different kinds of algorithms and encryption can be implemented, sir. Yes, sir. Manan, Yes, sir. we already have drone using mining and Yes, sir. identifying holes. All right, complete software is there already, so you can link. Yes, sir, with that. exactly. Uh, We will look forward to. It is computer vision. We are taking coordinates of holes. Yes, so it is sir. so precise. Yes, sir. And it is being used in the mines. So see our software. That is where Yes, sir. you started. Sir, Manish. you have shown us the Manish. fragmentation analysis software. No, we are looking at the coordinates of the holes after they are drilled. Yes, sir. Before drilling, we give coordinates through Exactly, sir. software, and that the drill machine gets those coordinates. It drills according to that, but there is always actual and drilling difference, and we Yes, sir. want to know that. So Exactly, sir. computer vision, the image what Professor Is the Garg crucial part talking for about, that, sir. that is Exactly. what is needed, and we already have. It is so precise. Within 0.5 millimeters, centimeters, we have to give the coordinates to the drill machine. Yes, sir, exactly. Okay, so check again with Govind Yes, sir. or Bhupender. Yes, Come sir. there, office. Okay, sir. So then we'll talk more about what Deepak Yes, sir, sir is exactly, definitely. telling.
ask him, interact with him, or Mr. Mathur, or those your team members. Then you will be able to improve. You have talked to one Yes, sir. member all, but there are others also in Manish his sir. team. All right? Yes, Thank sir. you. Definitely, sir. थैंक यू वेरी मच सर। हम इनका एक पार्टनर पीछे रह गया था, कुछ काम से बाहर गया था। इंट्रोडक्शन दे भाई। My name is Vinayak Vyas. I am pursuing AI, B in AI from MBM University. I am at Jirawala Aerospace working for machine learning as post of machine learning engineer. Thank you, sir. चलो, thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Manish Verma ji and his entire team for wonderful presentation of use of AI in drone surveillance as well as royalty evasion of DMGOMS. It's very nice. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. Now I request Mathur sir to kindly present the mementos to our speakers, Manan Jain and Manish Verma sir. Manish sir. I request Bhandari sir. I request Vipul Kocher sir to present the mementos to chair and co-chair. We'll be taking 5 minutes break. After that, we'll commence our valedictory session. Kraj Neniwal sir, Controller of Mines IBM. Now I request Moolchand sir to kindly escort our guest of honor, Akhil Ranjan sir. I may also request R.P. Chaudhary sir and Vipul Kocher sir to kindly come forward and take their seats on the dais. I would request P.R. Dave sir to kindly come forward and felicitate our chief guest with Safa and plant.
Now, I request Y.S. Saviwal sir to felicitate our guest of honor, Pukhraj sir, with Safa and plant. At last but not the least, I would request R.S. Rathore sir to felicitate our yet another chief guest of honor, Akhil Ranjan sir. To formally commence the valedictory session, it is an immense honor to invite a revered academician, a very strong pillar of our department, and someone I personally hold in the highest regards, Professor R.P. Chaudhary sir, Head of Department Mining Engineering, MBM University, and Secretary of MEI Jodhpur chapter, to deliver the welcome address. He is a recipient of several honors for excellence in teaching and research. His dedication and leadership continues to inspire us all. Sir, kindly proceed. Thank you, Prachi. Welcome address in valedictory is just like in a play. We are starting with warm-up, playing an intense game, and then cool down process. So cool down, whether it is good or bad, it is always satisfactory. सिमिलरली शादी होती है किसी लड़की की, तो घर में लड़की की विदाई हो चुकी है और अब मेहमानों की सीख का प्रोग्राम बाकी बचा है. तो उस प्रोग्राम में अब जो फंक्शन जैसा होता है आदमी रिलीव्ड हो जाता है. हैं? हाँ, सीखा का काम बाकी बचा हुआ है, तो आप रिलीव्ड तो हो चुके हैं. तीसरा कि जो सिखों के काम में फूफा के पास काम फूफा रहता है, और फूफा के पास क्या है कि यदि कोई ये कह दे फूफा जी को कि शादी बढ़िया हुई है, तो समझ लो फीडबैक अच्छा है. तो मेरे जैसे फूफे ने जिसमें काम कम किया है, उसके पास यदि ये फीडबैक आए हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया है, तो सब कुछ अच्छा हुआ है. सो इन ऑफिशियली वेलकम टू द आवर guest of our valedictory session. I welcome to our chief guest, engineer Deepak Tanwar Saab. So, Deepak Tanwar Saab ने जो वर्क इस कॉन्फ्रेंस के लिए किया है वो ट्रेमेंडस है. We cannot match this work with a very short period, and because of his inspiration, this conference become a great success. Tanwar Saab graduated from MBM in 1987 batch, and he is elevated to the highest position of the State Department, DMG Department at the director level. It is a great moment for the MBM also. I welcome you, sir. Welcome on behalf of MEI Jodhpur chapter in this conference. Next welcome is for अपने Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Akhil Ranjan Garg sir, जो
हमारे बीच में हैं आज। एमबीएम से बहुत लंबा इनका लगाव रहा है, जब से साहब ने एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर. सो he came from a long distance from BTU to here to join us for this valedictory session. I welcome, sir. Welcome. I also welcome our guest of honor, Dr. Pukhraj Neniwal Saab, Controller of Mines at Kolkata. साहब के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है. Whenever we are in trouble to get the training for the student, आपको ये कॉल करने की ज़रूरत है. मेरे को आज तक पिछले 7 सालों में कभी साहब ने निराश नहीं किया. मैंने कहा साहब 10 सीट अरेंज करवानी है, आप 10 नहीं 20 बोलो, आप 30 बोलो. तो ऑलवेज सर सपोर्टेड अस. ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम MBM अगेन in 1993 batch. Sir, I think he will also excel in the same position in the IBM. I welcome also to you, sir. And if we say, yes, sir, sorry. And again, right now, if we see our present council of the MEI, in this council right now, sir is the vice president second. So in future, he will be the MEI president, national president. So this is also a proud moment. This will be also a proud moment for our chapter. Or he is basically from our chapter. Still, he is a member of MEI Jodhpur chapter. Even he is posted at Kolkata. I welcome you, sir. With this, I hand over to our next to Prachi. She will say the next things. I also welcome even Vipul Kochar Sahab. Even he is a convener. I should not say the welcome, but sir, I also welcome you. Thank you all. Thank you, sir. I would now like to introduce a distinguished personality whose contribution to mining sector and commitment to safety are truly commendable. Sir has served as Controller of Mines with IBM. He was honored as All India Best Brigade Captain, a national level recognition for leadership and excellence. Notably, he has been awarded by President of India not once but 5 consecutive times for maintaining the longest accident-free period, a remarkable achievement in ensuring mine safety and over 5 years. Please join me in extending a warm welcome to Rajneesh Purohit sir, Chairman of the Conference Technical Committee, to kindly present the conference report highlighting the key proceedings and takeaways of this memorable event. Before starting my reporting, सबसे पहले जो गुरुजन और कुलगुरु सबको इस मंच से मेरा सादर नमस्कार है. और एक कॉन्फ्रेंस की जो मेन जो थीम है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आई होगी, लेकिन कॉन्फ्रेंस की थीम में एक नया नाम जुड़ा है, CDS. CDS हमारे जोधपुर में हमारे बीच में बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डॉक्टर S भंडारी साहब. एक बार उनके लिए तालियां हो जाए. रिपोर्टिंग के लिए ये बहुत एम्ब्रेसिंग पॉइंट होता है. जस्ट जैसे फाइनल ईयर में आपका फाइनल पेपर होने वाला है, आपको ये नहीं पता है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे या क्या होगा. मेरे मेंटर, मेरे गुरु भंडारी साहब, मेरे गुरु PC पुरोहित साहब, इनके साथ में जो मंच आसीन बैठे हैं, इनसे भी मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ. श्री दीपक तंवर साहब, पुखराज नैनीवाल साहब, और कुल गुरु के रूप में आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ
श्री अखिल रंजन साहब को यहाँ देख के। एक बहुत टिपिकल और टफ काम हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ही क्यों दिया जाता है, पता नहीं, ज़रूर ऐसा कुछ लगता होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि रिपोर्टिंग में कुछ चूक ज़रूर रहती है, उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा मांगूंगा। कुछ चीज़ें हमेशा माइनिंग में हमने चॉइस में छोड़ी थी, कुछ चीज़ें हो सकता है कि जब पेपर सुन रहा था उसमें चॉइस में चली गई होगी, मेरे को नहीं पता। इस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ हुआ 28 की शाम को हुआ प्री कॉन्फ्रेंस के रूप में, और एक मेमोरेबल मीटिंग विथ मेमोरेबल मोमेंट्स हमको मिला। और 29 को जो कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ हुआ नेवर बिफोर पोजीशन में मैंने देखा, और जिसके अंदर में शिरकत किया था श्री मिश्रा साहब, AK मिश्रा डायरेक्टर सिम्फर, श्री दीपक तंवर साहब डायरेक्टर DMG, और PN शर्मा साहब गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट के रूप में इन लोगों को मैंने देखा। लेकिन सुनने के टाइम में जब मेरे को लगा कि नहीं, हमारा जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही जा रहा है, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा श्री दीपक तंवर साहब का, आज के जो चीफ गेस्ट हैं। इनके 2 बार उद्गार मैंने सुने, और दोनों बार मेरे को लगा कि कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो रियल सेंस में अगर कम्युनिकेट किया गया है तो श्री दीपक तंवर साहब के लिए। तो पहली बार कुछ चीज़ें जो है बहुत इतने सरल शब्दों में उन्होंने हमको बताया, क्या AI होता है, क्या IoT होता है। एक माइनिंग इंजीनियर के लिए ये बहुत टफ टर्म होती है। अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि ये जुगाड़ है या ये इस तरह के, तो माइनिंग वाले को फट से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ किसके लिए बोली जा रही। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसके बारे में जो सिंप्लीफाइड टर्म्स है, वो पहली बार हमको श्री दीपक तंवर साहब के रूप में हमको एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिससे हमको ये सीखने मिला। AI, IoT, जियो फेंसिंग, जियो रेफरेंसिंग, ड्रोन, RFID, ये बड़े बड़े हमारे लिए जो शब्द थे। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ये इस तरह की जो चीज़ थी, ये पहले सेशन में इतनी चीज़ें थी कि अगर मैं उसी को अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो मेरे को लगता है कि आज का पूरा वैलिडिक्टरी उसी में चला जाएगा, और रिपोर्टिंग भी। दूसरे सेशन में वो और ज़्यादा डेप्थ में उतरे, और एक नया आयाम उनका देखने के लिए मिला। मिशन इम्पॉसिबल, जैसा कि पूछा गया था, मिशन इम्पॉसिबल कितने लोगों ने देखा? मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने जाके देखा। और रियली मिशन इम्पॉसिबल से मिशन पॉसिबल तक जो सर ने बताया था, इम्पॉसिबल से पॉसिबल सर ने करके बताया, तो मैं जाके ये भी देखा कि नहीं, पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो मिशन इम्पॉसिबल से मिशन पॉसिबल टू कर्ब इलीगल माइनिंग विथ द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, IoT, AI, ये कैसे, कितने सिंपल शब्दों में दीपक तंवर साहब ने हमको बताया है कि जस्ट मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेरी तरफ से भी आपको, जो मैंने अपना नोट किया वो बता रहा हूँ। कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर बोलें कि ये आपका RFID क्या होता है, तो हमने सुना था RFID क्या होता है, ये सब, लेकिन उसको पैरेलल शब्द में कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने बोला ये आपका आधार कार्ड है, इसी तरह की चीज़ है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन। कितना सरल शब्दों में, कितना सरल शब्दों में चीज़ों में उतार देना, ये अगर सीखें तो श्री तंवर साहब से सीखें। मेरे को लगता है सूरज को दीपक दिखाने जैसी बातें हैं। और उसके पैरेलल में प्रोफेसर डॉक्टर AK मिश्रा जी, जिन्होंने AI/ML टूल पे अपना पूरा जो लेक्चर दिया, उसमें अलग अलग टूल में कब इवोल्यूशन हुआ, AI अभी किस जगह पे है, 2030 में कहाँ जाएगा, 2040 में कहाँ जाएगा, 50 में कहाँ जाएगा। और मेरे जैसे माइनिंग इंजीनियर के लिए वो 2030, 40, 50 तो बहुत बाद में आएगा। हमारे लिए हो सकता है हम और 10 साल बाद में पहुँचे, क्योंकि माइनिंग में बहुत सी चीज़ें जो है बहुत लेट तक आती है। तो वो जो सेशन था
जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर एस भंडारी साहब ने बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे शब्दों में एक बहुत बढ़िया लेक्चर हम लोगों को दिया कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लास्टिंग में कैसे फ्रेगमेंटेशंस को और उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोसिव की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे वाइब्रेशन और ब्लास्ट फ्लाई रॉक्स वगैरह को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पेपर्स हैं जिनको मैं आपको वापस रिपोर्ट के रूप में 2-2 लाइन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट में बाकी चीज़ें जो है वो डेटा है और डेटा साइंस एआई का काम है, माइनिंग इंजीनियर का काम है। मेरे दिमाग में क्या गया वो मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें थी ऑल ऑफ सडन इनके बीच में एक नई शख्सियत उभर के आई केपीएमजी के रूप में, जो श्री अखिलेश टुटेजा जी हमारे एक्स एमबीएम हैं, मेरे से जूनियर थे, माइनिंग में बहुत अच्छा नाम था, लेकिन ऑल ऑफ सडन गायब हो गए। वापस जब पता चला कि वो केपीएमजी में हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में हैं, उनको जब सुना तो हमको लगा कि नहीं, हम अभी भी माइनिंग इंजीनियर को जो कम करके आंकते हैं उनकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ओरिजिनल माइनिंग इंजीनियरिंग में एमई किया है या बी किया है, उसके बाद भी माइनिंग इंजीनियर अभी भी एआई एमएल के रूप में आपके सामने भी बैठे हैं, तंवर साहब के रूप में, पुखराज ननीवाल साहब के रूप में, और इसी तरह से अखिल रंजन जी के, अखिलेश टुटेजा जी के रूप में। उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिया है और मेरे को नहीं लगता है कि मैं उनको रिपीट कर पाऊँगा कि वो इतनी टफ शब्दों में लेकिन इतने इजी अप्रोच में उन्होंने बताया। विपुल कोचर साहब के लिए स्पेशल धन्यवाद कि ये सब्जेक्ट जब तक मैंने उनको नहीं सुना तब तक मेरे को ये नहीं पता चला कि विपुल कोचर साहब कितनी डेप्थ में होंगे। हर बार भंडारी साहब एक ही चीज़ बोलते हैं, विपुल कोचर है, सब ठीक हो जाएगा। और रियली विपुल कोचर साहब के लेक्चर के बाद मेरे को लगा कि मैं बहुत गलत था। कभी कभी माइनिंग वाले गलत भी हो जाते हैं, एक जगह में ये था। और बहुत सिंपल शब्दों में कैसे एआई काम करता है, उसको कैसे आप ट्रेन करना है, डेटा क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बताया। और मेरे को लगता है कभी कभी एक एडवर्टाइजमेंट आता था, दिल मांगे मोर। मैंने तो इनको बोल भी दिया, मैंने कहा साहब ये दिल मांगे मोर अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सबसे पहला लेक्चर आप ही का करवाएंगे, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है तो विपुल कोचर साहब कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर के.आर. चौधरी साहब ने लेक्चर दिया, और मैं एक एक लेक्चर की इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसे आदमी बहुत से थे जो कहीं फीलिंग में आकर के बैठ गए कि ठीक है कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहिए। और तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए टोटल 2 दिन की जो सेमिनार थी, 29 और 30 को मिला करके 29 को टोटल प्लेनरी सेशन को अगर थोड़ा एग्जाम्प्ट कर दें हम, तो उसके अलावा 11 + 3 हाइब्रिड में और 11 फिजिकल मोड में टोटल 14 पेपर हमारे हुए। और 30 तारीख को 10 + 6 16 टोटल मिला करके ये करीब 29-30 पेपर हमारे हुए प्लेनरी सेशन के अलावा। तो आप समझ सकते हैं कि, और एक बहुत स्पेशल जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई कि कल के सेशन में हमारा जो फिजिकल सेशन था ये रात को 8 बजे तक चला। किसी भी सेमिनार में फिजिकल सेशन अगर 8 बजे तक चलता है, मैं मानता हूं कि वो सेमिनार जो है अपने स्तर को ऊपर ही ऊपर उठाते हुए जा रहा है। एक बार इसके लिए मैं चाहूँगा कि ताली बजाया जाए। इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज, डीएमजी राजस्थान या फैगमिल, जीएमडीसी, बीसीसीएल, आरएसएमएम, डीआरडीओ, सिम्फर, आईआईटी आईएसएम, आईआईटी बीएचयू, एमबीएम यूनिवर्सिटी या एचजेडएल, अल्ट्राटेक, वंडर, मारवाड़ सीमेंट, अडानी, नाम कितना लूँ मैं, लिस्ट नहीं है मेरे पास, इतने रिप्रेजेंटेटिव इतनी सारी इंस्टीट्यूशन से टोटल आए थे। और एक अच्छा फिगर आपको मैं देने जा रहा हूँ कि टोटल डेलीगेट्स कल फर्स्ट सेशन में
250 प्लस थी। टोटल मिलाकर के पूरे दिन की अगर हम फर्स्ट और सेकंड सेशन को मिलाएं तो करीब करीब मोर देन 400 पर्सन्स हमारे पहले दिन के इसमें थे। रिड्यूस हुए, कुछ का कंपल्सन था, कुछ का प्री ऑक्यूपेशन था। ये फिगर आज का अभी तक ये 300 को क्रॉस कर रहा है। ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। इसके बाद अगर देखें तो वैसे इसका नाम हमने नेशनल सेमिनार रखा था, बट रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल के लेवल के थे, जिसमें एक पेपर मेरा साउथ अफ्रीका से 2 कैंडिडेट थे, संजय पुरोहित और जॉन के रूप में। दूसरा पेपर डॉक्टर भानु भटनागर के रूप में यूके से उसने प्रेजेंट किया। और पैरेलल में पैन इंडिया, तो कम से कम मेरे पास जो हाइब्रिड में 10 सेशन थे, उस 10 में पैन इंडिया से बाकी वाले जो 3 पेपर छोड़ दें तो 7 पेपर हमारे पैन इंडिया से हुए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा वो अच्छा हर्ष का विषय है। अलग अलग अगर सेग्रीगेशन करें तो प्योर एआई के, जिसमें के आर चौधरी, विपुल कोचर साहब को अगर मिलाएं तो टोटल मेरे पास 4 सेशन ऐसे हुए जो प्योर एआई के थे। प्योर माइनिंग के 2 या 3 पेपर्स हैं। 2 या 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मैं मेरा भी पेपर प्योर माइनिंग का मानूँ तो 3 हो जाएंगे, नहीं तो 2। वो प्योर माइनिंग थे जिसमें एआई का काम कम था। और बाकी जगह पे आप अगर देखें तो एमलगमेशन, एआई प्लस माइनिंग, इसके पेपर बाकी वाले थे। स्पॉन्सर्स को मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा। 5 गोल्ड स्पॉन्सर्स, 5 सिल्वर स्पॉन्सर्स, 1 किट स्पॉन्सर, 1 डिनर स्पॉन्सर, 2 लंच स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स के बगैर इतना बड़ा आयोजन थोड़ा मुश्किल है और सबके नाम लेना भी थोड़ा मुश्किल है, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी और उनका जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे लिए आगे आना, ये भी हर्ष का विषय था। अलग अलग सपोर्ट अगर देखें तो अगर आंख बंद करके मैं सोचूं तो एक नाम आता है डीएमजी। डीएमजी के जितने ऑफिसर हैं वो अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं। डीएमजी ने अनथक फिजिकल, मतलब तन मन धन हम जिसको बोलते हैं, ये तीनों जो विधा हैं, इन तीनों विधाओं में डीएमजी के ऑफिसर्स आगे बढ़ बढ़ के काम लिया। चाहे वो एक्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट हैं, चाहे यहाँ पोस्टेड हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, चाहे हाइब्रिड मोड पे हैं, चाहे फ़ोन पे या टेलीफोन पे, जो भी उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, उनका भी नाम लेना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। डीआरडीओ के रूप में दूसरी इंस्टीट्यूशंस थी जिसने हम लोगों को बहुत सहयोग किया। अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं हैं, बट मैं उनको भी यहाँ इस मामले में याद करूँगा। आरएसएमएम और फैग मिल को स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जिसने इस पर्टिकुलर टाइम में इस कॉन्फ्रेंस को अलग अलग टाइम में, एलुमिनी एसोसिएशन तो मेन हम लोगों का वेन्यू था जहाँ हम लोग मिलते थे और इस कॉन्फ्रेंस को इस रूप में लेके आने के लिए, लेकिन आरएसएमएम और फैग मिल ने भी उतना ही सहयोग हमारे लिए किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट ऑफ एमबीएम, जिनके रूप में हम लोगों को एक नया नवाचार जिसको बोलते हैं, भंडारी साहब ने इस बार किया कि माइनिंग के अलावा ईसीई के भी बच्चे इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। और इसके अंदर में उन बच्चों का सहयोग रियली बहुत अच्छा मेरे को लगा। और मेरा अपना एक मत है कि जो बच्चे इसमें पेपर प्रेजेंट किए हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको किसी न किसी रूप में हमारा जो ये इस कमेटी को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए, उनको भी थोड़ा सा हौसला अफजाई करने के लिए एक अलग से सेशन रखें उनको। और शायद भंडारी साहब ने सोच भी रखा है, वो आपको बताएंगे भी। रिपोर्टिंग के लिए अगर और कुछ मेरे से बोला जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को लिखित रूप में भी मिली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, बट समय का जो कॉन्स्टेंट है उसको देखते हुए मैं अपने विचारों को और मेरे शब्दवाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. We are honored to have with us a visionary academic leader currently serving as the Vice Chancellor of BTU,
An expert in mechanical and thermal engineering, he is deeply committed to technical research, innovation, and digital learning. From driving curriculum reforms to championing industry-academia collaborations, his leadership is shaping the future of technical education in Rajasthan. A recipient of national awards for academic excellence, he also focuses on the entrepreneurship, rural outreach, and startup incubations. Please welcome our guest of honor, Professor Akhil Ranjan sir, a true torchbearer of transformation in technical education landscape. Sir, kindly enlighten us with your gracious words. Thank you so much. Dignitaries on the dais. Dignitaries on the dais. My senior chief guest of today's function, Shri Deepak Tamar Saab, Director Mines, Rajasthan. Controller of Mines, Kolkata, Dr. Pukhraj ji. Dr. R.P. Chaudhary ji, Engineer Vipul Kochar साहब, मेरे गुरु और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रोफेसर सुशील भंडारी साहब। मैं आज उस चीज़ को याद करता हूँ, एमबीएम में मैं अपॉइंट हुआ था और उसके बाद मैं पीएचडी करना चाहता था और मुझे स्टडी लीव नहीं मिल रही थी। प्रोफेसर भंडारी साहब डीन बने और मेरे को रोज़ मोटिवेट करते थे, तुमको पीएचडी करनी है और बाहर से पीएचडी करनी है, और मेरे लिए जाके लड़े वाइस चांसलर साहब से और मेरे को स्टडी लीव दिलवाई, जिसकी वजह से मैं आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर पाया। मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूँगा और इनसे हमेशा इतना सीखा है, इतने विजनरी हैं कि हम सब अपने आप को, मैं समझता हूँ, भाग्यशाली समझते हैं कि सर की हमारे को हमेशा स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और हमको बड़ा आपने किया है सर। रोहित साहब, जय सिंह जी, मेरे बैचमेट डॉक्टर धर्मेंद्र लोहार साहब, राजेश ढींगड़ा जी, प्रोफेसर एस.सी. माथुर साहब, पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से पधारे हुए माइनिंग इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स। आज जब मैं यहाँ आया और जब मैं 2-3 पेपर ही मैंने देखे, मैं अभिभूत हो गया। जिस लेवल की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं हमेशा सोचता था माइनिंग इंजीनियर तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहते हैं और वो हमेशा वो ओल्ड एज में ही काम करते हैं, पुरानी सोच से, पुराने इक्विपमेंट से, और उसी से काम करते हैं। पर वो सारी मेरी जो सोच है वो बदल गई और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, एप्लीकेशंस, प्रॉमिसेस, चैलेंजेस ऑफ एआई इन माइनिंग इंडस्ट्री, ये अपने आप में इंडिया में एक विजनरी कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस लेवल के पेपर्स मेरे को बताए गए और जो मैंने खुद ने आज सुने, रियली वंडरफुल। आप लोग इतनी आगे तक सोचते हैं। तंवर साहब से जब बात करता हूँ तो लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आपसे पीछे हैं। आपने एआई को और इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, रियली अप्रिशिएबल, ज़बरदस्त। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब एआई आ तो गया, एआई को अपने को अडॉप्ट करना है, अपन एआई से पीछे नहीं जा सकते। और 2 दिन में ये आप सब ने समझ लिया होगा, जान लिया होगा। कई बार ऐसी बात सुनने को आती है, एआई आने के बाद हो सकता है कि जॉब्स में कमी आ जाएगी। अभी टीसीएस ने 12,000-13,000 लोगों का जब जॉब रिटेंशन, मतलब उनको हटाने की घोषणा की, वो सिर्फ 2% ऑफ वर्कफोर्स हैं। तो ऐसी बातें होने लग गई कि यार एआई की वजह से देखिए इतने लोगों का जॉब जा रहा है। उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जॉब एआई की वजह से नहीं जा रहा है, ये जॉब इसलिए जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं किया। अगर उन लोगों ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया होता तो वो कंटिन्यूसली जॉब करते रहते। तो ये अपन को सीखना है, भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात इस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे को लगी
स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी। ये देश का भविष्य हैं, उनको आज जो माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको दूसरे इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हों या कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, उनके साथ मिलकर काम करना सिखाया। भंडारी साहब रोज़ ही सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ इंडिया में इस तरह की चीज़ें माइनिंग सेक्टर में शायद ही कहीं हो रही होंगी। मेरे को इतना नहीं पता कि माइनिंग में, पर जितना मेरी नॉलेज है मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह की विज़न के साथ, और जिसके लीडर लेजेंड हमारे प्रोफेसर सुशील भंडारी साहब हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। एआई का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कितनी बड़ी उपयोगिता है। आज ही मैंने पढ़ी उसकी, और थोड़ा सा माइनिंग से अलग बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो बच्चा नहीं कर पा रहे थे, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनके सीमेन, स्पर्म्स वगैरह को देख रहे थे, फिर भी वो ये पकड़ नहीं पा रहे थे कि कौन से सीमेन के अंदर वैसे स्पर्म्स होंगे जिससे फर्टिलिटी होगी। एआई का उपयोग करके उन्होंने सीमेन के अंदर से स्पर्म्स को निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, और फाइनली वो उन पेरेंट्स को अब बच्चा उनके हो जाएगा। ये एआई की वजह से हो पाया। एआई का उपयोग ज़बरदस्त है, हर फील्ड के अंदर है, और माइनिंग सेक्टर के अंदर जैसा आपने बताया कि कैसे लोग बाग जो चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको आप रोक पा रहे हैं, और आप इसको एआई को एज फैसिलिटेटर, माइनिंग सेक्टर उसको फैसिलिटेटर के रूप में भी काम में ले रहा है एआई को, तो ये भी बड़ी बात है। तो एआई का यूज़ करना है और माइनिंग सेक्टर में यूज़ करना है, ये इस कॉन्फ्रेंस ने सिखा दिया है। कर रहे थे आप, पर उसको आगे बढ़ाया। आज वैलिडिक्टरी हो रही है, पर मैं समझता हूँ वैलिडिक्टरी आगे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई इन माइनिंग इंडस्ट्री। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, यहाँ से जाके उसको डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है। वैलिडिक्टरी का मतलब ये नहीं है कि आज हम जो 2 दिन में किया उसको ख़त्म कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो आगे करने जा रहे हैं उसकी एक शुरुआत है। मैं आज यहाँ आकर एआई के बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा, विपुल कोचर जी बोल चुके हैं, 2 दिन में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं एआई के बारे में। बस यही कहूँगा कि मैं अभिभूत हूँ और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबसे बात करने का अवसर दिया। इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं और आगे सीखने वाले हैं। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और विशेष तौर पे प्रोफेसर सुशील भंडारी साहब, दीपक तंवर साहब और जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. I would now like to introduce our yet another guest of honor, Mr. Pukhraj Neniwal, sir, Controller of Mines at IBM, currently serving as the second VP of MEAI. Sir has extensive field experience in mining supervision and regulatory compliances, and is well known for rigorous inspections and promoting mineral conservation. He is an advocate for digital innovation in mining governance, a key contributor in MEAI's national technical events, and represents IBM at multiple interministerial and industry forums. He is a committed leader, blending field knowledge with policy implementations, and a strong mentor for aspiring mining engineers across zones. Sir, kindly join the podium and inspire us with your words. Respected dignitaries on the dais, Shri Garg Sahab, Kochar Sahab, Tawar Sahab, Chaudhary Sahab, and off the dais, Dr. Sushil Bhandari,
Dr. P.C. Purohit, eminent technocrats, esteemed researchers, industry leaders, scholars, and aspiring innovators. A very warm good evening, Namaskar, Ram Ram, Khamma Gani, Jai Mata Ji to one and all. It is both a privilege and a profound responsibility to address this August gathering at the valedictory session of this national seminar. This gathering has been a confluence of intellect, innovation, and inspiration, a true sangam of science and sensibility. Over the past sessions, I have gone through online streaming. Over the past sessions, we have collectively witnessed a remarkable exchange of empirical wisdom, technical prowess, and futurist thought in a domain that was once considered antithetical to digital sophistication, the mining industry. Mining in the age of machines that think. The mining sector, traditionally rooted in empirical geoscience and mechanical engineering, is undergoing a tectonic transition. The advent of artificial intelligence, machine learning, and deep neural frameworks has initiated what we may rightly call a digital renaissance of earth science. Bhagavad Gita Slok 4.38 says, Nahi gyane sadrisham pavitramiha vidyate. That means, indeed, in this world, there is no purifier equal to knowledge. Bhadragiriyar, 14th century Tamil poet mystic says, it is knowledge which knows knowledge through knowing knowledge. So today, we are not merely extracting ore, we are extracting insights from gigabytes of multispectral satellite data, petabytes of mine sensor feedback, and teraflops of seismic, geophysical, and geochemical data. Deconstructing the AI stack in mining, let us delve into technical substrata of AI's infusion into mining operations. Though you have gone through this information for the last 2 days, I'll just sum up. So one field goes to exploration geoinformatics under subhead AI enhanced remote sensing. Convolutional neural networks, CNN, and image segmentation algorithms are decoding satellite and UAV data to identify prospective mineralized zones. Under the same heading, second number is multivariate mineral prospectivity mapping. So random forests and support vector machines are outperforming traditional fuzzy logic in predictive modeling of ore deposits. जमी से सोना तभी निकलता है जब निगाहें खजानों जैसी होती हैं. Gold is unearthed from the earth only when the vision is refined as a treasure hunter. So second use of AI is this is in mine planning and resource optimization. So first it is AI powered block modeling using Kriging assisted deep regression algorithm is reshaping mine design. Second subhead, it is heuristic algorithms like genetic algorithms and ant colony optimizations are enabling optimal pit designs under economic constraints. रास्ते वही होते हैं जो बना लिए जाते हैं, वरना भीड़ तो हर मोड़ पे होती है. So the real path are those we create ourselves. Crowd are everywhere, but pioneers are few. Third goes to autonomous and semi-autonomous mining. LIDAR and radar guided haulage trucks, robotic drilling rigs, and GPS synchronized shovel dispatch system are no longer experimental, but operational in global benchmark mines. Second item under the subhead is digital twins of mines. Real-time simulation of subsurface and subsurface operation using sensor-fed AI agents in enabling preemptive hazard detection. So it needs dedication all about. We all know Kareshu Dasha, Kaleshu Chanda, Tyageshu Mitram, Guneshu Narda. That means be as disciplined as a servant in duty, as fire in
timing as generous as a friend in sacrifice and as noble as a lion in virtue. Fourth head comes geotechnical and safety analytics. Reinforcement learning agents are being trained on seismic precursor datasets to anticipate slope failure and subsidence events. Second subhead goes AI augmented vision systems monitor PPE compliance, toxic gas levels, and entry into exclusion zones, saving lives in milliseconds. Last but not least, fifth head goes environmental intelligence and ESG compliance. AI integrated multi-criteria decision analysis, MCDA, not MCDR. Supports real-time environmental impact forecasting, mine closure planning, and CSR alignment. Second subhead is automated ESG dashboard, generate carbon footprints, tailings management, KPIs, and compliance indexes, adding transparency. वो नजरिया ही क्या? वो नजरिया ही क्या जो फकत धूल देखे? जरा आंख तो खोलो, खजाने भी वही हैं. So now we comes to the topic of our conference. What are the promises and challenges? So promises versus pitfalls, the AI paradox in mining. As we stride into this hyper-automated domain, we must reckon with its dualities. So I'll just come with four heads of opportunity or promises. So first is increased recovery rates through data-calibrated blast design. Second, it is zero harm mines through proactive hazard detection, ZAP, zero accidents potential. Third is optimized energy consumption by AI-assisted ventilation control. Fourth opportunity, it is increased return on investment via predictive asset maintenance and dynamic scheduling. Now challenges with use of AI in mining industry. One, it is data fragmentation. Unstructured, siloed legacy data sets undermine model efficacy. Second challenge is compute constraints. Many Indian mining operations lack edge computing infrastructure for real-time AI inference. Third, it is talent deficit. The hybrid AI geomining talent pool is nascent and must be aggressively cultivated. Fourth challenge is AI ethics and governance. It is explainability of machine learning models in regulatory decisions remains a gray zone. IBM's role as a digital regulator and enabler. As a regulatory backbone and knowledge repository for India's mining sector, the Indian Bureau of Mining is repositioning itself as a data intelligent authority. Key initiatives include AI integrated star rating framework under MCDR 2017, drone-based inspection analytics and anomaly detection for compliance monitoring. Third is creation of National Mining AI Sandbox to train and validate geo-AI models collaboratively. Fourth is encouraging adoption of NDMLP, that is National Data Repository for Mineral Logs and Prospectivity. Yatra Vishwam Bhavatyeka Needam, this means where the entire world becomes one nest. I'll repeat, Yatra Vishwam Bhavatyeka Needam, where the entire world becomes one nest. Collaboration is the only true path forward. So the road ahead is sentient minds and sensible policies. AI will not merely optimize what we do. It will reshape how we perceive the mineral universe. The minds of tomorrow will be cognitively aware, energy elastic, circular in resource thinking, algorithmically transparent. But let us reminder, AI is not a panacea. It is a power, and my dear friends, power demands responsibility. चल पड़े हैं तो रास्तों का गम कैसा, चल पड़े हैं तो रास्तों का गम कैसा, हर मोड़ पे तो मंजर नया मिलेगा. अभी हमारे पास चॉइस नहीं है. अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता पुरोहित साहब ने कहा कि अब हमें इसके साथ ही चलना है, आगे चलना है, क्योंकि कभी भी यहाँ लौटना संभव नहीं है. आप लौटेंगे तो आधी यात्रा दोबारा करनी पड़ेगी.
So once we begin the journey, why fear the path? Every band will offer a new vision. In the gratitude and farewell to the organizers, Rajasthan chapter Jodhpur of MEI. MEI is this side. And MBM College Alumni Association this side. I am having this for last 36 years. I think it will give company to me till my last breath. Thanks to the speakers, volunteers, sponsors, and participants, your dedication has illuminated the contours of possible future. The minerals beneath our feet are finite, but the intelligence we invest in extracting them responsibly is boundless. Let us pledge to mine not just ores, but ideas, integrity, and intergenerational equity. So benediction from Upanishad says, Tamso ma jyotirgamaya. From darkness, lead me to light. Let the light be artificial, yes, but also ethical, inclusive, and enlightened. Jai Hind, Jai Vigyan, Jai Khadan. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. I would now like to address our chief guest, Engineer Deepak Tawar, sir, Director, DMG. We all are well familiar with his achievements and caliber by now. To show my request, I'll just provide a quick overview about sir. With over 30 years of spectacular service in the mining sector, sir has been a transformative force in mineral administration and sustainable governance. As Additional Director of Mines, his visionary leadership has brought landmark reforms from authoring the 2011 mineral policy to recovering 6,000 million in royalty evasion. His efforts in digitalization of environmental regulations and policy reforms has left us lasting impact on the sector. We are truly honored to have him among us, and today I humbly request him to address the gathering and enlighten us with his valuable insights. हेलो, जय जोधपुर, खमागणी, राम राम, मुजरो, जय माता जी री। अभी जो 2 दिन का सेमिनार हुआ उसका ब्रीफ मेरे कॉलेज के सीनियर और बॉस रजनीश पुरोहित साहब ने प्रस्तुत किया और उन्होंने काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया, कुछ मेरे ज्ञान के बारे में कसीदे भी निकाले। तो एक क्षणिक क्षण आया, गर्ग साहब ने भी फरमाया, एक क्षणिक क्षण आया मेरे माइंड में जब मैं फिलोसफी के पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु या एरिस्टोटल के प्रिंसिपल पे मेरे को याद आ गया, जिसमें यह है कि डाउटोलॉजी, आप अपने आप पे इतना डाउट करो कि आपको अपने होने पे भी डाउट हो जाए। तो मैं उसमें मैं ये आसपास देख रहा था कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो वक्ता या जो कहने वाला कहना चाहता है वो सुनने वाला उसी टोन में, उसी रूप में ग्रहण कर ले, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भाषा भी एक बैरियर होती है। आज किसी फ्रेंच के आगे मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूँगा तो ये एक बैरियर भी होगा। मैं यहाँ मंच पे बैठा था तो मंचासीन सारे अतिथिगणों को भी नज़र डाली, सम्मानीय प्रतिभागियों और जो हॉल में विराजे हैं उनके तरफ भी नज़र गई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारे के सारे लोग इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और सभी मारवाड़ी के निपुण आदमी हैं। अगर किसी को मारवाड़ी नहीं आती है तो वो मुझे थोड़ा हाथ खड़ा करके बता दे, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि इस माटी की आवाज़ में ही और माटी की लैंग्वेज में ही मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, ताकि जो मेरे उद्गार हैं वो सीधे आपके हृदय में पहुँच जाए। अदरवाइज मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँ या किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ।
तो लॉस है वजह सबू पहली सभी मान्यवरा अतिथि गणारो मेहमानारो और साथिया ने राम राम से अर्ज करूं और सगला जना रो मारवाड़ी इन धरती माते पधारण हारू स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करूं। मारा गुरुजी मारा तारणहार और मने पार्टी माते कख गगड़ो माइनिंग रो सिखायो आदरणीय प्रोफेसर भंडारी साहब रे चरणों में वंदन करूं। भारत रा खनिज अभियंता रो जोधपुर अध्याय और एमबीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय छात्र संघ द्वारा आयोजित इन जोरदार राष्ट्रीय सम्मेलन माइन आयोजन कारण खातिर मैं हिवड़ासु बधाई और साधुवाद देऊँ। मारवाड़ी आ धरा धरा जिन्हें आप सूरमाओं री साधनाओं री और विज्ञान री संगम रे रूप में जाना आज फेरू एक नयो इतिहास रच दियो है और इतिहास तो साक्षी बन गयो है। वो खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम में लेवणो वायदो और आवन वाली मुश्किलारो विषय वाला आयोजित और सम्मेलन एक बदलावरी सूझबूझ चेतना लेन आयो है। जदे माने बडेरा कहता बडेरा ने आप सभी जानो जो बडेरा कहता कि बिना समझ बूझ रे कोई काम नहीं करनो, बिना समझ बूझ रे कोई काम नहीं करनो और जब समझ बाद में करियो तो पचे लारे मत हटजो। तो इन कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे संदर्भ में आप समझदारी और हिम्मत दोनों देख रिया इन वास्ते अब अपने लारे नहीं हटनो है। आज दे सम्मेलन में भाग लेवन वाला सगला विद्वान गण वक्तागण शोधकर्ता छात्रगण अरु खनिज उद्योग सु जोड़ियोड़ा सगला प्रबुद्ध लोगों ने मारवाड़ में देखने मोकली खुशी हुई है और हिवड़ो गदगद हो गयो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज खनन क्षेत्र रे मायने एक क्रांति ला दी है। अबे बात कोरी मशीन चलावन रही नहीं है, मशीन लर्निंग आपरे भाषा में अरु बात है आंकड़ा ने समझनी डेटा एनालिसिस निर्णय लेवन रही अरु संसाधन सही उपयोग करवा रही है। एक जमानो जदे खनिज निकालनो सारू धरती खोदनी पड़ती और उन्हें पचे भी खनिज निकल जी कि नहीं निकल जी या कितो निकल जी और भाग्य भरोसे हो। पण आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भौगोलिक समझ और निगरानी तकनीक मॉनिटरिंग शू आप ही भविष्यवाणी कर सका कि खनिज मिलेला कितो मिलेला और कई लागत लागे से कई लागत लागेला। राजपूताना राजस्थान तो एक नंबर 1956 से उससे पहले राजपूताना ही कहते थे इसको। राजपूताना जिनमें देश से खनिज क्षेत्र करीब 15% हिस्सा है वो इन बदलावरी सूझबूझ स्वागत करे और 2024 से आंकड़ा के अनुसार इन प्रदेश में मायने 33,000 खानियाँ हैं। माइनिंग ने तो अब आप बोला बाकी पहली खानी ज बोलता इन्हें 33,000 खानियाँ हैं जिनमें 85 तरह मोटोड़ा खनिज और 57 तरह छोटोड़ा खनिज और 16 तरह बेस कीमती भाटा अटे मिले। कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे माते आधारित ध्यान राखण सारू ढांचा ने विकसित करने करीब 12% गैर कानूनी खनन रे मायने गिरावट देखने आई है। माने महकमा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे आधार माते गैर कानूनी पकड़नो जो तंत्र दुनिया भर में जगह बतावंडो सिस्टम आप कह सकते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
रो सिस्टम गाड़ियारी पहचान खातिर टैगिंग और ड्रोन्स यू ऊपर सु नजर आकणियो प्रथा लागू कर दी है, जीणो परिणाम माटी माते नजर आ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकर कई काम आवे और अबे खनन में अपनायो जा चुक्यो है। इनरो उपयोग करण खातिर भविष्य में मिलन वाला खनिज खातिर यंत्र शू आपा सेकंडरी तंत्र माथे आधारित भूगर्भ रो ढांचो बतावण रो तरीको तय कर लियो है। जियो स्पेशियल खाणिया वाला ने तुरंत कायदो माननो और नजर रखने खातिर चीजा ने सूचना रे जाल जोड़नो तंत्र, महसूस करनो तंत्र सेंसर्स और कैमरा शू चालनो सीधो दृश्य चालू कर दियो। भाटारी ढुलाई ने पारदर्शी करवा खातिर रेडियो तरंगा शू पहचान रो सिस्टम टैग और तोल काटा रो जुड़ाव कर दियो। उपयोग में लेवन वाला माल और बेरुको कचरो ओवरबर्डन कह सकते हो आप रो ढेर ने फाजों काम में लेवनो खातिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्यांकन प्रथा चालू कर दिया। माने अटे कहावत भी है कि जो खेत ने बार बार जोते उको बीज बढ़िया उगे। इनो प्रयोग कारण आपरे खातिर नई कहावत बनाई हूँ मैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रो मतलब रोज नई तकनीक रो शू जोतनो पड़े और तदे आंकड़ा री असली फसल मिलेला। इन 2 दिनारा सम्मेलन रा निष्कर्ष अपनी दिशा और दशा दोनों तय कर दी है और देश रे मैंने भी करेला। 2 दिनारे मायने 12 तकनीकी सत्र रे माए 40 ज़्यादा खोज पत्र बाची जिया और 300 लेवन वाला भाग लेवन वाला पधारिया है और देश भर रा माइल लोगा रो जलसो रियो है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने खनन रे माए कीकर काम में धरती पानी हवा रो हाल एयर वाटर और साउंड और सामाजिक रूप से अपनायो जाए इन पर मोकड़ो अध्ययन होयो है। एकर खास सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रो प्रयोग करने खनन और भलाई खातिर माते मोकड़ा सुझाव आया है। वे घणाई प्रशंसनीय है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संयंत्र शू धातु बादरे बची रोड़ो कचरो टेलिंग ईंटा में कीकर बदला गहराई में सीकण सारू धरती दरार माते आधारित करवारो सिस्टम बन गयो है। खुली खाणिया में खनन रो आपा आप उड़न वाला ड्रोन से निगरानी तकनीक विकसित होगी है। राज रे पहले राज गवर्नमेंट को राज ही बोलते थे, अपन मारवाड़ी में आज भी राज ही बोला। राज रे खान महकमारी भूमिका इन सम्मेलन में केवल सहभागी नहीं है बल्कि मार्गदर्शक रही है। महकमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता री पहल करण ई रवाना तंत्र में बारकोड तकनीक जोड़न शू हर गाड़ी री पहचान एकदम सही हो जावे और तुरंत हो रही है। इनरू रॉयल्टी री चोरी और गड़बड़ी से बचाव हो रही है। ई रॉयल्टी और ई आकलन लागू करण शू खनन क्षेत्र री पूरी प्रक्रिया अपने आप चालन लागी है। महकमो उपग्रह माते आधारित खनन पट्टारी हदबंदी माते नजर रखनो तंत्र विकसित कर लियो है। अवैध खनन री सूचना रे खातिर महकमा में दिन रात निगरानी केंद्र चालू कर दियो है, राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम। माणा बडेरा कह गया कि दमदार बीज बोवे उको फल तो मीठो ही होवे। मोनो साहब को शायद नींद आ रही है। माणा बडेरा कह गया कि दमदार बीज बोवे उको फल मीठो ही आवे। इन्हीं तरज माधु मैं अर्ज करूं कि जिको कृत्रिम बुद्धिमत्ता रो बीज आपा बोरिया उनरो फल अपनी आगली पीढ़ी ने तकनीकी फल जरूर देसी।
ई सम्मेलन मिलियो अनुभव मंथन प्रतिबद्धता आपा सगला ने अमल में लावनी है। आपा सबने मिलन ने एक आगलो रस्तो बनावनो है। जिंडू कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग कर मजबूत खान देख रेख रो ठिकाणों प्रत्येक खान धरती जोग विभाग रे जिला महकमा रे माते स्थापित हो जावे और राज्य और निजी क्षेत्र ने मिलकर, ये भंडारी साहब का जो है सिद्धांत, जो आपकी भावना प्रकट कर रहा हूँ साहब, राज्य और निजी क्षेत्र ने मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता रे अनुसंधान रे वास्ते वजीफो चालू करना है तथा देश रे खनन अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम रे मायने कृत्रिम बुद्धिमत्ता री अनिवार्यता जरूरी होगी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल आंकड़ा और मिनकारी सोच ने केवल विस्तार ही नहीं बल्कि आ बुद्धि री पूंजी है जिनसु सोच परख ने निर्णय लियो जा सके। जो स्वामी विवेकानंद जी कहो कि शक्ति जदे उत्पन्न हुए जब मनुष्य आपरी सोच ने यथार्थ माते उतारे। इन आयोजन रो उद्देश्य जदे ही पूरो होवेला जदे आपा सगला अपनी सोच ने नीति में डालांगा और नीति ने काम में बदलांगा और काम ने परिणाम में बदलांगा। इन सारू कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने माध्यम बनावना होवेला। लारे कॉलेजा विद्यार्थीगण बिराजिया है वाण वास्ते जब तलक था हिम्मत राख्यो तब तलक हार कदी कोनी होएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अपनावला केवल तकनीकी पायदान मत समझो इन्हें और थाने सास थानी सोच और थानी आगली सोच रो परिचायक है। प्रदेश सदाऊ खनिज रो सिरमौर रियो है और अबे खनिज बुद्धिमत्ता सुदेश रे खनन धरातल माते नवा डंगरो नयो ठिकाणो बनेला और मारो घणो पक्को भरोसो है। लारू में सगला आयोजक MBM महाविद्यालय परिवार भारतरा खनिज अभियंता संघ छात्र संघ शोधार्थियों सम्मेलन में पधारिया सगला मेहमानों माने पत्रकार बंधुओं रो हिवड़ा सु आभार प्रकट करूं और मारा तो वही मानना है कि जो बाद ने स्वीकार करे वो जो बाद ने स्वीकार नहीं करे वो बात की कामरी कोनी। जो बात ने स्वीकार नहीं करे वह बात की कामरी कोनी पर जो बात मन में छू जावे वो इतिहास रच जावे। तो अटे 2 दिन रे मायने सारी बातें मन में छुई है तो निश्चित तौर मानो कि वो एक नयो इतिहास रची जाला जोधपुर रे मायनू। आप सगला भाई लोग इन राष्ट्रीय सम्मेलन ने ऐतिहासिक बनायो इन हारू मोकलो धन्यवाद व इन क्रियान्वयन री दिशा देवन खातिर अपना सगलारी जिम्मेदारी है। जय खनिज, जय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जय मारवाड़। अबे मैं इन्हीं क्रम ने आगे बढ़ाओ तो एक और निवेदन करनी चाहूँ जी सवारी इच्छा ही और जीव आयोजक गण और रजनीश पुरोहित साहब फरमाया कि अटे मोगला लोग और आप फील्ड महारथी एक महारथी आप अटे प्रवचन दिया और वहाँ लाभान्वित होया। लेकिन वे सारा महारथी किन्हीं द्रोणाचार्य कृपाचार्यों शिक्षा ग्रहण करने आप युद्धाभ्यास करने पचे आया। वने महीनू विलक्षण या गुण श्रेष्ठ है इन्हें छाटना बहुत कठिन काम है। लेकिन जिको आदमी नयो नयो स्कूल में भर्ती होयो है जिन्हों को जो नए गुरु रे कने आया और अबार शिक्षा पूरी नहीं हुई है और वो वण महारथिया ने अगर टक्कर दे दे तो उन्हों कोई साणी नहीं है। तो इन वास्ते मैं इन मंच माते घोषणा करनी चाहूँ कि एड़ा माने कने 2
पेपर है जिन महीने कंप्यूटर साइंस विद्यार्थी उन्हें माइनिंग महीने हस्तक्षेप रहा गयो, न केवल हस्तक्षेप रहा गयो बल्कि एड़ो प्रतीत हो गया माइनिंग भली भांति वाकिफ है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दियो। मैं चाहूँ कि वाने श्रेष्ठ वक्ता रे रूप में मैंने घोषित कर दिया जावे, जिनमें पहलो नाम मैं बतानी चाहूँ जय माहेश्वरी जी और दूसरा मनन जैन। हमारी हार्दिक इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Now it's an honor to welcome Vipul Kochar, sir, a dynamic force shaping the future of MBM. He serves as the conference convener and is the newly elected president of MBM Alumni Association, a proud alumnus and founder and CEO of testing.com. His visionary entrepreneur driving innovation and alumni-led initiatives. He champions mentorship, outreach, and opportunities for students, seamlessly connecting alumni, academia, and industry. Please join me in welcoming a true symbol of modern MBM leadership. Now, I request Vipul Kochar, sir, to come forward and deliver vote of thanks. Thank you, sir. इनकी गलती नहीं है, आदत होती है कि कॉन्फ्रेंस में अच्छे से अच्छा ही बोला जाए, क्योंकि खराब बोलेंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे कैसे खराब आदमियों को स्टेज पे क्यों लेके आते हो। मुझे आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्य सौंपा गया है। तो धन्यवाद के बारे में एक समस्या है। मेरी कंपनी में सर्वे करवाया गया 360 डिग्री, तो लोगों ने मुझको रेट किया, बोले बाकी तो ठीक है, ये आदमी जो है कभी एप्रिशिएट नहीं करता है, थैंक यू नहीं बोलता है। तो शायद ईश्वर ने इसीलिए कि मैं थैंक यू बोलना सीख जाऊं। और एप्रिशिएट करना बड़ा एक प्रॉब्लम वाला काम है। एक बार प्रॉब्लम में फंस गया था, इसलिए मैंने एप्रिशिएट करना बंद कर दिया था। एक ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग में बताया गया कि सब एप्रिशिएट करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए, अपने साथ वालों को एप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी पत्नी को भी एप्रिशिएट करना चाहिए। आज तक किया कभी एप्रिशिएट? कुछ लेकर गए फूल वगैरह, शादी के 10-15 साल हो चुके थे, यार ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं किया आज तक। तो 15 साल या 20 साल जितनी भी थे, उसकी पूरी कमी पूरी करने के लिए 1 दर्जन 2 दर्जन गुलाब के फूल और शाम को ले आके और दरवाज़ा खोलते ये लो साहब। पत्नी ने फूल देखे, मुझको देखा, फिर फूल देखे, फिर बोले आज क्या गलत काम करके आए हो के फूल तो तब से एप्रिसिएशन थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन तो आज हम एक एप्रिशिएट करने के लिए क्या है कि बहुत हम सब वेट करते हैं वोट ऑफ थैंक्स हो जाए तो हम रवाना हों, लेकिन मैं एक चेष्टा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। मैं अभी तो खैर नाम लूँगा ही, लेकिन बहुत से लोगों के नाम बहुत संभव है मिस हो जाएं, जिनको धन्यवाद नहीं दिया गया हो, न दिया जा सका हो मेरे द्वारा इत्यादि। तो सम्मानित मंच की आज्ञा से वो एक्सपेरिमेंट जब मैं नाम पूरे कर दूंगा उसके बाद आपका 1 मिनट और लेना चाहूँगा, आप लोगों की अनुमति हो तो। सबसे पहला धन्यवाद ईश्वर का कि उन्होंने ये आयोजन करवाया, और हम सब तो निमित्त मात्र हैं। इस भावना के साथ में जो निमित्त बने हैं और खूब काम किया है प्रोफेसर सुशील भंडारी जी, ये कॉन्फ्रेंस उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उसके बाद में ये क्रम से नाम में 3 नाम ले रहा हूँ, उसके बाद बाकी सब नामों पे आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको कि आप नहीं होते तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और साइलेंटली इस पूरे कॉन्फ्रेंस को मैनेज करने वाले पर्दे के पीछे से रह के तो हम सब तो कठपुतलियां हैं। जायसवाल साहब, टीम बिना कुछ नहीं होता है, बराबर बात है। तो मैं सेक्रेटरी एमबीएम एलुमनी एसोसिएशन जय सिंह जी, कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रजनीश जी, को कन्वीनर आदित्य गर्ग जी और डीपी गौड़ जी,
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेंद्र जी राठौड़, आज मतलब जी लगा के बोलना पड़ रहा है, वरना आप जानते हैं कि दोस्तों को कैसे बुलाया जाता है। जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राकेश पुरोहित जी और मनीष वर्मा जी। चेयरमैन रिसोर्स कमेटी साहिवाल जी और इंजीनियर महिम कच्छावा जी। ट्रेजरर MC तातेड़ जी। चेयरमैन टेक्निकल कमेटी डॉक्टर प्रमोद राजमनी जी और डॉक्टर JC मोहनोद जी। जायसवाल साहब का नाम ले ही चुका हूँ मैं, और प्रोफेसर RP चौधरी जी। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स थे। उसके बाद जो डिफरेंट कमिटीज़ थी, और आप सब लोगों ने उन कमिटीज़ की सेवाओं का उपयोग ज़रूर किया होगा, तो इसलिए उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। रिसेप्शन कमेटी महिम कच्छावा जी, तातेड़ जी, MC तातेड़ जी, भंवर राम चौधरी जी और महेश शर्मा जी। रिसोर्स फाइनेंस कमेटी श्री महेश माथुर जी, YS सहवाल जी और DP गौड़ जी। वेन्यू अरेंजमेंट कमेटी मनीष वर्मा जी, राकेश पुरोहित जी, AK जायसवाल जी, RP चौधरी जी और MC तातेड़ जी। रजिस्ट्रेशन कमेटी राकेश पुरोहित जी, मनीष वर्मा जी, प्रवीण भार्गव जी, MS व्यास जी, अनिल रूपराय जी। पब्लिकेशन एंड टेक्निकल कमेटी जो आप लोगों के हाथ में आ ही गया होगा, डॉक्टर प्रमोद राजमनी जी, श्री रजनीश पुरोहित जी और डॉक्टर JC मोहनोद जी। ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन कमेटी श्री प्रेमराज दवे जी, श्री दिनेश कच्छावा जी और श्री कमलेश टाक जी। और फूड कमेटी, वो तो बहुत ज़रूरी है, AK जायसवाल जी, MC तातेड़ जी और श्री राकेश पुरोहित जी। कल्चरल एक्टिविटी श्री RS राठौड़ जी, डॉक्टर रोहित रावल जी और श्री भगवान सिंह जी भाटी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स कमेटी AK जायसवाल जी, राकेश पुरोहित जी, श्री DP गौर जी और श्री मनीष वर्मा जी। रिकमेंडेशन कमेटी प्रोफेसर सुशील भंडारी, आपके सामने खड़ा नाचीज, और श्री अतुल गर्ग जी। और कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी श्री जय सिंह जी, श्री AK जैन जी और श्री धीरज कुमार जी। ये इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सब कमेटीज़ के मेंबर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता था। जो हमारे MBM के स्टूडेंट्स हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सब वॉलंटियर्स का, क्योंकि वो इस आशा में कि उन्हें इस ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना करने का इस तरह से मौका मिलेगा एक और, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन लोगों का नाम नहीं लिया गया है, स्पॉन्सर्स, उनको ऑलरेडी हमने धन्यवाद किया है, लेकिन जितना भी धन्यवाद उनको किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम अच्छा है, उत्तम, अत्यंत उत्तम है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे आश्रम को गृहस्थ आश्रम ही संभालता है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो जब आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो वो गृहस्थी होता है जो वहाँ पे दान देता है, और बाद में जब दूसरे आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद में हैं, चाहे वो वानप्रस्थ हो और चाहे संन्यास आश्रम हो, दोनों में गृहस्थ ही भिक्षा दिया करता है। तो गृहस्थ के बिना कुछ संभव नहीं है। तो जो स्पॉन्सर्स हैं वो इस तरह से हमारे गृहस्थ हुए, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे ये प्रार्थना है कि अगले साल खुद भी आएँ और भी लोगों को प्रेरित करें, ताकि हम इस कॉन्फ्रेंस को और भी बड़ा कर सकें। अब फाइनली सबको धन्यवाद अर्पित करने के लिए मैं एक चीज़ चाहूँगा कि हम अपने हृदय से आशीष दें, उनके सब लोगों के लिए प्रार्थना करें हृदय से। तो बोलना कुछ नहीं है, आंख बंद करके आप फील कीजिए कि आपके यहाँ से वेव्स निकल रही हैं प्रेम की, आशीष की, और वो उन सब लोगों को जो इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को अच्छा बनाया, जिन्होंने वॉलंटियर किया, सब के लिए वो 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट से पहले कुछ फील नहीं होगा, और 1 मिनट में आप बहुत लोग इस शांति से असहज भी हो सकते हैं, पर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हृदय से वेव्स निकल के और सब लोगों को जा रही है आपके आशीष की। 1 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइम खत्म होते ही फिर मैं चुप होकर निकल जाऊँगा। 1 सेकंड साहब बस।
आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर कोटिशः प्रणाम और धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would request Bhandari sir to kindly come up on the stage and present the memento to our chief guest, Deepak sir. सर अगर आपकी आज्ञा हो तो उससे पहले एक छोटा सा काम है। वॉलंटियर्स जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, तो मैं मंच से चाहूँगा कि उनके द्वारा उनको ऑनर किया जाए। तो प्लीज़ सर, इफ़ यू अलाउ अस। प्राची संधू, माइनिंग स्टूडेंट, माइनिंग ग्रेजुएट। लाओ ये दो। सेजल चौधरी, ये भी दो। देवेंद्र, अच्छा देवेंद्र का। दिव्यांशु माकन, चलो प्लीज। दिव्यांशु। अभिषेक धाकड़, कौस्तभ सेन, कौस्तुभु, राजवीर सिंह राजपुरोहित, उधर से निकलना है। सागर चौहान, रोशनी लखानी, रोशनी इज हियर, नाइस। तोशिका गौरिया, हेमा राजपूत, युवराज, खुशी रानी, हु इज खुशी रानी?
रिंकू बलाई, धीरज चौधरी, तनीषा बंसल, गुंजन गुजर, जया माहेश्वरी, निकिता सेवदा, दीपांशु चौधरी, and last हार्दिक अवस्थी. Is not here? Okay. क्यों? राकेश जी? राकेश? हाँ, ट्रांसपोर्ट में जिसने काफ़ी सहयोग दिया है, मैं दिनेश कच्छावा, कच्छावा जी नहीं है, चलो बस, थैंक यू वेरी मच सर. Bhandari sir, kindly come up on the stage to present the memento. I request Mahesh Mathur sir to kindly present the memento to our guest of honor. I request A.K. Jaiswal sir to present the memento to our guest of honor. I request everybody to please stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू सर। सर एक ग्रुप फोटो हो सकता है तो आप सब सहमत हो तो सर। सर आए सर स्टेज पे आए सर सभी आगे। हाँ पीछे का ये बंद कर। स्पॉन्सर्स के लिए रखना ना, वो कल का अनाउंसमेंट। क्या बोलो? कल हेलो, कल 10:30 बजे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है। ऑल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई एसोसिएशन में सुबह 10:30 बजे। ओके, एंड यू विल गेट लंच
ऑल वॉलंटियर्स, ऑल alumni। ये अच्छों का है। 10:30 बजे से alumni एग्जीक्यूटिव, हेलो alumni एग्जीक्यूटिव इनको